Okay, let's see what is selection sort. I think selection sort is the basic sort that we use for with n passes, I guess. That is what I thought. करना होता है ले आते हो जगह पर नहीं आने वाला इसके अंदर पता है कि ये वाली वैल्यू थोड़ी सी प्लेस हो चुकी है करना कि यार इस पोजीशन पे इस पूरे एरे की मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए 11 चिंता करनी है मुझे इस पोजीशन पर राइट वैल्यू डालनी है इस 2 पे सर क्या चलेगा तो आप किसके लिए चिंता करने वाले हैं आई की मिनिमम रहने वाला है मिनिमम वैल्यू कि यार इसकी मैं एक बार एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या किया पहले इंडेक्स पे आपने इस पूरे की मिनिमम वैल्यू डाल दिया 13 में 13 आपने स्टॉप करवा दिया 72 के लिए आपने पूरा क्या में से मिनिमम वैल्यू 29 को स्टॉप कर इस पर आपका सेशन सॉर्ट काम करेगा एग्जांपल आप यहाँ पे देखने को मिल गया ठीक है मैंने बात उसको इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ बहुत आसान है करके देखते हैं कैसे होगा ठीक है अब सिंपल उसका मैंने क्या बोला था ये टोटल आई आ गया 2 पे तो मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा आई की वैल्यू कहाँ जा रही है आई की वैल्यू जा रही है आई 0 से लेके आई लेस देन -1 तक है ना मुझे इन चार का मिनिमम निकालना है यहाँ पे और लूप लगाना पड़ेगा तो यार मुझे मिनिमम फाइंड करने के लिए एक लूप और निकालना पड़ेगा डन है सही है तो मुझे कुछ समझ में आया मैं कोड करके ट्राई करता हूँ चीजें आपके सामने जाएंगी चलो मैंने बोला कि फोर लूप मैंने चलाया आई 0 से लेके मैं कहाँ तक लेके जा रहा हूँ आई लेके जा रहा हूँ मैं n-1 तक Okay, selection sort is like oh, selection sort. Sort basically find the minimum from um, I to the end and swap it with I. So that is selection sort. I think I can code it out. Um, bubble sort is you just check for the adjacent elements, and if they are चलो जी कैसे सारी से लव if the larger is before the smaller one, you swap it. एंड वेलकम टू चैनल कोडल आज हमारी सॉर्टिंग टेक्निक्स की बात करें सेकंड लेक्चर करने वाले हैं जो कि एलिमेंट्स तो कैलकुलेट पढ़ने इसके अंदर 10 1 7 6 मैंने बोला कि कुछ मत करो अपना बस हमने बोला एलिमेंट चेक करो आपने इसको कंपेयर किया अरे यार फिर दोबारा बढ़ा गया वाला तो फिर से करना पड़ेगा हमने लिखा 1 7 6 10 14 9 मैंने बोला फिर से कंपेयर करा आपने 10 को अब 14 से कंपेयर करा ध्यान से कंपेयर करें पहले हमने शुरू के एलिमेंट कंपेयर करा शुरू को करा स्टार्ट को करा Mm. Insertion sort, insertion sort. हेलो जी कैसे सारी दिस लव बब्बर वेलकम टू चैनल कोडल तो आज हम बात करने वाले में ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया अच्छा ऐसे करना था ठीक है कार्ड फिर ये तीसरा 6 है इस पे 9 है इन कार्ड को अपने हाथ में सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है ठीक है यार पहले 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होना चाहिए आपके पास 5 वाला कार्ड लिया ठीक है सॉर्टेड सिंगल एलिमेंट है जैसे मुझे रखता हूं फिर आपके पास क्या है आपके पास 2 है आपने 2 अच्छा 2 को आपने 5 से कंपेयर किया आपने 2 तो 5 से छोटा होता है तो मैं 2 को ना पहले रख लेता हूं 5 से इसका आएगा 6 राइट साइड में आएगा तो आपने 6 को यहां डाल दिया फिर 9 4 करके अरे छोटा है क्या बन गया 2 4 5 6 होता है यार सब कुछ 100 के पास पड़ा है 4 12 हो ना तो मैं करूंगा सबसे पहले मेरे पास 4 होगा 4 होगा फिर 12 आया अब 12 या तो लेफ्ट साइड में आएगा राइट साइड में आएगा मैंने कंपेयर किया 12 तो 4 से बड़ा तो मैंने यहां डाल दिया 12 को बहुत बढ़िया फिर 11 आया मैंने कंपेयर किया 11 12 के पास आएगा 20 आया 20 को 12 से कंपेयर करा क्या है मैंने क्या किया अपने आंसर में आपने बोला कि 6 तो मैं रख रहा हूं दोस्त 6 होता है यार 6 छोटा इसी प्रकार आपने 3 के साथ भी सेम चीज अगर आप पहले सॉर्ट चेक कर रहे हैं इसको लेफ्ट साइड में डालें या राइट साइड में डालें इतना सा काम कर रहे हैं ज्यादा कोई मुश्किल लंबी चौड़ी बात देखते हैं 3 3 बाकी बात छोड़ो लगेगा बस बनाया पता दोबारा समझते हैं उसको कंपेयर कर रहा हूं उस पोजीशन में जाके कॉपी कर दूंगा Let me look up selection sort code. I want to look up selection sort code. So for any I is equal to 0, I is smaller than 7, I. What just here? If array of j is smaller than array of main index is equals to j. Okay. Now at the end we'll swap I and j. Okay, cool. That is selection sort. Insertion sort. Insertion sort. Us 75.
P is equals to array of I, J is equals to insertion sort for I is equals to 1, K is equals to okay, J is equals to I minus 1. Okay. While J greater than 0 and then J of I greater than Q. Array of J greater than Q. Array of J plus 1. Let's understand this. ये बात समझ में आई है? दोबारा समझते हैं शुरू से एक बार, अच्छे से समझाता हूँ आपको। मैंने आपको क्या बोला, दोबारा समझते हैं एक बार। तो मैंने बोला यार कि स्टार्टिंग में मेरे पास ना 10 तो पड़ा ही हुआ है। मैंने मान के चल दिया कि मेरा स्टार्टिंग में सॉर्टेड है, सॉर्टेड में ग्रीन से दिखा रहा हूँ आपको, उसमें 10 पड़ा हुआ है। अब राउंड 1 में मैंने कहां से क्या किया, राउंड 1 में मैंने I1 से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो यानी I1 का मतलब क्या है, यानी ये वाला एलिमेंट है I1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स 1 लेस देन 10 होता है। और यहां तो बोलेगा 10 को आगे किसका थोड़ा सा एक प्लेस, और फिर क्या कर 0 इंडेक्स पे 1 कॉपी कर ले। तो हमारे कंटेंट क्या हो जाएगा 1 2 11 इस प्रकार। मान ली यहां पे सॉर्टेड है, अब मुझे पता लगे मेरा क्या है, यहां पे सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अब मैंने क्या बोला दोस्त, बहुत ही आसान चीज है। मैं बोला राउंड 2 की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा कि राउंड 2 की बात कर लेते हैं। राउंड 2 में क्या होता है, I जो होता है वो ठीक है। अब लेफ्ट साइड में जाना है, फिर आपने 7 को 1 से कंपेयर कराया, तो 7 जो है भाई वो तो बड़ा है 1 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 1 की राइट साइड में जाना है, तो इसका मतलब आपका जो 7 है वो 10 की लेफ्ट में जाएगा और 1 की राइट में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 7 इन दोनों के बीच में आने वाला है। ठीक है, बीच में तो स्पेस ही पड़ा हुआ, तो आप क्या करोगे, मैं इस 10 को ना एक आगे दिखाता हूं और फिर वहां 7 को डाल दूंगा, तो 1 7 10 बन जाएगा। समझ गया? तो आपने क्या किया, इन शॉर्ट आपका एरे की आपका क्या हुआ, राउंड 3 स्टार्ट हो गया। राउंड 3 स्टार्ट हो गया, I इक्वल टू 3 के लिए, I इक्वल टू 3 मतलब ये वाला एलिमेंट। आपने क्या बोला, मेरा इतना बड़ा सॉलिड है, मैं कहूंगा 4 को 10 से कंपेयर करता हूं, मुझे बोलते 4 लेस देन 10 है, यानी मैं लेफ्ट में जाता हूं। फिर आपने 4 1 से कंपेयर करा, आपका 4 तो 1 से बड़ा ही होता है, तो यानी 4 जो है वो 1 के यहां पर और 7 के इस एरे को इतना करने के बाद मैंने बोला दोस्त मजा आ गया। मैंने बोला आगे वाला राउंड चलाओ, राउंड 4 चलाओ, I इक्वल टू 4 के लिए। फिर आपने 8 को 7 से डाल दूंगा, ये बोला फिर आपको 1 इसका मतलब 7 आप वेरिएबल This is ये insertion आपका sort. 11 चलाना रिजल्टिंग एरे को क्या बन So we have one sorted. Now, while that number that is to be inserted is smaller than this number, we decrement J and we find its position to be inserted. Then, so or we can just increment this number to 1 and then we find its position and we insert. I think that's insertion. Yeah, array of J person. Honestly, enough. Now at the end, insertion sort. Time completion. STL and solvent with array string introduction to basic math. So pointers, double pointers, dynamic memory, global array. Recursion, I know recursion, merge sort, I know quick sort, I know you make a partition and then you know, don't do that for permutation process. Um, mm, detect, remove remove duplicates from a sorted unsorted linked list. So you just store the value in a hash now, I guess. Merge to sorted linked list. Yeah, done. Check parent down ML linked list. Um, add two numbers with random pointers. Yes, merge for ML linked list. Introduction to stacks. Stacks question. Largest rectangular area in a histogram. How to do that? Largest rectangular area in a histogram. You would have a monotonic stack for that. And as you get
a number that is greater, you add it on top. But as you get a number which is smaller, calculate the areas. So you store the index of these numbers, and so index of let's say uh, so let's say we have 1, 4, and 3 and 5. Okay. So store 1. I have minus infinity on the stack. I store 1. I get 4. I store 4. Now I get 3. So 3 is smaller than 4. So does that work like that? So now I let's see this question. Let's see largest rectangular area in largest rectangular area in the histogram. Let's take an example. I get 2. Maximum becomes 2. Okay. Now I get 1. So for smaller, I do nothing. Okay. Uh, let's, I get 1. I do nothing. I get 5, which is greater. Now 5 is greater, so I start reducing. So 1 into, let's say, 1 minus 1 plus 1, 2. That will be the length, because earlier I will have minus 1 at the start, into 1. Okay. Now I get, so 1 is removed now. Now I have 2. So 2 into 0 minus 1, minus 0 minus 1. So that will give me 2. 2 will be the answer. Now I have 5 in the stack. Now I get 6, which is greater. So what I will do is 5. I can add greater number. I can add smaller number. Let's do it like this. Yeah. Okay. So yeah. So when I add 2, that works. If I add 1, then I calculate for 2. So um exactly. Exactly. So for 2, I'll have 0 minus 1 by into 2. 2. I will get 1 in the stack. Now 1, but now I'll add 5. So when I add 5,
one is smaller, so one will pop. So one minus one into one. So two into one, two. Then I add three. So this is the do I have a way to share? That's how we do it. I don't think I should write on my iPad. I should actually write on this because to the interviewer I will teach on this. Like I'll show him this. अब हो जाना चाहिए यार. अब तो हाँ तब तो क्या celebrity problem. Who knows, who is known by all, but सेलिब्रेट हो गए बेटी आपको इनपुट में क्या दिया n क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 क्या 2 2 को जानता है तो जो डायगोनल वाला पार्ट है इसको इग्नोर करना है इसके अलावा सारा काम चेक करें कि यार क्या 0 1 को जानता है लिखा है 1 तो ठीक है यानी 0 1 को जानता है बहुत बढ़िया क्या 0 2 नहीं जानता ध्यान से 1 किसी को भी नहीं जानता वो आपको पता लगी अब यहां से अगर मैं कंडीशन सेट करने जाऊं तो मुझे लिखा है कि 1 जो है किसी को नहीं जानता 1 नोस नो वन 1 नोस नो वन क्योंकि भाई सबके अंदर 0 लगा हुआ है और दूसरी चेक करनी है क्या सब लोग 1 को जानते हैं तो क्या 0 1 को जानता है जी हां बिल्कुल जानता है कौन सेलिब्रिटी है कौन सेलिब्रिटी नहीं है ऑन कैंपस प्लेसमेंट ठीक है बहुत बढ़िया तो प्रूफ ड्रीम जॉब क्रैक करने में फोर्स है यहाँ पे क्योंकि क्योंकि मेरे पास दोनों कंडीशन ऑलरेडी लिस्टेड है कि भाई सब लोग सेलिब्रिटी जानते होंगे और सेलिब्रिटी किसको नहीं जानता बहुत बढ़िया ये बात समझ में आ गई ये बात समझ में आ गई तो जब मैं बोलता हूँ कि सेलिब्रिटी नोज नो वन तो मुझे समझ में आता है कि सेलिब्रिटी वाली रो है ना जो सेलिब्रिटी वाली रो है यार वो सारी की सारी जीरो होगी इसका मतलब एक बंदा ऐसा होगा जिसके लिए उसकी रो जो कि आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराएगा कि चल है या नहीं है ठीक है और उसके बाद आप बाहर आ जाएंगे उस कंडीशन से बोल को कंपेयर करेंगे जो भी आपका आपने एन स्क्वायर होगी मेरे दोस्त सोल्यूशन तो क्या दोस्त ब्रूट फोर्स की बात होगी अभी से ब्रूट फोर्स की बात होगी इसमें सॉल्व कर सकते नहीं अगर आपको आज के टाइम कोई पूछा आप ये सोल्यूशन एटलीस्ट बता देते तो आप ये सोल्यूशन एटलीस्ट बता ही देते आपको ये तो आता था भाई मैंने बोला इसको इंप्रूव करो इसको ओवन में ले जाओ आप जो भी कॉलम के लिए होगा ठीक है क्या मेरा आंसर निकल गया सेलिब्रिटी है ना जो सेलिब्रिटी है उसकी रो में ऑल जीरो होंगे ऑल जीरो बहुत बढ़िया है ना इस कंडीशन में बेसिकली मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया बहुत बढ़िया सेकंड कहता है एवरीवन नोज सेलिब्रिटी तो जो सेलिब्रिटी वाला कॉलम है ना यार उसमें सब वन होंगे एक्सेप्ट उसका जो 1 to 1 वाली चीज आ रही है अपने आप को छोड़ के यानी ये कहता है 1 सेलिब्रिटी के कॉलम है उसमें ऑल वंस होंगे सारे वन होंगे एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट डायगोनल छोड़ देना बस क्या मेरा आंसर निकल गया क्या मेरा आंसर निकल गया जी हाँ मेरा आंसर निकल गया समझ आई चीज ये बात समझ में आ रही है हमने बोला सेलिब्रिटी कौन है या जिसकी रो में सारे जीरो हो और सेलिब्रिटी कॉलम में क्या होगा सारे चेक करूंगा इन कंडीशंस के लिए फिर मैं करूंगा 2 की रो चेक करूंगा फिर 2 का कॉलम चेक करूंगा ठीक है तो मैं क्या कर 0 की रो चेक करूंगा फिर 0 कॉलम चेक करूंगा फिर 1 की रो चेक करूंगा 1 का कॉलम चेक करूंगा इन कंडीशंस के लिए फिर मैं करूंगा 2 की रो चेक करूंगा फिर 2 का कॉलम चेक करूंगा ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं मैं हर एक एलिमेंट की उसका रो और कॉलम चेक कर रहा हूं समझ में आई चीज तो मेरे पास n एलिमेंट है तो मैं क्या कर रहा हूं लेके लेस देन n तक बढ़िया यहां पहुंच गए फिर आपका एक लूप चल रहा है यहां पे जो कि रो के लिए होगा और फिर आपका एक लूप चल रहा है यहां पे जो कि कॉलम के लिए होगा ठीक है ठीक है इसकी क्वांटिटी ऑफ n है इसको प्लस कर देंगे इसकी क्वांटिटी ऑफ n में तो इस कंडीशन से टाइम क्वांटिटी क्या होगी सोल्यूशन एटलीस्ट बता देते तो आप ये सोल्यूशन एटलीस्ट बता ही देते सेलिब्रिटी भाई इज गोइंग टू यहां पे मैंने क्या बोला कि यार मैं करता हूं एक स्टैक का प्रयोग कर लेता हूं कैसे फटाफट सोचते हैं मैंने बोला एक स्टैक बना लो एक स्टैक बना लो एक स्टैक बना लिया एक स्टैक बना लिया मैंने बोला स्टैक के अंदर ना सेलिब्रिटी एलिमेंट बचेगा एंड में कैसे भैया समझेंगे मैंने बोला चेक कर लेते दोस्तों जो भाई एल्गो उसके साथ सोच रहे हैं एल्गो क्या कहती है एल्गो क्या कहती है सबसे पहले पुट ऑल एलिमेंट इनसाइड द स्टैक ये सारे एलिमेंट डाल दो स्टैक के अंदर समझ में आई तो मेरे पास कितने एलिमेंट है यहाँ पे ऊपर जाकर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया फिर मैंने बोला अब क्या करना है मैंने बोला 2 एलिमेंट निकालो मैंने बोला कि जब तक स्टैक का साइज नॉट इक्वल टू 1 जब तक स्टैक का साइज नॉट इक्वल टू 1 तब तक क्या करो 2 एलिमेंट निकालो एस डॉट टॉप निकालिए पहले फिर तुमने क्या एस डॉट टॉप कर दिया और तुम दूसरा एलिमेंट निकाल लिया टॉप करके अब तुमने टॉप कर दिया समझ में 2 एलिमेंट निकल गए ए और बी 2 एलिमेंट निकल गए ए और बी 2 पर्सन आ गए तुम्हारे पास अब क्या हो सकता है ये हो सकता है इफ ए नोज बी क्या ए बी को जानता है इफ ए नोज बी अगर ए बी को जानता है तो गारंटी है भाई ये तो सेलिब्रिटी नहीं होगा ए को डिस्कार्ड कर दो और बी को वापस डाल दो बी को वापस छोड़ दो ठीक है या फिर ये भी हो सकता था कि बी जो है वो ए को जानता हो बी जो है अच्छे से लिखते हैं इसको तो ये भी हो सकता है कि यार बी जो है वो ए को जानता हो अगर बी ए को जानता तो बी सेलिब्रिटी कहां का होगा तो ए को जानता है सेलिब्रिटी को जानता तो इसका मतलब बी तो आंसर नहीं होने वाला ए हो सकता है तो एक वापस डाल दो
तो एक वापस डाल दो, ठीक है। ये तो कंडीशन हो सकती है यार। अब आगे चलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई यार। ऐसे करते करते हमारे पास स्टैक में सिर्फ सिंगल एलिमेंट बचा होगा। कैसे? लेट्स से हमने दो एलिमेंट निकाले, पहला क्या आ गया ए 2, तो ए मेरे पास 2 आ गया, इसको पॉप कर दिया, फिर बी निकाल लिया 1 आ गया, इसको मानता है भाई वो ए, और ये हो गया वो बी 0 है, वो 1 को ट्राई कर लो। लेट्स क्या कहता है, वेरीफाई कर लो, नो 1। दूसरा कहता है एवरीवन डाल दो ए हो सकता है, तो हमने क्या ए एन तक जा रहा है, तो मैंने क्या बोला स्टैक के अंदर पुश करने हैं सारे के सारे एलिमेंट, स्टैक डॉट पुश एन, बढ़िया। तो ये मेरा स्टेप 1 है। स्टेप 1 पुश मैक्स रेक्टेंगल इन बाइनरी मैट्रिक्स विद ऑल वंस, है ना बड़ा और लंबे नाम वाला क्वेश्चन। तो इन शॉर्ट लेट्स से मेरे पास मैट्रिक्स इस प्रकार का मैट्रिक्स है, इस प्रकार का 0 1 1 0 0 इस प्रकार, ये है भैया 0 1 2 3 और ये है भैया 0 1 2 3, ये जो है आपकी रोज बोलता हूँ, इनको मैं आपको कॉलम्स बोलता हूँ। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहता है समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मैक्सिमम एरिया निकालो, जैसे पिछला वीडियो देखा ना लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम, उस वाली चीज है। तो क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम एरिया निकालो ऑफ रेक्टेंगल फाउंड बाय ऑल वंस। तो 1 के द्वारा कौन कौन से रेक्टेंगल बन रहे हैं? मैंने बहुत सारे बन रहे हैं यार। मुझे दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है? ये कितने 3 और ये कितने 2, 3 2 6 आंसर आ रहा है इसका। मैंने बोला कि टोटल ये वाला रेक्टेंगल है, इसका आंसर 8 आ रहा है, ठीक है, जिसमें ये सारे के सारे 1 है, इसमें सारे के सारे 1 है, ठीक है। ये समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि 3 1 से बड़ा जो रेक्टेंगल बन रहा है, मुझे मैक्सिमम एरिया बता दो जितने रेक्टेंगल बन रहे हैं उसके द्वारा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, उसको सॉल्व करने में मजा आएगा, समझ में आएगा, सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास इनपुट में ये पड़ा हुआ था और मैंने क्या कर दिया, मेरे को दिखा कि ये वाला जो है रेक्टेंगल जो इन 8 1 से बन रहा है, ये जो मैक्सिमम एरिया वाला, मैं आंसर कर दिया 2 4 8। बहुत बढ़िया, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। अब सवाल ये है करना कैसे, सवाल ये है करना कैसे, भैया कैसे अप्रोच करें इसको। मैंने लास्ट वीडियो देखी थी, लास्ट वीडियो आपने बोला कि लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम निकालो, है ना, लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर निकाल के दिखाओ, और सामने बोलता है लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर निकाल के हिस्टोग्राम के अंदर, सेम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला, फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो है ये मैट्रिक्स बना पड़ा है यहाँ पे, मेरे पास जो है ये मैट्रिक्स बना पड़ा है, यहाँ कुछ कुछ वैल्यूज है इसके अंदर, बढ़िया। 0 1 1 0, उसके बाद 1 1 1 1 और उसके बाद 1 1 1 1 और उसके बाद 1 1 0 0, ठीक है। ये है 0 1 2 3, सॉरी ये है 0 1 2 3, बहुत बढ़िया। सॉल्व करने की बात करें, अप्रोचिंग वाली लिखूंगा फटाफट में, समझ आ जाएगा फटाफट। हमें ये वाला क्वेश्चन आता है दोस्त, ये मेरा असम्पशन है, असम्पशन क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूं, तो ये सीखना पड़ेगा आपको पहले। कोड बहुत सामने वाला है, आपने कोड रखा पहले, ठीक है। तो हमें ये वाला कोड आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि मैं 1 बाय 1 बनाऊंगा, मैं इस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ने वाला हूं, छोटी-छोटी प्रॉब्लम तोड़ने वाला हूं। तो मैंने क्या बोला, लेट्स टेक इतना पार्ट, लेट्स टेक इतना पार्ट, लेट्स टेक फर्स्ट रो, ठीक है। ले लो भाई फर्स्ट रो ले लो। तो हमने फर्स्ट रो ली, क्या आ रहा है फर्स्ट रो के अंदर, क्या है 0 है 1 है 1 है 0 है। ग्राफ बनाऊंगा कैसे बनेगा यार, ये यहां पे कुछ भी नहीं 0 का है, फिर ये 1 है, ठीक है, और फिर अगला वाला भी 1 है, ठीक है, अगला वाला 0 है, समझ में आई। तो इसमें लार्जेस्ट एरिया इन हिस्टोग्राम वाला लॉजिक लगा देंगे और मेरा मैक्स एरिया क्या आ जाएगा इस केस में 2, कैसे आ गया 2, इसकी विड्थ कितनी है 2 और इसकी लेंथ कितनी है 1, 2 मतलब 1 2 आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने इतना कर लिया, मजा आ गया। ये था मेरा पहला स्टेप, स्टेप 1। अब मैं सेकंड स्टेप करना है। मैंने बोला कि अभी जो मैंने सिलेक्ट किया था इतना पार्ट, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे इतना पार्ट सिलेक्ट करना है, अब मुझे इतना पार्ट सिलेक्ट करना है, इतना पार्ट सिलेक्ट करूंगा तो क्या आंसर बनेगा, चलो बनाते हैं। 0 और 1 कितना हो गया 1 हो गया, फिर ये वाला 1 और ये वाला 1 कितना हो गया 2 हो गया, फिर ये वाला 1 और ये वाला 1 कितना हो गया 2 हो गया, ये 0 ये 1 कितना हो गया ये 1 हो गया, बहुत बढ़िया। ग्राफ बनाओ कैसे बनेगा, ये मान लो ग्राफ का बेस है, तो ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 2 और ये बन गया 1। मैंने बोला लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम वाला लॉजिक लगाऊंगा, आंसर क्या आ जाएगा, एक तो ये बन सकता है 1 और ये 4, तो 1 आगे 4, या फिर ये बन सकता है दोस्त कि ये विड्थ कितनी है 2 और ये लेंथ कितनी है 2, तो आंसर 4 आ गया। हम चलते हैं आगे। मैंने बोला इतना पार्ट हो गया। अब मैंने क्या बोला, अब मैं इतने मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूं, इतने मैट्रिक्स को, ठीक है, फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 0 1 1 क्या हो गया, 3 मिला के 2 बन गया, थर्ड स्टेप में मिला, तो तीनों को मिला दूं तो क्या बन गया, पहले 2 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर इसको बनाते हैं 1 1 1 3 हो गया, ठीक है, फिर 1 1 1 3 हो गया, फिर दोबारा उसके बाद 1 1 0 2 हो गया, ठीक है। इसका ग्राफ बनाता हूं, ये बन गया भाई 2, फिर ये हो गया भाई 3, फिर ये हो गया भाई 3 और ये हो गया भाई 2। तो मैंने क्या बोला कि ये मेरा ग्राफ है और फिर मैक्सिमम एरिया निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखो ये है मेरा 2 और ये इसको मैं खींच सकता हूं पूरी विड्थ तक, तो क्या आ गया 4 आ गया, क्या बन गया 8 ही बन गया। या फिर मैं 3 वाला लेता तो ये 2 थी और ये लेंथ कितनी 3 3 2 6 होता है, 3 2 6 में मैक्सिमम 8, तो इसमें आंसर 8 आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम एरिया आज के टाइम पे जो है वो 8 आ रहा है। अब मैंने क्या बोला कि चलो ठीक है, अब स्टेप 4 पे चलते हैं, अब स्टेप 4 पे चलते हैं। अभी तक मैंने क्या किया था, पहले स्टेप में मैंने इसको बेस माना था, पहले स्टेप में मैंने इसको बेस माना था और इस एरो कंसीडर किया था, बहुत बढ़िया। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया था, इसको बेस माना था और इसको पूरे कंसीडर किया था, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में इसको बेस माना था और इसको पूरे कंसीडर किया था, और चौथे स्टेप में इसको बेस मानूंगा और इसको पूरे कंसीडर करूंगा। फटाफट समझते हैं क्या मतलब, क्यों बता कर रहा हूं आपको, इसी बेस मानने वाली समझते हैं। तो अब मैं इस पूरे मैट्रिक्स को कवर करने वाला हूं। अगर यहां पे ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, यहां पे 3 की एक बिल्डिंग बन रही है, 1 1 3 की बिल्डिंग बन रही है, यहां पे लेता हूं 3 आ गया। फिर यहां पर ध्यान से देखें नीचे के ऊपर 4 की बिल्डिंग बन रही है, 1 1 1 1 4 की। इन शॉर्ट मैं ऐसे बोलूं कि ये हिस्टोग्राम है, तो मैं हिस्टोग्राम तो मैं शायद शुरू होना चाहिए ना, तो यहां पे 0 है तो यहां पर आएंगे। इन शॉर्ट जहां भी आपका 0 लिखा होगा उसको आप 0 मानो भाई, उसको बिल्डिंग मानिए मत। आगे गए यहां 0 लिखा हुआ तो इसको 0 मान लिया, बहुत बढ़िया। फटाफट ग्राफ बनाते हैं इसका ग्राफ बनाया। इसका ग्राफ में क्या हुआ, यहाँ 3 की बिल्डिंग आई, यहाँ 4 की बिल्डिंग आई और यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, बहुत बढ़िया। आंसर का ध्यान से देखो, ये है 3 की लेंथ और ये 2 की विड्थ, आंसर क्या है 6 और ये पिछला तो 8 था तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मेरा मैक्सिमम मेरा आएगा वो आएगा 8, तब 3 की लेंथ इसका बताएंगे। इन शॉर्ट ओ 0 आ रहा है, मेरी बिल्डिंग नाइस। का समझ में नहीं। इन शॉर्ट मैं रिमेनिंग रो, आप जितनी भी रोज बची है उसका बाइटेट करोगे और क्या करोगे, हर रो के लिए ऊपर वाली रो के एलिमेंट को ऐड कर दोगे। क्या मतलब इस बात का भी समझ लेते हैं। एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे 0 1 1 0 था और ये 1 1 हो गया, तो मैंने क्या बोला ऊपर वाली रो के एलिमेंट को ऐड करो करंट रो में। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि 0 और 1 मिलकर 1 बना देंगे, ये 1 और 1 मिलकर यहाँ 2 बना देंगे, फिर ये 1 और ये 1 मिलकर यहाँ 2 बना देंगे और ये 0 और 1 मिलकर यहाँ 1 बना देंगे। इन शॉर्ट इस प्रकार की चीज बन गई। ये चीज कंप्यूट करें ना, ये ऐसे बन गया। यहाँ पे सेकंड क्या बना है 1 2 2 1 बना है, ध्यान से बना है 1 2 2 1। तो जब यहाँ पे इनको प्लस करके ये बना रहे थे ये बना रहे थे ये बना रहे थे ये बना रहे थे, वो इसके द्वारा ही बन रहा था, इसके द्वारा ही बन रहा था, इस स्टेप के द्वारा। समझ में आई। अब बात करें सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या कहता है, ये कंप्यूटर भाई जब आपकी ये वाली चीज फाइनल हो, कितना ही था भाई, और लॉन्गेस्ट एलिमेंट हिस्टोग्राम किया उसको वापस करना है। तो मैंने फटाफट वाला फंक्शन उठा लिया, ये कॉपी कर लिया, इस फंक्शन को डाल दिया यहाँ पे, उसके बाद हमने और ऊपर इस फंक्शन को उठा लिया, बढ़िया, ठीक है। तो ये मेरा सिंगल इसको कॉल कर दूंगा अपने वेक्टर के साथ, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो समझते हैं कैसे। तो हम पहली रो के लिए आंसर निकालने जा रहे हैं। हमने क्या बोला कि भाई इसके अंदर मुझे वेक्टर पास करना है, तो वेक्टर तो है यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पहले पास करते हैं फटाफट से इंट स्टार एआर और यहाँ पे जो इसका साइज होगा इसको कमेंट कर दो, ठीक है।
तो आगे चलते हैं और यहाँ पे पास भाई यार जैसे हाइट्स नाम दिया, हाइट रहने दो उसको। फिर यहाँ पे भी ये है इंस्टा एरर कर दो उसको, और यहाँ पर भी इसको इंस्टा एरर कर दो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमने क्या बोला, पहली रो के आंसर निकालो। कंप्यूट एरिया फॉर फर्स्ट रो, तो बोला इंट एरिया इक्वल्स टू लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम, और यहाँ पे क्या करो, पहली रो पास कर दो। पहली रो क्या होगी, एम ऑफ 0, और इसके कितने नंबर कॉलम है इसमें, एम है जी। इंट्रो लिखते हैं यहाँ पे दोस्त, क्या करना है इनमें। ठीक है, तो इतना करके हमने पहली रो का आंसर निकल गया। हमने क्या बोला, आगे वाली रो से पर जाना है। अगर रो हमने आई स्टार्ट किया 1 से, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एक और बताया फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस। इस केस में क्या करना है, पहला स्टेप क्या कहता है कि रो अपडेट करो बाय एडिंग प्रीवियस रो रोज वैल्यू। कैसे होगा अपडेट भाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको रो को अपडेट करेंगे। अब रो किस प्रकार अपडेट होने वाली है, हमने बोला एम ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल्स टू एम ऑफ आई कॉमा जे में प्लस कर दिया हमने एम ऑफ आई माइनस 1 जे। बढ़िया, तो ये पुराने वाले रो को दर्शा रहा है, पुराने वाले रो को उठा लो। ठीक है, इसको आपने इसमें ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया। और ऐड आप किस केस में करते हैं, ऐड आप उस केस में करते हैं जिस केस में आपकी करंट एलिमेंट जो है वो नॉट जीरो हो। इफ एम ऑफ आई ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने देखा लास्ट एग्जांपल में। बेसिकली यहाँ पर हम देखा इस चीज को, तो इस केस में ऐड कर देंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम सीधा 0 डाल देते हैं, एम ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, अपडेट कर दिया हमने, आपने रो अपडेट कर दी। तो जब आप इस लूप से बाहर निकलेंगे, जब इस लूप से बाहर निकलेंगे, आपकी पूरी रो अपडेट हो चुकी है। एंटायर रो इज अपडेटेड नाउ। बहुत बढ़िया, अपडेट होने का हमने क्या बोला था कि आंसर निकालो। तो हमने क्या बोला, आंसर कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एरिया कॉमा जो नई वाली रो का आंसर आएगा, नई वाली रो का आंसर निकालेंगे हम। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं, नई रो कौन सी होगी, एम ऑफ आई, और यहाँ पे साथ भेजना एम जो कॉलम का मतलब बेसिकली जो आएगा साइड रो का साइड रो। बढ़िया, इतना काम हो गया। अब हमने फटाफट चेक अपना आंसर कर दिया एरिया। ठीक है, मैंने बोला चलना चाहिए, मैंने बोला चलना चाहिए, ट्राई करते हैं बाइंड करके, आंसर सही आ रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ऐसा करो कस्टम टेस्ट डालो। कस्टम टेस्ट में फटाफट से डाल दिया और मैंने सारे एलिमेंट बंद कर दिए, आंसर 60 आना चाहिए इस केस में। तो बाइंड कर दिया, तो इसके 16 आता है। मैंने एक और चेक करते हैं, यहाँ पे 1 0 हो जाता है, इस केस में आंसर आता है ये वाला रेक्टेंगल आना चाहिए, मतलब ये लास्ट वाला 12 आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर आता है, 12 आंसर आ गया। अब मैंने बोला कि ऐसा करो, सारे जीरो क्या करोगे, तो बाइंड कर दिया, देखते हैं आंसर क्या आता है, 0 आना चाहिए। बढ़िया, सही चल रहा है। तो उसको सबमिट करते हैं, तो सबमिट किया और हमारा आंसर फसा 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 आ गया, चल गया। तो सारे टेस्ट पास हो गए, बढ़िया। तो हमने सॉल्यूशन कर दिया है। अब फटाफट समझ दोबारा हुआ क्या, हमने बोला कि मैक्सिमम एरिया निकालना है, उसके करके पहले पहली रो का आंसर निकाल लेते हैं। पहली रो का आंसर निकाल लिया, रो की लेंथ है ना, तो हमने क्या बोला, पहले रो का आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया। उसने निकाला बाकी जो जब इस लूप से बाहर आएंगे, बोला कि लार्जेस्ट, तो इस प्रकार को पास किया। और मुझे क्या समझ में आ रहा है भाई, मेरी जो कॉम्प्लेक्स अंदर 2 स्टैक्स को इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन नाम था 2 स्टैक्स इन एरे। ठीक है, तो उसी प्रकार का, वो तो इजी लेवल क्वेश्चन था, यहाँ पे एक हार्ड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसी प्रकार का है, पर एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है n स्टैक्स इन एन एरे। इन शॉर्ट, आपको यहाँ पे क्लास दिख रही होगी, ठीक है, n स्टैक, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर और इसके डेटा में डालने हैं और ये पुश पॉप वाला फंक्शन कंप्लीट करना है, राइट। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि यार आपके पास ना इनपुट में क्या है, आपके पास इनपुट में क्या है, ठीक है, एरे सिंगल रहेगा, वो एरे सिंगल है और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार का मान लो एरे सिंगल रहेगा, एरे सिंगल रहेगा। आपको सिंगल एरे के अंदर n नंबर ऑफ स्टैक्स इंप्लीमेंट करने हैं। जो क्वेश्चन पहले किया था वो था एक एरे के अंदर आपको 2 स्टैक्स इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत जनरल है, n की वैल्यू पूछते हैं, बोला कि भाई मुझे 5 स्टैक इंप्लीमेंट करके दिखा दो, तो आपको 5 स्टैक इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। पुश ऑपरेशन आप यहां पे देखिए, तो पुश कहता है कि m तो स्टैक के लिए, यानी स्टैक का नंबर m, उसमें x वैल्यू पुश कर दो, बहुत बढ़िया। और ये क्या कहता है m स्टैक को पॉप कर दो, समझ में आ गई चीज, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इनपुट में एक सिंगल एरे होगा, आपको सिंगल एरे के अंदर फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स टू देम कोडिंग निंजा, धन्यवाद। ठीक है, तो बात करते हैं अप्रोच के बारे में, सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे मैं आपको बताया कि 2 स्टैक्स वाले सॉल्यूशन में क्या किया था, हमने बोला पहली अप्रोच क्या है कि मैं एरे को 2 भागों में बांट दूं, एक भाग मैंने स्टैक 1 को दे दिया, एक भाग मैंने स्टैक 2 को दे दिया, भाग मतलब पार्ट होता है, एक पार्ट में स्टैक 1 को दे दिया, एक पार्ट में स्टैक 2 को दे दिया, और भैया अपने पार्ट में पुश ऑपरेशन करते रहेंगे, पुश ऑपरेशन करते रहेंगे। उसी प्रकार हमने क्या किया, हमने बोला लेट्स से कि मेरे पास एक एरे है, लेट्स से हमने बोला कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है, इस एरे के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मैंने बोला इस एरे की लेंथ जो है ना, इस एरे की लेंथ है n, ठीक है। तो ये हो गया जी n - 1 इंडेक्स तक, बहुत बढ़िया। तो इस एरे की लेंथ है n, ठीक है। तो मुझे समझ में आता है कि यार इस एरे के अंदर टोटल n एलिमेंट आ सकते हैं, टोटल n एलिमेंट्स आ सकते हैं। लेट्स से कि मेरे को इन्होंने बोला कितने स्टैक इंप्लीमेंट करने हैं, इसमें k स्टैक्स इंप्लीमेंट करने हैं, लेट्स से k स्टैक्स इंप्लीमेंट करने हैं, मतलब इसमें k नंबर ऑफ स्टैक्स इंप्लीमेंट मुझे करने हैं। अब मैंने क्या किया, इस पूरे एरे को मैंने k भागों में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, इस पूरे को मैं k भागों में डिवाइड कर दूंगा और हर एक स्टैक को एक पार्ट पकड़ा दूंगा, ये करके, क्योंकि एक बार समझ में आ गई तो बहुत ऐसा लगेगा भाई क्या खिचड़ी पका दी, खिचड़ी नहीं, तो बहुत आसान चीज है, डेफिनेशन ध्यान समझना, कोड बड़ा हो जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से हम इसको करते हैं फटाफट सॉल्व। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि दोस्त मेरे पास एक 9 साइज का एरे है, मेरे पास एक 9 साइज का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस प्रकार होगा। इंडेक्सिंग करते हैं फटाफट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार, ठीक है। अच्छे से मैं इसको बनाऊंगा आपके लिए। तो ये लो, ये हटा दिया यहाँ से, हमने क्या बोला कि ये लो भाई, इसको मिला भी दिया आपके लिए, अच्छा बना दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमने क्या बोला कि मेरे पास ये टोटल 9 साइज का एरे है, ठीक है। अब मैंने बोला मुझे 3 स्टैक्स इंप्लीमेंट करने हैं, लेट्स से मुझे 3 स्टैक्स इंप्लीमेंट करने हैं, राइट। चलो समझते हैं किस प्रकार होंगे, ये बात एकदम यूज नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे n/की पार्ट में डिवाइड किया, बेकार तरीका से समझ गए। अब जो सेकंड अप्रोच है, ध्यान समझेंगे इसको, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको बोला हूं 2 स्टैक्स वाले क्वेश्चन के ऊपर, तो हमें क्या था, ये सेकंड वे था, स्पेस ऑप्टिमाइज भी था, और हमने इसमें बहुत सारे टॉप बना के थे, मतलब 2 स्टैक्स थे, 2 स्टैक्स थे, तो मैंने यहाँ पर 2 टॉप बनाए थे, उनको ट्रैक करने के लिए कहां पे एलिमेंट पुश करना है, कहां से एलिमेंट पॉप करना है, वही कर देता हूं। तो इस अप्रोच के अंदर आपको 2 एडिशनल चीजों की जरूरत है, 2 एडिशनल चीजों की जरूरत है। पहला आपका टॉप का एरे, ये टॉप का एरे क्या चीज है, मैंने बोला जितने भी स्टैक्स है ना, लेट्स से तेरे पास टोटल k स्टैक्स है, तो तेरे टॉप का जो एरे बनेगा k साइज का बन जाएगा, ठीक है। अगर n होंगे यहाँ पे n का बन जाएगा कॉमन सेंस। तो टॉप क्या दर्शाता है, टॉप क्या सेम चीज, आपका स्टैक का टॉप क्या दर्शाता है, जो भी एलिमेंट उसमें लास्ट में डाला हुआ वो दर्शाता होगा ना, जैसे स्टैक बनता है उसमें मान लो 4 एलिमेंट डले हुए हैं, तो ये एलिमेंट सबसे लास्ट में डाला हुआ करके टॉप इसमें दर्शा होता है ना। अगर मैं बोलूंगा डॉट टॉप, तो मैं इस एलिमेंट को दर्शाऊंगा, इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। तो टॉप जो है ये आपका बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा इंडेक्स ऑफ टॉप एलिमेंट, राइट। आपके टॉप एलिमेंट दर्शा होगा। अगला एक और एरे जो नीड होगी यहाँ पे, उसको बोलते हैं नेक्स्ट एरे, इसके दो काम है यार, इसके दो काम, ध्यान समझेंगे इसको, ये समझ लिया तो गेम आ गया था।
ध्यान समझेगा, ये समझ पूरी गेम समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या बोला कि नेक्स्ट एरे, बहुत बढ़िया समझते हैं। हमने क्या बोला कि नेक्स्ट एरे के अंदर दो तरीके की चीज हो सकती है भाई, नेक्स्ट एरे के अंदर दो तरीके की चीज हो सकती है। पहला ये पॉइंट कर सकता है पॉइंट टू नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर स्टैक टॉप। क्या मतलब है इस बात का, लेट्स से कि मेरे पास स्टैक है, यहाँ पे 3 एलिमेंट पड़े हैं 3 7 9, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना वो क्या बोलेगा, इस 9 के बाद कौन सा नंबर पड़ा है 7, तो ये इस प्रकार नेक्स्ट एलिमेंट को दर्शाता है। या दूसरा कैसे हो सकता है, ये दर्शा सकता है आपको रिप्रेजेंट, या हम कर सकते हैं पॉइंट टू नेक्स्ट फ्री स्पेस या ब्लॉक। समझ में आई? तो दो चीज दर्शा सकता है, पहला या तो दर्शा रहा होगा नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर स्टैक टॉप, जो स्टैक टॉप एलिमेंट पड़ा हुआ है, इस केस में 9 पड़ा हुआ है, उसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, उसका 7 आएगा, तो 7 दर्शा रहा होगा। या फिर जो भी फ्री स्पेस है, लेट्स से आपने भी बोला अभी तो खाली पड़ा, आपने बोला कि मुझे पुश कर दो एस डॉट पुश, या फिर जो आपका पुश फंक्शन है पुश में बोला 5 डालना पहले, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में चेक कर लोगे यार खाली स्पेस कहां पड़ा है, तो वो बोलेगा 0 खाली स्पेस पड़ा हुआ है, आप जाके यहाँ पर डाल दो इस प्रकार। पर हमें पता कैसे चलेगा भैया कि ये वाली चीज दर्शा रहा है, ये वाली चीज दर्शा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपका एआर ऑफ आई जो भी नेक्स्ट काम कर रहे हो उसने कोई एलिमेंट स्टोर किया हुआ है, स्टोर एलिमेंट, क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब है कि मान लो यहाँ पर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो जो इसका नेक्स्ट होगा ना, 0 से नेक्स्ट होगा वो दर्शाएगा उसके बाद वाला एलिमेंट। इस केस में क्या होगा कि स्टैक के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट वो दर्शाएगा कि 1 के बाद क्या पड़ा हुआ, 1 के बाद तो स्टैक खाली है, तो नेक्स्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ, -1 पड़ा हुआ। समझ रहे हो? जैसे इस केस में 9 के बाद क्या 7 पड़ा था, वैसे इस केस में 1 के बाद क्या पड़ा है, मतलब -1 पड़ा हुआ, क्योंकि कुछ नहीं पड़ा स्टैक के अंदर, है ना। तो अगर एआर ऑफ आई के अंदर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, जैसे ये सारी स्पेस तो खाली है, एम्प्टी है ना, और ये वाली ब्लॉक में कुछ पड़ा हुआ है, तो अगर एआर ऑफ आई में कुछ पड़ा हुआ है तो भैया आपका नेक्स्ट एरिया दर्शाता है। उसी प्रकार इसका एल्स कंडीशन आ गया यार, एआर ऑफ आई में नथिंग स्टोर्ड, खाली है, अगर कुछ भी स्टोर नहीं है तो एल्स वाला केस आपका इसी को दर्शाता है, खाली स्पेस को, ठीक है। तो नेक्स्ट में दो चीजें दर्शाई जा सकती हैं, पहला कि वो एलिमेंट को दिखाएगा स्टैक के, वो तब होगा जब एआर ऑफ आई के अंदर एलिमेंट पड़ा होगा, और दूसरा कि वो खाली स्पेस को दिखाएगा तब होगा जब एआर के अंदर एलिमेंट पड़ा होगा। जैसे इस केस में एलिमेंट पड़ा, एलिमेंट पड़ा, तो जो नेक्स्ट होगा नेक्स्ट ऑफ 1 होगा, ऐसे नेक्स्ट ऑफ ये वाला नेक्स्ट 1 होगा, वो भी खाली स्पेस दर्शा होगा, खाली स्पेस। समझे? बहुत बढ़िया। तो हमें डेफिनेशन समझ में आ गया टॉप का क्या काम है और नेक्स्ट का क्या काम है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब एक फटाफट हम समझते हैं कि इसको हम किस प्रकार शुरू करने वाले हैं। चलो फटाफट एग्जांपल बताते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम इनपुट फॉर्मेट देखें, शुरू 3 नंबर क्या है, एन एस और क्यू, ठीक है। एन मतलब यहाँ पे ध्यान से लिख लेते हैं फटाफट, आपको समझ में आ जाए। एन का मतलब है नंबर ऑफ स्टैक्स, ठीक है। एस का मतलब है साइज ऑफ एरे, उसका हमने बोला क्यू का मतलब नंबर ऑफ क्वेरीज, ठीक है। तो एग्जांपल में जाएं, अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 और ये 2 इस प्रकार लिखा होगा। 1 2 का मतलब है टाइप 1 का मतलब है पुश करना, और टाइप 2 का मतलब है पॉप करना। बहुत बढ़िया। अब निकालो 3 6 5, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 6 है, और इसकी वैल्यू 5 है। समझते हैं क्या मतलब है, नंबर ऑफ स्टैक्स 3 बनाने। बहुत बढ़िया। अब 3 सेकंड S1 S2 S3 का साइज ऑफ एरे 6 है, ठीक है। तो ये 6 साइज का, ठीक है, मतलब 6 साइज का 1 2 3 4 5 6, इसमें से हटा देते हैं। बढ़िया। इसमें इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5, और ये मेरा एरिया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला 6 6 क्या चीज थी यहाँ पे, 6 था आपका नंबर साइज हमने कर दिया, 6 साइज बना दिया। अब नंबर ऑफ स्टैक्स 3 स्टैक्स है, ऐसा नेक्स्ट 3 उसका नंबर क्वेरीज 5 दी है, 5 क्वेरीज दी है। पहली क्वेरी क्या है 1, ठीक है, तो ये कहती है कि मुझे 10 पुश करना है, पुश करना है 10 फर्स्ट स्टैक के अंदर। दूसरी क्वेरी कहती है पुश करना है 20 फर्स्ट स्टैक के अंदर। तीसरी क्वेरी कहती है पुश करना है 30 सेकंड स्टैक के अंदर। फिर क्या कहते हैं पॉप करना है पहले स्टैक से, पॉप करना है दूसरे स्टैक से। ये 5 क्वेरीज मेरे पास है, समझते हैं। फटाफट टॉप लेयर बनाते हैं, फटाफट टॉप लेयर बनाते हैं। मेरे कितने स्टैक्स हैं, मेरे पास 3 स्टैक्स है। टॉप कैरी कितने साइज का बनेगा, 3 साइज का बनेगा। टॉप कैरी बनाते हैं, टॉप कैरी बनाया हमने 3 साइज का। चलो भैया 1 2 और 3, 0 1 और 2, 0 1 और 2। उसके बाद हमें क्या बनाना है, उसके बाद हमें जाना है नेक्स्ट वाले एरे के ऊपर। नेक्स्ट वाले एरे बनाना है भाई। नेक्स्ट वाले एरे का साइज क्या होगा, नेक्स्ट वाले एरे का साइज बिल्कुल सेम होगा जितना आपका ये ओरिजिनल एरे का साइज है 6। तो फ्री स्पेस 2 3 4 करते जाएंगे। अब क्या करना है, मैंने बोला सारे स्टैक को इंस्टॉल करना भाई, सारे टॉप्स को, तो सारे टॉप स्टार्टिंग माइनस होंगे क्योंकि इसमें एलिमेंट नहीं है, तो माइनस पड़ेगा। और नेक्स्ट हमने बोला 0, अभी देखो अब नेक्स्ट की बात करें तो मुझे देखना एरर जो है सारा एम्प्टी है, ठीक है। जब एरर जो एम्प्टी होता है उस केस में क्या दर्शाता है, पॉइंट टू नेक्स्ट फ्री स्पेस, ठीक है। तो 0 के बाद नेक्स्ट फ्री स्पेस कौन सा भाई, 0 के बाद नेक्स्ट फ्री स्पेस 1 है यहाँ पे। फिर 1 के बाद क्या 2 इसी प्रकार, 2 के बाद यहाँ पे 3 एम्प्टी स्पेस है, 3 के बाद यहाँ पे 4 एम्प्टी स्पेस है, और 4 के बाद यहाँ पे 5 एम्प्टी स्पेस है, और 5 के बाद यानी 5 का क्या स्पेस कुछ भी नहीं है, तो माइनस में डाल दिया, ठीक है। इस पर हमने इंस्टॉल कर दिया, तो ये सारा लॉजिक आपका स्ट्रक्चर में जाएगा। यहाँ से इंस्टॉल करने वाला, यहाँ से इंस्टॉल करने वाला लॉजिक आपका स्ट्रक्चर में जाने वाला, ठीक है। तो ये सारा लॉजिक आपका स्ट्रक्चर में जाएगा। एक वेरिएबल की और नीड होगी यार, एक वेरिएबल यहाँ पे और नीड होगी, इसका नाम हमने दिया, इसका नाम दे दिया फ्री स्पॉट। क्या कोई खाली जगह बताओ, कोई खाली जगह बताओ, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट में दर्शाया है एक ऐसी लिस्ट जिसमें सारे के सारे नेक्स्ट फ्री स्लॉट का डेटा पड़ा है मेरे पास। अगला फ्री स्लॉट कौन सा है, उसी बार फ्री स्पॉट एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मुझे दर्शाएगा कि भाई उस फ्री लिस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है, उस फ्री लिस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स कौन है। इस नेक्स्ट को यूज करने का तरीका होगा यार, कौन से इंडेक्स पे जाऊं वो कैसे पता लगेगा, इस नेक्स्ट वाले एरे के ऊपर कौन से इंडेक्स पे जाऊं वो कैसे पता लगेगा, वो भाई फ्री स्पॉट से पता लगेगा। तो मैंने बोला स्टार्टिंग में फ्री स्पॉट की वैल्यू 0 है, पूरा एरे जो ओरिजिनल आपका ये वाला स्टार्टिंग एम्प्टी है, तो मेरा पहला फ्री स्पॉट क्या होगा, मेरी जो फ्री लिस्ट है उसका पहला फ्री स्पॉट क्या होगा, ये वाला इंडेक्स होगा बेसिकली 0। तो ये आपकी निश्चित चीजें हैं ना, स्टार्टिंग में ये सारी चीजें इस प्रकार होंगी, सारे टॉप जो है वो -1 से निकाल होंगे क्योंकि स्टैक को चलाएंगे कहीं भी। फिर नेक्स्ट में आपके सारे फ्री स्पॉट होंगे, 0 के बाद कौन सा फ्री स्पॉट है, 0 के बाद भाई 1 फ्री स्पॉट है, 1 के बाद कौन सा 2 वाला फ्री स्पॉट है, इसमें 5 का कौन सा है, 5 का कुछ है नहीं भाई, -1 डाल दिया भाई। बढ़िया। उसके बाद कि इस फ्री लिस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है, इस फ्री लिस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है भाई, सब फ्री स्पॉट है। समझ में आ गई? अभी तक लॉजिक नहीं किया, आएंगे वहां पे आराम से जान बुझ के ताकि मुझे समझ में आ जाए। अब मेरे सामने आता है एक ऑपरेशन जो कि कहता है कि भाई पुश कर दो, पहली क्वेरी आती है पुश कर दो 10, 1 पे। समझते हैं, मेरे पास है पुश कर दो 10, 1 पे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसमें मैंने स्टेप 1 क्या बोला, मैंने इससे पूछा कि यार कौन से इंडेक्स पुश करूं, मुझे पता भी तो नहीं कौन से इंडेक्स पे डालूं। तो मैंने बोला फाइंड इंडेक्स, पहला स्टेप था फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स फाइंड करूं। तो लेट्स से एंड इंडेक्स किसके इक्वल है, मुझे पता है कि यार फ्री स्पॉट के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स को फ्री लिस्ट का, तो मैंने फ्री स्पॉट कर दिया कि यार ये तो फ्री स्पॉट के इक्वल होने वाला है। समझ में आ गई ये चीज? उसके बाद मैंने क्या बोला, चलो यार ये वाला तो फ्री स्पॉट गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ डाल दूंगा और फ्री स्पॉट को अपडेट कर देता हूं यार। फ्री स्पॉट को अपडेट करने का मतलब है कि भाई ये 0 वाला इंडेक्स को कुछ ना कुछ डाल देंगे, अगले वाला फ्री स्पॉट यहाँ पे स्टोर कर लेता हूं। यहाँ पे क्या बोला, ये फ्री स्पॉट को अपडेट कर दो भाई, क्योंकि ये वाला तो यूज कर लूंगा। फ्री स्पॉट को अपडेट कर दो, अपडेट कैसे करोगे, रिटर्न बहुत सारा भाई। अगला फ्री स्पॉट कहां से मिलता है यार, कुछ इस वाली लिस्ट से मिलता है, एरे से मिलता है ना। तो फ्री स्पॉट के अंदर क्या नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स जो हमने स्टोर किया, बहुत बढ़िया ये हो गया। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है कि यार ये सब तो ठीक है, फ्री स्पॉट तो ले लिया पर वैल्यू डालनी है। तो मैंने क्या बोला कि इंसर्ट कर दो, इंसर्ट इन एरे। इंसर्ट कैसे करेंगे, मैंने बोला एआर में कहां पर, इंडेक्स में डाल दो। क्या डालूं, जो भी यहाँ वैल्यू आई है इसको मैक्स दर्शाता हूं, ये मेरा एम होता है आपके क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैं इसमें एक्स डाल दो, ठीक है। अब मैं आता हूं अपने फोर्थ स्टेप पे, इतना पार्ट मैंने कर लिया। अब मैंने क्या बोला कि दोस्त ठीक है, अब मैंने इसको स्टोर भी कर लिया। अब क्या करना है, अब मैं जब स्टोर करा लिया तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे वो 10 स्टोर हो गया। ओके, तो जब एआर ऑफ 0 में कुछ स्टोर हो गया तो मैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कुछ एलिमेंट स्टोर हो जाता है तो नेक्स्ट क्या दर्शाता है, दर्शाता है कि यार इस स्टैक के अंदर इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा। बहुत बढ़िया, तो मुझे नेक्स्ट अपडेट करना पड़ेगा ये वाला। तो मैंने बोला नेक्स्ट अपडेट करो, तो मैंने बोला अपडेट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अपडेट करना है तो मैंने बोला नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा वो पुराना वाला टॉप जहाँ पहले टॉप होगा ना, स्टार्टिंग में होगा तो टॉप जो एम्प्टी एलिमेंट दर्शा होगा, उसके बाद यहाँ पे 10 डल गया तो टॉप इसको दर्शा है। तो मैंने बोला पुराना वाला टॉप ना वो नेक्स्ट वाला, तो मैंने बोला टॉप ऑफ m-1 क्यों करा, क्योंकि भाई 0 इंडेक्सिंग, ठीक है, इतना पार्ट हो गया। तब मैंने बोला कि चलो अपडेट कर दो टॉप को, ठीक है। अब मैं आता हूं अपने फोर्थ स्टेप पे, इतना पार्ट मैंने कर लिया। अब मैं क्या बोला कि दोस्त ठीक है, अब मैंने इसको स्टोर करा लिया तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे वो 10 स्टोर हो गया। ओके, तो जब एआर ऑफ 0 में कुछ स्टोर हो गया तो नेक्स्ट क्या दर्शाता है, दर्शाता है कि यार इस स्टैक के अंदर इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा। बहुत बढ़िया, तो मुझे नेक्स्ट अपडेट करना पड़ेगा ये वाला। तो मैंने बोला एक्सप्लेन करके बोला कि चलो अपडेट कर दो टॉप को,
ऑर्डर बहुत मैटर करता है। मान लो मैंने 5 स्टेप पहले कर दिया होता तो मैं ये नेक्स्ट वैल्यू नहीं सॉल्व कर पाता है ना। ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अपडेट कर दो अब टॉप कहां पे आएगा, ध्यान से देखो आपने यहां पर एलिमेंट डाल दिया तो टॉप कहां पे आएगा भैया, टॉप आपका 0 पे आ जाएगा। कौन सा टॉप है, कौन सा स्टेप की बात करते हैं हम भाई, फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं यहां पे है ना। तो इन शॉर्ट ये -1 यहां पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह दिखाने देता हूं आपको, दिखाने लगा टॉप हम लोग करते हैं टॉप ऑफ m-1 इज इक्वल्स टू इंडेक्स जो मैं स्टार्टिंग में किया था। समझ में आई? तो फटाफट समराइज करते हैं चीजों को, फटाफट समराइज करते हैं। बोला अगर मुझे पुश करना है, अगर मुझे पुश करना है तो सबसे पहले क्या करता हूं, पहले मैं इंडेक्स फाइंड करता हूं खाली स्पेस का, कहां पे डालूं वो कहां पड़ा होता है मुझे पता ऑलरेडी, क्या फ्री स्पॉट नाम का वेरिएबल इसके अंदर पड़ा होता है। ठीक है, तो मुझे फ्री स्पॉट मिल गया। अब मुझे फ्री स्पॉट को अपडेट करना पड़ेगा। फ्री स्पॉट को अपडेट कहां से करते हैं, मैंने बोला उसका रिलेशन ऐसे करते हैं। मैं बोला फ्री स्पॉट के अंदर नेक्स्ट ऑफ जो भी इंडेक्स पड़ा था, नेक्स्ट ऑफ फ्री स्पॉट हो गया, बहुत बढ़िया। फिर मैं बोला जो भी वैल्यू थी डाल दो यार, जो वैल्यू आप इंसर्ट करनी थी 10 इंसर्ट करना था, इस इंडेक्स को डाल दो। तो मतलब AR ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, उसके बाद इतना पार्ट हो गया। अब AR के अंदर कुछ जल गया, अब जब कुछ जलता है तो मुझे पता है कि नेक्स्ट की डेफिनेशन चेंज होती है। जब AR खाली था तो नेक्स्ट का आता था फ्री स्पेस, और जब AR में कुछ जल गया तो नेक्स्ट का आता है नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर स्टैक टॉप। बढ़िया, उसको अपडेट करते हैं। मैंने अपडेट नेक्स्ट बोल दिया, अपडेट नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट को अपडेट किया हमने, उसको मतलब पुराने वाला टॉप डाल दिया। तो इस केस में आपको बताया कि टॉप पहले यहाँ पे इस पर -1 था और बाद में जब डल गया तो टॉप 10 दर्शा रहा है, तो पुराना टॉप ये वाला हो गया। तो टॉप ऑफ m-1 क्यों, क्योंकि जो भी इंडेक्सिंग। फिर मतलब ये वाला पार्ट हो गया। अब टॉप को अपडेट कर दो भाई, क्योंकि एलिमेंट डल चुका है ना, टॉप को अपडेट कर दो, टॉप m-1 इंडेक्स। समझ में आ गई चीज। तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया। मैंने बोला कि इसको ठीक है करके देखते हैं एक बार। पहला स्टेप क्या कहता है, इंडेक्स ऑफ फ्री स्पॉट। ठीक है, तो हमने बोला इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इंडेक्स की वैल्यू इस केस में क्या आ गई, इंडेक्स की वैल्यू आ गई 0, स्टार्टिंग में 0 पड़ा था, फ्री स्पॉट 0 तो ये स्टेप हो गया। फिर क्या हो, फ्री स्पॉट को अपडेट कर दो। तो फ्री स्पॉट हमने बोला फ्री स्पॉट इक्वल्स टू नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स क्या है 0, तो नेक्स्ट ऑफ 0 की वैल्यू देखो 1 पड़ा हुआ है, तो यानी फ्री स्पॉट के डब्बे में अब 1 आ गया। बहुत बढ़िया, ये सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। एरे के अंदर x डाल दो, x की वैल्यू 10 है तो एरे में यहाँ पे 10 आ गया। बहुत बढ़िया। इन शॉर्ट थर्ड स्टेप क्या कहता है कि AR ऑफ 0 इज इक्वल टू 10। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप कहता है नेक्स्ट को अपडेट कर दो, नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स। तो इसने बोला नेक्स्ट ऑफ 0 को अपडेट कर दो क्या, टॉप ऑफ m-1। अगर मैं टॉप में जाऊं, m की वैल्यू क्या यहाँ पे 3 है, m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 0 आ गया भाई, है ना। तो इसने क्या बोला कि नेक्स्ट को अपडेट कर दो। तो हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट ऑफ 0 में इसने टॉप ऑफ 0 की वैल्यू डाली है, तो यहाँ पे -1 हो गया 1 की जगह पे। बहुत बढ़िया। बेसिकली ये दर्शा रहा है कि यार यहाँ पे 10 डल गया, अब 10 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जाओ -1 होगी, सेकंड हो जाएगा। अब चलते हैं फिफ्थ स्टेप पे, जो कहता है टॉप अपडेट कर दो, टॉप ऑफ 0। तो यहाँ पे देखेंगे टॉप ऑफ 0 जो इंडेक्स स्टार्टिंग में, इंडेक्स स्टार्टिंग में 0 था, टॉप ऑफ 0 ने 0 डाल दिया। इन शॉर्ट ये यहाँ से हट के 0 हो गया। समझे? इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक और क्वेरी आ जाए जो कि कहे पुश 20,1 सेम। मैंने बोला पहली चीज फ्री स्पॉट लेके आओ, इंडेक्स के अंदर फ्री स्पॉट डालो। फ्री स्पॉट में क्या पड़ा है, फ्री स्पॉट 1 पड़ा भाई, फ्री स्पॉट 1 पड़ा। बस समझ में आ गई। मैंने बोला सेकंड चीज क्या करते थे, फ्री स्पॉट को अपडेट कर दो। फ्री स्पॉट को अपडेट करते थे, फ्री स्पॉट इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स, दैट इज नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, और नेक्स्ट ऑफ 1 क्या है 2 है। तो फ्री स्पॉट में क्या आ गया 2 आ गया, तो ये 1 हट के यहाँ पे 2 आ गया। 2 का मतलब है कि यार यहाँ पे कुछ डलने वाला, बदला तो फ्री स्पेस है, वही होने वाला है। बहुत बढ़िया। अगले स्टेप पे जाते हैं, तो कहते हैं इंसर्ट कर दो एलिमेंट। एलिमेंट इंसर्ट करने का मतलब AR ऑफ इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, AR 1 इक्वल्स टू क्या 20 पुश करना है, AR 1 वाला 20 डाल दिया, तो यहाँ पे आपने 20 डाल दिया। बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ चल गया। तो फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि जब डल ही गया यहाँ पे कुछ आपने डाल ही दिया तो आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, नेक्स्ट डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। पहले आप फ्री स्पेस दिखाते थे, आप नेक्स्ट एलिमेंट दिखाओगे, तब नेक्स्ट अपडेट कर दो। अगले स्टेटमेंट ये है कि भाई नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसमें डाल दो टॉप ऑफ m-1, m की वैल्यू 1 है, 0 हो गया, m-1 0 हो गया, अगर m-1 दो तो नेक्स्ट ऑफ 1 यानी कि ये वाला ब्लॉक इज इक्वल्स टू जो भी टॉप ऑफ 0 में पड़ा हुआ है। टॉप ऑफ 0 में क्या पड़ा है, टॉप ऑफ 0 में ये 0 पड़ा हुआ था, तो आपने इसको हटा के 0 डाल दिया, 0 डाल दिया। और उसके बाद आपने लास्ट टाइम बोला कि टॉप अपडेट करना है, टॉप की वैल्यू टॉप m-1 0, इसमें डाल दो इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू 1। ठीक है, टॉप 0 में 1 डाल दिया, इसको भी काटा और यहाँ पे 1 डाल दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। आप बोल रहे हो कि यार यहाँ पे 10 तो डला ही हुआ था और यहाँ पे आपने 0 दिखाया, इसका मतलब क्या हुआ यार 20 को मैं हटा दूंगा ना, तो जो ये 0 पड़ा हुआ है, AR 0 पड़ा हुआ आ जाएगा, AR 0 पड़ा 10 पड़ा हुआ है, ध्यान से 20 पड़ा 10 आना है। ठीक है, तो इस प्रकार चीज चल रही है। 5 स्टेप्स आपको बताऊंगा, पुश कर लोगे भैया, पुश में टाइम लगा, समझाने में पॉप के टाइम लगा, मैंने बिल्कुल उल्टा पुश करते समझ में आ जाएगा। चलो समझते हैं, फटाफट क्लास क्लियर करते हैं, कोड करते हैं। और हमने क्या बोला कि दोस्त यहाँ पर ना क्या पड़ा होगा, सबसे पहले पड़ा है और फिर हमने क्या बोला लास्ट में कंप्लीट लास्ट इंडेक्स कर दिया और फिर इतना बड़ा कर दिया चेक फॉर ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो पे कैसे करोगे, सिंपल चेक करो फ्री स्पेस है नहीं है, अगर फ्री स्पेस नहीं है तो भैया ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अगर आपका फ्री स्पॉट इक्वल टू -1 है यानी फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा भैया, आपका स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो रिटर्न फॉल्स करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे 5 स्टेप यहाँ पे। पहला स्टेप क्या था, फाइंड इंडेक्स, हमने बोला इंट इंडेक्स इज इक्वल टू फ्री स्पॉट। दूसरा स्टेप क्या था कि भाई नया फ्री स्पॉट निकालो, अपडेट कर दो फ्री स्पॉट को, अपडेट फ्री स्पॉट यानी कि फ्री स्पॉट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट इंडेक्स। पहला क्या था, इंसर्ट एलिमेंट, इंसर्ट एलिमेंट बेसिकली AR इंडेक्स, पुराना टॉप क्या है बिल्कुल सेम है, पॉप ऑपरेशन बिल्कुल सेम है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस वाले फ्लो के द्वारा ऊपर से नीचे आते हुए आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप पुश कर रहे हो। अगर इस फ्लो को उल्टा चला दूं, रिवर्स में चला दूं, तो क्या हम पॉप कर पाएंगे, बिल्कुल सही पॉप कर पाएंगे यार। ठीक है, तो अगर पॉप कंडीशन लिखने यहाँ पे जाऊं तो इसको ट्राई करना, पॉप कंडीशन लॉजिकल लिखना, इसको ट्राई करना आपका होमवर्क है। लिखना किस प्रकार आपको समझाता हूं। पहले मैं चेक करना अंडरफ्लो कंडीशन, मान लो स्टैक एम्प्टी है और ट्राई करोगे भाई मैं इसको पॉप करूं एरर आ जाएगा, तो उसको चेक कर लो, चेक अंडरफ्लो कंडीशन इफ। तो अंडरफ्लो कंडीशन क्या कहती है, अंडरफ्लो कंडीशन कहती है कि मान लो आपके स्टैक में एलिमेंट नहीं है और आप पॉप करने का ट्राई करो, स्टैक में एलिमेंट नहीं है, तो मतलब क्या होगा, स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका टॉप तो -1 होगा ना इस टाइम पे। तो हमने चेक कर लिया इफ टॉप ऑफ m-1 इज इक्वल टू -1 तो भैया कोई एलिमेंट नहीं है, स्टैक के अंदर पॉप यार रखाओगे, रिटर्न कर दो -1 या फिर रिटर्न दो फॉल्स, रिटर्न कर दो -1 मैसेज कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने बोला जिस प्रकार आप स्लो मानो ऊपर से नीचे की तरफ, उसी प्रकार आप इसको रिवर्स में चले जाओ, रिवर्स में चले जाओ। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। तो पहले हमने क्या किया था यहाँ पे, इसको रिवर्स में लिखते चले जाएंगे, हम क्या इंडेक्स निकाल लेते हैं, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू टॉप ऑफ m-1, रिवर्स में चलता रहूं, कुछ भी करूंगा, सोचूंगा नहीं, उसको रिवर्स में लिख दूंगा। इसके प्रकार उसका मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा टॉप ऑफ m-1 इज इक्वल टू इंडेक्स, उसका मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा, इसको इंसर्ट किया, मैं आपको करने की नीड नहीं है, फिर मैं ऊपर चला गया, नेक्स्ट अपडेट कर देते हैं भाई, नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू फ्री स्पॉट। उसके बाद मैं स्टेटमेंट कर लिया फ्री स्पॉट इंडेक्स, उल्टा कर, कुछ भी नहीं कर रहा है, दिमाग नहीं लगा बिल्कुल, बस उल्टा कर जा रहा हूं और उसका रिटर्न कर दिया AR ऑफ इंडेक्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत आसान चीज थी। मैं बेसिकली इतना किया कि यार अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर 46 से लेके इस प्रकार नीचे आते हुए पुश कर रहा हूं, इंसर्ट कर रहा हूं, तो मैं अगर उल्टा चलाऊं तो पॉप हो जाएगा, हटाना ही तो है, वही सेम फ्लो को रिवर्स कर देना है। तो मैंने कुछ नहीं किया भाई, उल्टा लिखते चले गए, उल्टा लिखते चले गए। रन करना आपकी रिस्पांसिबिलिटी, आपको होमवर्क करना है। मैंने बोला कोड चलना चाहिए, मैंने बोला कोड चलना चाहिए, तो फटाफट इसको रन कर लेते हैं भाई। हमने इसको रन कर दिया और चलना चाहिए, चलना चाहिए छोटा मोटा देखते हैं। ठीक है, रोना चला फटाफट कर लेते हैं। मैंने जो सेकंड फंक्शन लिखा, लिखा हमने पहले इंडेक्स टॉप माइनस लिखा, टॉप माइनस लिखा, फिर टॉप माइनस नेक्स्ट लिखा, टॉप माइनस नेक्स्ट अच्छा निकल गया, हमने लिखा टॉप माइनस नेक्स्ट इंडेक्स। बढ़िया, फिर हमने क्या लिखा, ये तो पुश करने की नीड नहीं है, फिर नेक्स्ट इंडेक्स फ्री स्पॉट, नेक्स्ट इंडेक्स फ्री स्पॉट और उसके बाद फ्री स्पॉट इंडेक्स। बहुत बढ़िया, बढ़िया चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। चेक कर लेते हैं, चल गया, मैं बस सबमिट कर दो, सबमिट कर दिया, देखते हैं क्या आता है।
चलो जी करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया समझ में आई चीज। तो बेसिकली हमने बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे पता है बच्चे फंस जाते हैं बहुत, मैं जानबूझ के स्लो किया कि मेरे पास कोई बैलेंस पुश करने के लिए आ रहा है, मैंने बोला पहले मैं इंडेक्स निकालूं, कहां मुझे पुश करना है, कॉमन से सॉरी बात है, मुझे पता तो मुझे डालना कहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स निकाल लिया, अब ये इंडेक्स को कुछ डाल दूंगा, तो ये फ्री स्पॉट ऑपरेट करना पड़ेगा, ये फ्री स्पॉट ऑपरेट करना पड़ेगा। भैया मान लो मैं इसको यहाँ पे नहीं डालता, मान लो मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को ऊपर डाल दिया, मैंने इसको ऊपर कर दिया, अब क्या हुआ, मैंने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने मान लो पहले इंडेक्स निकाल लिया, फिर उसने कुछ पुश कर दिया, लॉजिकल बात है, कोई गलती नहीं करी आपने। फिर आपने क्या बोला कि मैं फ्री स्पॉट अपडेट करता हूँ, ठीक है, फिर आपने बोला नेक्स्ट को मैं अपडेट करता हूँ, नेक्स्ट में क्या डाला, पुराने वाला टॉप डाल दिया, और टॉप अपडेट कर दिया, लॉजिकल है ना। ये सारी चीजें अपडेट होंगी, आपको पता है आपके पास एक यहाँ पर एआरआर था, आपको पता है अपडेट होना है, एक आपका टॉप था, आपको पता है अपडेट होना है, एक आपका नेक्स्ट अपडेट होना है, एक आपका फ्री स्पॉट अपडेट होना है, ये चार चीजें अपडेट होनी है ना, पता था कि नहीं पता था, चार चीजें नहीं आ गई, इसमें कोई वैल्यू डलती, इसमें अपडेशन होती, इसमें अपडेशन होती, चार चीजें होनी थी, है ना, ठीक है। उसका मुझे पता तो होना चाहिए कौन सा इंडेक्स में डालूं, उसने मैंने ये लाइन नंबर 47 पे किया, यहाँ देखो तो 5 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5, कुछ भी नहीं है दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं आपको रट्टा मारना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं आपको समझ में ना आए, हमें सिंपल चीज है, ये चार चीजें हमें लगेगी, 1 2 3 4, ये चार अपडेट होनी है, तो चार स्टेटमेंट यहाँ से आ गई, उसका मुझे पता होना चाहिए कौन सा इंडेक्स अपडेट करना है, तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसकी टेंशन बहुत
बहुत सारी बच्चों की ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। मैंने इस क्वेश्चन करने से पहले दो तीनों की वीडियो जी कैसे सारे दिस लव ओपन वेलकम टू चैनल कोड पहुंच चुके हैं 59 पर और यहां पर स्टैक का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत होमवर्क दिया। अच्छा ये तो एक भाषा होगी, तो समझते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लेट्स से मेरे पास ये स्टैक पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ 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 एलिमेंट्स होंगे, आपने पॉप कर दिया तो स्टैक क्या बचा है, यहां से लेके यहां तक बचा हुआ है, ठीक है। अब उसने फिर वाला गेट में तो आपने क्या बोला कि यार अब तो मुझे यहां से लेके यहां तक आंसर निकालना है, अभी आंसर मेरा 2 ही आ रहा है, तो आपने फिर How do you get money? We can store a pair. One thing we can do is uh pair of let's say if I store five, then stack was empty before, so five and five. Now comes three, three and three, eight, three, eight and three, uh, two, two and two, uh, four, four and two. Now four is popped out. Four if kept in, then two. Four is popped out. Two, two. Eight was three. Yeah. दे दिया। अब उसने बोला फिर आप करना कोई कॉल मल्टीप्लाई करेंगे। थैंक्स टू देम कोडिंग निंजा क्या कोर सब्जेक्ट में क्या करना है, मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं पुश कर रहा हूं तो मुझे मिनिमम एलिमेंट को अपडेट करना पड़ता है, साथ ही साथ जो भी आपका ये करंट है समझ में आई। तो आपने इस प्रकार ये लिख लिया, ठीक है। तो आपने बोला कि यार इंट मैक्स का और 5 का हमने मिनिमम निकाला, आंसर क्या आ गया, आंसर भैया 5 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर आगे हम गए, अब हमें 3 को पुश करना है, यानी 3 के ऊपर करंट आ चुका है, तो आपने 3 यहाँ पर डाल दिया। तो 3 यहाँ पर लिया, आपने फिर दोबारा सेम फॉर्मूला लगाया, तो आपने बोला कि मिनिमम निकाल दो किसका, मिनी का। मिनी का मतलब है 5 और करंट का मतलब है 3, आंसर क्या आ गया 3। इन शॉर्ट आपने यहाँ पे इसके लिए 3 स्टोर कर लिया, बहुत बढ़िया। फिर हम आगे गए 8 आ गया, 8 हमने यहाँ पुश किया, 8 पुश किया, फिर फिर फॉर्मूला लगाया मिन ऑफ मिनी, मिनी करंट मिल गया 3 और डालना क्या है, करंट मिल गया, करंट भी 8 पे तो 8। बट हाँ सिंपल है, अब मैं बोला गेट मिन वाला जल्दी करते हैं, 4 तो है ही नहीं, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इस पूरे का आंसर स्टोर नहीं वाला, तो बोले 2 भी नहीं है 8 भी नहीं है, तो मैंने बोला यार इस पूरे का आंसर स्टोर है ना भाई यहाँ पे वाला। तो इस प्रकार मुझे ऑफ एंड स्पेस मैंने सोल्यूशन निकाल दिया है और आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी केस है, समझ में आ गई चीज। तो बेसिकली हम करते क्या है इसमें, हमने अप्रोच टू के बारे में फटाफट अपना स्टैक बना देते हैं कि यार ये मेरा स्टैक है और मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है, वो है 5 3 8 2 4। बढ़िया, मुझे पता है मुझे एलिमेंट रखना पड़ेगा ओपन के लिए, तो लेट्स से मेरे पास मिनी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका नाम है मिनी, इसमें स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है इंट मैक्स, ठीक है। अब शुरू करते हैं, बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में पुश ऑपरेशन के बारे में। पुश ऑपरेशन किस प्रकार काम करेगा, मैंने बोला तो सिंपल, अपनी ओवरफ्लो वाली कंडीशन चेक कर लेंगे, स्टैक ओवरफ्लो ना हो जाए, ओवरफ्लो कंडीशन चेक कर लेना। फिर मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट आप क्या करोगे, नॉर्मल पुश कर देना, नॉर्मल पुश कर देना और साथ साथ मिनी को अपडेट कर देना। इन शॉर्ट मैंने बोला कि इस 5 को स्टैक में डाल दो, तो इस केस में आपने क्या बोला मिनी को, और मैंने क्या बोला बाकी एलिमेंट्स के लिए, बाकी बचे एलिमेंट फर्स्ट के अलावा। इन शॉर्ट इन सारे एलिमेंट क्या करना है ये समझते हैं। बाकी एलिमेंट क्या करना है, हम सिंपल कंपैरिजन करेंगे कि यार इफ करंट इज लेस देन मिनी, यानी मैं जिस भी एलिमेंट पे हूं, लेट्स से मैं 3 पे हूं, अगर वो इस मिनी वैल्यू से छोटा है तो चलो नया मिनी वैल्यू मुझे मिलने वाला है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में मुझे क्या करना होगा, इस केस में मुझे क्या करना है, एक वैल्यू निकालनी है जो कहती है कि यार 2 स्टार करंट माइनस मिनी, ठीक है। उस वैल्यू को पुश करना है स्टैक में और मुझे मिनी को अपडेट कर देना है। ये 3 चीज करनी है। ये क्या निकाल दिया आपने, ये समझ में नहीं आया, बाकी ठीक है समझ में आ रहा, बट ये क्या चीज है ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये लॉजिक समझाऊंगा आपको कि हम ये क्यों पुश कर रहे हैं, नॉर्मल जो आपकी वैल्यू वो पुश नहीं कर रहे, करंट पुश नहीं कर रहे हैं, ये समझाऊंगा आपको, बट अभी के लिए इसको रोकते हैं, मैं बताऊंगा व्हाई दिस वर्क्स और इसको क्यों यूज करते हैं, समझाएंगे आपको, ठीक है। रुको, तो मतलब इफ ये और एल्स कंडीशन करेंगे, एल्स पार्ट है यानी कि करंट जो बड़ा है तो उसमें नॉर्मल पुश कर देना भाई, नॉर्मल पुश कर देना, सिंपल। ये हमारी एल्गो कहती है पुश करिए। तो हम समझ गए यार, हमने बोला चलो पहला एलिमेंट तो पुश कर दिया, सेकंड 3 पे आ गए, तो हम 3 पे आए तो हमने चेक किया क्या 3 लेस देन मिनी, मिनी की 5, अरे हां 2 आ गया, तो 2 आ गया, तो कहां पे आ गए, इस कंडीशन में आ गए, वैल्यू निकाली ये वाली, तो वैल्यू ने बोला 2 स्टार करंट, करंट की वैल्यू क्या है 3 है, यानी ये 3 माइनस मिनी, मिनी क्या है 5 है, आंसर आ गया 1, तो मैंने यहां पे 1 पुश कर दिया, ये वाला पुश कर दिया। फिर मैंने मिनी को अपडेट किया कि यार इस केस में तो कंडीशन ट्रू आ गई थी, तो मेरे मिनी को 5 से काट के ये वाला 3 कर दो, बहुत बढ़िया, समझ में आई ये चीज, समझ में आई ये चीज। अब चलते हैं आगे वाले मेरे को जो कि 8, अगर यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ 8 को कंपेयर किया मिनी से, तो 8 जो है वो लेस देन 3 नहीं आ रहा, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स में नॉर्मल पुश करते हैं, यहाँ पे 8 आ गया, ये वाला फॉल्स कंडीशन है, नॉर्मल पुश करते हैं 8 आ गया। फिर मैं आ गया 2 पे, इस पे करंट आ चुका है, अब मैंने 2 को कंपेयर किया 3 से क्या 2 आ गया, हाँ भाई ये 2 आ गया, अब 2 आ गया तो 2 केस में क्या करना होता है, वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाली
Okay. टू स्टार करंट की वैल्यू क्या है 2 माइनस एल्गोरिथम लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन के बारे में। लेट्स से मैं फटाफट अपना स्टैक कंडीशन और फिर मैंने I think the I think means that the answer that we wrote was much better. Uh, that's the two stacks operation we wrote. How about यहाँ that पे मेरे one? को अपडेट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे 1 पुश कर दिया, ठीक। मैंने तो पुश कर दिया, सेकंड 3 पे आ गए। जब हम 3 पे आए तो मैंने चेक किया क्या 3 लेस देन मिनी मिनी 5 अरे हाँ आंसर आ गया 1, तो मैंने यहाँ पे 1 पुश कर दिया, ये वाला पुश कर दिया। फिर मैंने मिनी को अपडेट किया कि यार इस केस में तो कंडीशन 2 आ गई थी, तो मेरे मिनी को 5 से काट के ये वाला 3 कर दो। बहुत बढ़िया, समझ में आई ये चीज, समझ में आई ये चीज। अब चलते हैं आगे वाले मेरे को जो कि 8, अगर यहाँ पे पॉइंट करा तो मेरे को कंपेयर मिनी से, तो 8 जो है वो लेस देन 3 नहीं आ रहा, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स को नॉर्मल पुश करते हैं, यहाँ पे 8 आ गया, ये वाला फॉल्स कंडीशन है, नॉर्मल पुश करते हैं 8 आ गया। फिर मैं आ गया 2 पे, इस पे करंट आ चुका है, और मैंने 2 को कंपेयर 3 से क्या 2 आएगा, हाँ भाई 2 आ गया। अब 2 आ गया तो केस में क्या करना होता है, वैल्यू निकाली, तो वैल्यू निकाली 2 स्टार करंट की वैल्यू क्या है 2 माइनस मिनी की वैल्यू क्या है 3, इनपुट आंसर आ गया 1 1 को मैंने यहाँ पुश कर दिया, ये वाली कंडीशन, और फिर मैंने यहाँ पे मिनी को अपडेट कर दिया, तो 2 के लिए कंडीशन ट्रू ही थी, तो मैंने 3 को काट यहाँ पे 2 कर दिया। फिर हम आगे गए, अगला करंट यहाँ पे 4 पे, तो मैं 4 कंपेयर किया मिनी से, मिनी क्या है 2 है, 4 लेस देन 2 फॉल्स आ गया भाई, फॉल्स वाले केस में यहाँ पे आ गया, तो हम पुश करते हैं 4 आ गया, समझ में आई चीज। तो इस प्रकार मेरी मिनी की वैल्यू जो है अपडेट होकर होकर एट 2 पे स्टॉप हुई है, और मैंने ये पुश एल्गोरिथम लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन के बारे में। लेट्स से मैं फटाफट अपना स्टैक क्रिएट कर लेता हूं, फटाफट स्टैक बना लेता हूं, और स्टैक में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, स्टैक वैल्यूज पड़ी हैं 5 1 8 1 4 5 1 8 1 4, ये मेरा स्टैक है, और मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू पड़ी हुई है, जो मिनिमम वैल्यू पड़ी है वो है 2, बहुत बढ़िया। अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, पॉप ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूं, पॉप ऑपरेशन के बारे में। सबसे पहले तो कंट्रोल कंडीशन चेक करना है, सबसे पहले अंडरफ्लो वाली कंडीशन चेक कर लेना, ठीक है। यार ये ना हो कि आपको स्टैक एम्प्टी पड़ा आप पॉप करने का ट्राई करोगे, कंफ्यूज हो जाएगी। उसके बाद में आगे क्या, तो कंडीशन है कि इफ करंट करंट क्या भैया, मैंने बोला स्टैक का टॉप है ना, उसमें करंट बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर करंट जो है वो ग्रेटर देन मिनी आता है, अगर करंट जो है यानी यहाँ पे टॉप वैल्यू पड़ी है वो मिनी वैल्यू से बड़ी है, तो उसके इसमें क्या करता हूँ, नॉर्मल पॉप करता हूँ भाई मैं, सिर्फ नॉर्मल पॉप करता हूँ, एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, एक्स्ट्रा मतलब इस मिनी को अपडेट करने की नीड नहीं है। एल्स यानी करंट जो है वो छोटा है मिनी से, तो उसके इसमें क्या करूँगा, अगर करंट मिनी से छोटा है तो भैया मुझे इस मिनी को अपडेट करना पड़ेगा, इस मिनी वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एल्स इस केस में क्या करूँगा मैं, इस केस में सबसे पहले वैल्यू निकालूंगा जो कि बनेगी 2 स्टार मिनी माइनस करंट, भैया कैसे आया और क्यों आया समझाएंगे अभी। फिर मैं क्या करूँगा, मिनी की वैल्यू निकालूंगा, मिनी इज इक्वल्स टू ये वैल्यू, मिनी अपडेट कर दिया और फिर मैंने पॉप कर दिया, बेसिकली ये बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार मैंने ये पॉप की एल्गोरिथम लिख लिया है, ठीक है। इसके ऊपर करने का ट्राई करते हैं, इसके ऊपर फटाफट करने का ट्राई करते हैं। तो हमने क्या बोला कि यार सबसे पहले पॉप करो, तो हमने कंपेयर किया किसको, करंट को, यानी 4 को, यानी इस 4 को किसके साथ, मिनी के साथ। मैंने करंट ग्रेटर मिनी, तो करंट हम डाला 4 और मिनी ग्रेटर 2, ठीक है भाई, ये वाली कंडीशन आ गई, नॉर्मल पॉप कर देंगे इस केस में, यानी 4 हट गया। फिर हम आगे गए, हमने बोला 1 चेक करना भाई, 1 जो है वो लेस देन 2 आ रहा है, ओके, तो यानी हम ये वाले पार्ट में आ चुके हैं। इसको हम निकालने ट्राई करते हैं, वैल्यू इक्वल टू 2 स्टार मिनी की वैल्यू क्या है 2 और करंट की वैल्यू क्या है 1, तो ये 3, तो ये 3 आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है मेरी मिनिमम वैल्यू 3 होनी चाहिए। अगर मैं आपके स्टैक के ऊपर देखने जाऊँ तो मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि भाई ये रहा मेरा स्टैक, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या क्या थी 5 3 और 8, बिल्कुल सही। तो यहाँ से मेरी वैल्यू 3 आनी चाहिए, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, समझ में आई। उसी प्रकार मान लो मैंने इसको ये निकालने के बाद पॉप कर दिया था, उसको मैंने बोला दोबारा पॉप कर दो, अब मेरे इतने बच्चे स्टैक में दोबारा पॉप कर दो, तो फिर दोबारा मैंने 8 निकाला, 8 को कंपेयर किया हमारी मिनिमम वैल्यू जो कि 3 है, तो हमने बोला कि यार 8 जो है ना वो ग्रेटर देन 3 आ गया, तो ये वाली कंडीशन होगी, नॉर्मल पॉप हो गया। अब मेरा स्टैक में कितना बचा हुआ है, मैंने 1 निकाला, 1 को चेक ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इस प्रकार मेरी मिनी की वैल्यू जो है अपडेट होकर होकर एट 2 पे स्टॉप हुई है, और मैंने ये पुश एल्गोरिथम लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन के बारे में। लेट्स से 4 पे, तो मैं 4 कंपेयर किया मिनी से, मिनी क्या है 2 है, 4 लेस देन 2 फॉल्स आ गया भाई, फॉल्स वाले केस में यहाँ पे आ गया, तो हम पुश करते हैं 4 आ गया, समझ में आई चीज। तो इस प्रकार मेरी मिनी की वैल्यू जो है अपडेट होकर होकर एट 2 पे स्टॉप हुई है, और मैंने ये पुश एल्गोरिथम लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन के बारे में। लेट्स से मैं फटाफट अपना स्टैक क्रिएट कर लेता हूँ, फटाफट स्टैक बना लेता हूँ, और स्टैक में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, स्टैक वैल्यूज पड़ी हैं 5 1 8 1 4 5 1 8 1 4, ये मेरा स्टैक है, और मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू पड़ी हुई है, जो मिनिमम वैल्यू पड़ी है वो है 2, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूँ किसके बारे में, पॉप ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, पॉप ऑपरेशन के बारे में। सबसे पहले तो कंट्रोल कंडीशन चेक करना है, सबसे पहले अंडरफ्लो वाली कंडीशन चेक कर लेना, ठीक है। यार ये ना हो कि आपको स्टैक, ठीक है। तो अगर करंट जो है वो ग्रेटर देन मिनी आता है, अगर करंट जो है यानी यहाँ पे टॉप वैल्यू पड़ी है वो मिनी वैल्यू से बड़ी है, तो उसके इसमें क्या करता हूँ, नॉर्मल पॉप करता हूँ भाई मैं, हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले तो कंट्रोल कंडीशन चेक करना पड़ेगी, जो वैल्यू पॉप ऑपरेशन के बारे में नई चीज। तो इस प्रकार मेरी मिनी की वैल्यू जो है अपडेट होकर होकर एट 2 पे स्टॉप हुई है, और मैंने ये पुश एल्गोरिथम लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन के बारे में। लेट्स से मैं
पे तो मैं 4 कंपेयर किया मैंने मीनिंग क्या है 2 है 4 लेस देन 2 फॉल्स आ गया भाई फॉल्स वाले केस में यहाँ पे आ गया तो हम पुश करते हैं 4 आ गया समझ में आई चीज तो इस प्रकार मैं स्टैक क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट स्टैक बना लेता हूँ और 2 पे स्टॉप हुई है और मैंने ये पुश एल्गोरिथम लिख लिया ठीक है अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन के बारे में लेट्स से मैं फटाफट तो मैं 4 कंपेयर किया मैंने मीनिंग क्या है 2 है 4 लेस देन 2 फॉल्स आ गया भाई फॉल्स वाले केस में यहाँ पे आ गया 12 पे 3 इनपुट आंसर आ गया 1 1 को मैंने यहाँ पुश कर दिया ये वाली कंडीशन पुश कर देते हैं 8 आ गया फिर मैं आ गया 2 पे इस पे करंट आ चुका है और मैंने 2 कंपेयर किया 3 से क्या ट्रू आएगा हां भाई ये ट्रू आ गया अब ट्रू आ गया ट्रू केस में क्या करना होता है वैल्यू निकालनी होती है वैल्यू निकाली 2 स्टार करंट करंट की वैल्यू क्या है 2 माइनस में की वैल्यू 3 इनपुट आंसर आ गया 1 1 को मैंने यहाँ पुश कर दिया ये वाली कंडीशन और फिर मैंने यहाँ पे मेरे को अपडेट कर दिया तो 2 के लिए ये कंडीशन ट्रू ही थी तो मैंने 3 को काट के यहाँ पे 2 कर दिया फिर हम आगे गए हमने बोला नहीं के साथ तो मैंने कहा भाई 1 जो है वो लेस देन 2 आ रहा है 1 देखने जाऊँ तो मुझे क्या पता है मुझे ये पता है कि भाई ये रहा मेरा स्टैक और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या क्या थी 5 3 और 8 पॉप कर दो अब मेरे इतने बच्चे स्टैक में दोबारा पॉप कर दो मुझे फिर दोबारा मैंने 8 निकाला 8 को कंपेयर किया हमारी मिनिमम वैल्यू जो कि 3 है तो हमने बोला कि यार 8 जो है ना वो ग्रेटर देन 3 आ गया तो ये वाली कंडीशन जो भी नॉर्मल पॉप हो गया अब मेरा स्टैक में इतना बचा हुआ है मैंने 1 निकाला तो क्वेश्चन तो मैं समझ गया अब तो फॉर्मूले हैं एक क्वेश्चन मैंने किया यार 2 स्टार करंट माइनस मिनी और पॉप में मैंने किया 2 स्टार मिनी माइनस करंट इन शॉर्ट में क्या कहता हूँ कि मैं क्यों किया पहले सोचते मैंने इसलिए किया कि ताकि मैं करंट मिनिमम का यूज करके मैं प्रीवियस मिनिमम को भी फाइंड कर पाऊँ अभी हमने पहले अप्रोच में क्या देखा था कि यार हमने एक स्टैक्स लिया हुआ था ओवन स्पेस लिया हुआ था उसमें सारे मिनिमम स्टोर करते थे बट जो सेकंड अप्रोच था जब मैं यहाँ पे 3 2 मल्टीप्लाई इस प्रकार का होता है इसका पहले टाइम इसका नाम लिख दिया यानी पहले पुश कर नॉर्मल पॉप करने वाले थे Modest traversal. वाले हैं इतना इंपॉर्टेंट कि लास्ट ईयर मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया था तो ये वाला क्वेश्चन सामने आया था और मुझे नहीं आता था ठीक है तो बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में एक ट्रैवर्सल के बारे में जिसका नाम है मॉरिस ट्रैवर्सल तो बेसिकली एक क्वेश्चन गूगल में से पूछा ट्रीज के ऊपर तो उन्होंने ट्रैवर्सल के बारे में कौन कौन से आते हैं जीवन का याद है इनऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर लेवल ऑर्डर और वो कहते हैं कि अच्छा और बताओ एक और होता है बता दो एक और नहीं आता यार तो मॉरिस ट्रैवर्सल समथिंग मुझे आता नहीं था उस टाइम पे बाद में पढ़ना पड़ा जैसे खत्म उसके बाद मैंने पढ़ा क्या होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ जाएगा तो फटाफट ट्री बनाते हैं आपके लिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए किस प्रकार से काम करती है एक एग्जांपल आपके लिए उठा लेते हैं यहाँ से ठीक है तो हमने बोला इग्नोर ये यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे चलो ठीक है तो ये सिग्नेटेड है ये सिग्नेटेड है ये सिग्नेटेड है ये सिग्नेटेड है और ये सिग्नेटेड है ये सिग्नेटेड है ये आपकी रूट नोड है ये डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये आपकी यार लीफ नोड है ना लीफ नोड है नल को पॉइंट होगी ठीक है ये बात समझ आ गई तो इस प्रकार हमें ये चीज समझ में आई है अब बात करते हैं मॉरिस ट्रैवर्सल होता क्या है तो फटाफट मैं आपके लिए ग्राफ देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए हाँ होने का वाला है उसको ड्राइव करेंगे आपको समझाएंगे चीजें कैसे काम करती है इसलिए स्पॉन्सर्ड बाय रिलेबल दियास फॉर साइनिंग प्लेटफॉर्म तो क्या कोई पैसे देने के लिए प्रोफाइल्स आर हाई एक्सपायर करना बहुत आगे एंड यू बाउंड टू गेट प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो कि सैलरी अराउंड ये एल्गो आपके लिए हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप बेस में मैं चाहता हूं आपको पहले समझा के उसके बाद चीज लिखता थोड़ी सी कंफ्यूजन आती क्योंकि ट्रैवर्सल है और चीजें फिक्स है इसके अंदर क्या क्या होने वाला है तो फटाफट समझेंगे इस पर काम करते हैं ठीक है बेसिकली हमने तो जो ट्रैवर्सल सीखा है लेवल ट्रैवर्सल सीखा या इनऑर्डर सीखा प्री ऑर्डर सीखा पोस्ट ऑर्डर सीखा क्या होता है ओवन टाइम लगाया और ओवन ही स्पेस यूज किया लेवल ऑर्डर केस में हमने यूज कर ली थी और इनऑर्डर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के रिकर्जन में हमने वहां पे बेसिकली हम हर रिकर्जन कांस्टेंट टाइम लिया स्पेस कंप्लीटली यहाँ पे कांस्टेंट होती है O1 तो इस ये फायदा है इसका बहुत ज्यादा ठीक है तो यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं हम कहते हैं टेम्परेरी लिंक्स बना रहे होते हैं रूट नोड के ऊपर जहाँ से आप आए ताकि वापस पहुंच पाए पीछे की तरफ है ना तो लेट्स से मुझे स्ट्री का इनऑर्डर बनाना तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ तो मैंने बोला कि चलो यहाँ से लेफ्ट जाता हूँ यहाँ से लेफ्ट जाता हूँ ना वापस आ गया इसको प्रिंट कर दो 4 आ गया मैं राइट जाता हूँ लेफ्ट जाओ वापस आओ प्रिंट कराओ 7 आ गया राइट जाओ वापस आओ इसको प्रिंट करा दिया 2 यहाँ गए मत करना जिस नोड से आप आए हैं उसकी तरफ और आपको ट्रैवर्सल पूरा कंप्लीट कर पाएंगे एक बार को समझते हैं करंट जो है रूट लगा दिया तो हमने पॉइंट लगा दिया करंट यहाँ पर रूट के ऊपर ठीक है बोला जब तक रूट नहीं होता तब तक करो ये नीचे प्रोसेस लिखा हुआ करो इफ लेफ्ट नॉट एग्जिस्ट अगर आपका लेफ्ट साइड एग्जिस्ट नहीं करता बट यहाँ पे सी का लेफ्ट साइड जो कि 2 है एग्जिस्ट करता है ठीक है तो एल्स पार्ट में आ गया हमने बोला प्रेडिसेसर बताओ यार प्रेडिसेसर क्या होता है बेसिकली एक लेफ्ट जाओ और फिर राइट जाते हो यार राइट जाते हो जब तक राइट का राइट वाला पार्ट है मैं मिलता है मैं एक लेफ्ट गया और फिर राइट जाता जा रहा हूं तो यहां पर इसका राइट वाला पार्ट है तो मैं रुक जाऊंगा ठीक है तो इसको प्रेडिसेसर बोलते हैं तो हमने क्या बोला ठीक है एल्स वाला पार्ट में प्रेडिसेसर ऑन कर लिया तो आपको पता क्या प्रेडिसेसर क्या है प्रेडिसेसर भाई मेरा 5 है क्या समझ में आ गया फिर मैंने क्या बोला चेक करो एक बार प्रेडिसेसर राइट नल है या एल्स वाले पार्ट में जाओ मतलब प्रेडिसेसर राइट क्या है भाई नल है यार दोस्त नल है ठीक है तो यहां पर टेम्परेरी लिंक बनाओ इसको कनेक्ट करो टेम्परेरी जहां से रूट नोड से आया था इससे आया था जहां पर करंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आपने क्या किया कि प्रेडिसेसर के राइट को करंट पे पॉइंट करवा दिया समझ में आई तो हमने टेम्परेरी लिंक बना दिया ठीक है इसके बाद हमने क्या किया हमने करंट को करंट के लेफ्ट पहुंचा दिया ठीक है करंट भाई आप यहां से हट जाए और आप यहां पे आ जाए करंट यहां पे आ गया ठीक है यहाँ पे सेम चीज होगी आपने चेक किया कैसे लेफ्ट करता है हाँ ये करता तो है एल्स पार्ट में आगे प्रेडिसेसर निकालने लेफ्ट में गए फिर राइट जाते तो राइट ना लाओ तो ठीक है आप यहां पहुंच गए फिर आपने बोला कि चलो ठीक है इसका टेम्परेरी लिंक बना दो इसका टेम्परेरी लिंक बन गया ठीक है और आपका सी करके यहां पे आ गया फिर आप इसमें चेक करो लेफ्ट नल है हाँ भाई लेफ्ट पार्ट नल है तो इस केस में वेट कर दो करंट तो आपका आंसर करंट हो गया 4 प्रिंट हो गया ठीक है करंट को करंट हो गया और ये राइट इसके यहां पे ले जाओ करंट यहां पे आ गया
ठीक है, आपने बोला लेफ्ट नहीं करता, नहीं करता कोई बात नहीं, करने का तो विजिट करंट कर दो, ठीक है, 7 प्रिंट हो गया। फिर करंट को आप राइट पे लेके, करंट यहाँ से इसके राइट पे चला गया, नहीं यहाँ चला गया, तो करंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसमें लेफ्ट नहीं करता, लेफ्ट करता है इसका, लेफ्ट करता है, तब इसका प्रेशर फाइंड आउट करो, आप प्रेशर फाइंड करने के लिए 4 पे गए, 7 आपको प्रेशर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये प्रेशर मिल गया, आपने बोला आप यहाँ पहुंच गए। फिर आपने बोला कि चलो ठीक है, इसका टेम्परेचर किया हमने, इससे आया था जहाँ करंट भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आपने क्या किया कि प्रेशर के राइट को करंट पे पॉइंट करवा दिया, समझ भाई, तो हमने टेम्परेचर बना दिया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने करंट को करंट के लेफ्ट पहुंचा दिया, ठीक है करंट भाई आप यहाँ से हट जाए और आप यहाँ पे आ जाए, करंट जाते हैं तो राइट नल है, हाँ भाई लेफ्ट नल है, तो इस केस में वेट कर दो करंट को, तो आपका आंसर करंट हो गया 4 प्रिंट हो गया। फिर क्या करना होता है, करंट राइट ले जाओ, करंट को यहाँ से हटाओ और ये राइट है इसके यहाँ पे ले जाओ, करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपने बोला लेफ्ट नहीं करता, नहीं करता कोई बात नहीं, करने का तो विजिट करंट कर दो, ठीक है, 7 प्रिंट हो गया। फिर करंट को आप राइट पे लेके, करंट यहाँ से इसके राइट पे चला गया, नहीं यहाँ चला गया, तो करंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसमें लेफ्ट नहीं करता, लेफ्ट करता है इसका, लेफ्ट करता है, तो आपने इसका प्रेशर फाइंड करो, आप प्रेशर फाइंड करने के लिए 4 पे गए, 7 आपको प्रेशर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये प्रेशर मिल गया, आपने बोला कि ये लो, इसमें मुझे प्रेशर राइट नल है, नहीं प्रेशर राइट नल नहीं नल है, आप इस पार्ट में आ गए, आपने प्रेशर राइट नल कर दो, तो हमने इस लिंक को हटा दिया, हमने इस लिंक को हटा दिया और ये नल कर दिया, बहुत बढ़िया। हमने करंट को विजिट कर दो, करंट यहाँ पे उसी लगा हुआ है, तो हमने 2 प्रिंट कर दिया, करंट को राइट ले जाओ, करंट यहाँ से हट गया और ये वाली राइट पे आ गया, बहुत बढ़िया। हमने से पूछा लेफ्ट पार्ट करता है, उसमें नहीं करता, हमने ठीक है इसको प्रिंट कर दो, विजिट कर दो, 5 प्रिंट कर दिया, करंट राइट ले जाओ, करंट राइट पे लगा, यानी यहाँ से उठ के यहाँ, तो करंट यहाँ से हट गया, करंट यहाँ से हट गया और यहाँ पे आ गया, ये बात समझ में आ गई। अब इसने पूछा भाई लेफ्ट करता है, उसने बोला हाँ जिसको करता है भाई एस पार्ट उसने प्रेशर फाइंड कर दिया, तो प्रेशर कौन है, ये है, तो ये होगा प्रेशर, पुराना वाला नहीं है, ठीक है। इसमें क्या इसका राइट In order. Most traversal is in order, okay. नल है, नल राइट नल नहीं है, राइट से बंद करता है, हम लोग करते हैं यहाँ पर 1 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। नहीं करता, ठीक है, तो इसको वेट कर दो, 3 प्रिंट कर दिया और कहाँ से जाओ, राइट में चले जाओ, हम राइट में चले गए भाई, राइट में चले गए, यहाँ से हटते हैं। फिर दोबारा पूछा बच्चा लेफ्ट नहीं करता, उसने हाँ नहीं करता भाई, यहाँ पे आ गया, ये बात समझ में आ गई। अब इसने पूछा भाई लेफ्ट करता है, उसने बोला हाँ गए, फिर राइट जाते रहे तो राइट नल, समझ में आई, Let's start यहाँ पर रूट from के ऊपर, ठीक है, हमने बोला जब तक रूट नल नहीं होता तब तक करो, ये नीचे प्रोसेस लिखा हुआ है करो। इफ लेफ्ट नॉट एग्जिस्ट, अगर आपका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बट यहाँ पे सी का लेफ्ट साइड जो कि 2 है एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो एस पार्ट में आ गया। हमने बोला प्रेडिसेसर बताओ यार, प्रेडिसेसर क्या होता है, बेसिकली एक लेफ्ट जाओ और फिर राइट जाते रहो यार, राइट जाते रहो जब तक राइट वाला पार्ट है वो नल ना मिले, मैं एक लेफ्ट गया और फिर राइट जाता जाऊँ, और यहाँ पर इसका राइट वाला पार्ट नल मैं हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसको प्रेडिसेसर बोलते हैं। तो हमने क्या बोला ठीक है, एस वाले पार्ट में प्रेडिसेसर फाउंड कर लिया, तो आपको लगा प्रेडिसेसर क्या है, प्रेडिसेसर भाई मेरा 5 है, क्या समझ में आ गया। फिर मैंने क्या बोला चेक करो एक बार प्रेडिसेसर राइट नल है या एस वाले पार्ट में जाओ, तो मतलब प्रेडिसेसर राइट क्या है भाई, नल है यार दोस्त, नल है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेरी लिंक बनाओ, इसको कनेक्ट करो टेम्परेरी, जहाँ से रूट नोड से आया था, इससे आया था, जहाँ करंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आपने क्या किया कि प्रेडिसेसर के राइट को करंट पे पॉइंट करवा दिया, समझ में आई, तो हमने टेम्परेरी लिंक बना दिया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने करंट को करंट के लेफ्ट पहुंचा दिया, ठीक है, करंट भाई आप यहाँ से हट जाए और आप यहाँ पे आ जाए, तो करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज होगी, आपने देखिए कैसे राइट करता है, हाँ ये करता तो है एस पार्ट में आगे प्रेडिसेसर निकालने लेफ्ट में गए, फिर राइट जाते तो राइट नल लाओ, तो ठीक है आप यहाँ पहुंच गए। फिर आपने बोला कि चलो ठीक है इसका टेम्परेरी लिंक बना दो, इसका टेम्परेरी लिंक बन गया, ठीक है, और आपका सी कट यहाँ पे आ गया। फिर आप इस नोड चेक करो लेफ्ट नल है, हाँ भाई लेफ्ट पार्ट नल है, तो इस केस में वेट कर दो, करंट को, तो आपका आंसर करंट हो गया 4 प्रिंट हो गया। फिर क्या करना होता है, करंट ले जाओ, करंट को यहाँ से हटाओ और ये राइट है इसको यहाँ पे ले जाओ, करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपने बोला लेफ्ट नहीं करता, नहीं करता कोई बात नहीं, करने का तो विजिट करंट कर दो, ठीक है, 7 प्रिंट हो गया। फिर करंट को आप राइट पे लेके, करंट यहाँ से इसके राइट पे चला गया, नहीं यहाँ चला गया, करंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसमें लेफ्ट नहीं करता, लेफ्ट करता है इसका, लेफ्ट करता है, तो आपने इसका प्रेशर फाइंड करो, आप प्रेशर फाइंड करने के लिए 4 पे गए, 7 आपको प्रेशर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये प्रेशर मिल गया, आपने बोला कि ये लो, इसमें मुझे प्रेशर राइट नल है, नहीं प्रेशर राइट नल नहीं नॉन नल है, आप इस पार्ट में आपने प्रेशर राइट नल कर दो, तो हमने इस लिंक को हटा दिया, हमने इस लिंक को हटा दिया और ये नल कर दिया, बहुत बढ़िया। हमने करंट को विजिट कर दो, करंट यहाँ पे उसी लगा यहाँ पे, तो हमने 2 को प्रिंट कर दिया, करंट को राइट ले जाओ, करंट यहाँ से हट गया और ये वाली राइट पे आ गया, बहुत बढ़िया। हमने से पूछा लेफ्ट पार्ट करता है, उसने नहीं करता, तो हमने ठीक है इसको प्रिंट कर दो, विजिट कर दो, 5 प्रिंट कर दिया, करंट को राइट ले जाओ, करंट राइट पे लगा, यहाँ से उठ के यहाँ, तो करंट यहाँ से हट गया, करंट यहाँ से हट गया और यहाँ पे आ गया, ये बात समझ में आ गई। अब इसने पूछा भाई लेफ्ट करता है, उसने बोला हाँ जिसको करता है भाई एस पार्ट में चल गया, उसने प्रेशर फाइंड कर दिया, तो प्रेशर कौन है, ये है, तो ये होगा प्रेशर, पुराना वाला नहीं है, ठीक है। उसमें क्या इसका राइट नल है, राइट नल नहीं है, राइट से बंद कर रहा है, तो एस पार्ट में आ जाओ, एस पार्ट को राइट नल कर दो, तो आपने इस पॉइंटर को हटा के ना ऐसे नल कर दिया, ठीक है। उसने बोला जहाँ पे करंट पड़ा उसको प्रिंट कर दो यार, तो हम करंट यहाँ पड़ा उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसने बोला करंट को करंट राइट पे ले आओ, तो हमने ठीक है भाई करंट राइट पे ले आओ, यहाँ से हटा दिया और ये राइट पे ले आए, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या बोला लेफ्ट पार्ट नहीं करता, ठीक है, तो इसको वेट कर दो, 3 प्रिंट कर दिया और कहाँ से जाओ, राइट में चले जाओ, हम राइट में चले गए भाई, राइट में चले गए, यहाँ से हट गया। फिर दोबारा पूछा बच्चा लेफ्ट नहीं करता, उसने हाँ नहीं करता भाई, तो उसने ठीक है भाई प्रिंट कर दो, 6 प्रिंट कर दिया और कहाँ से ले जाओ, करंट राइट में ले जाओ, तो करंट यहाँ से हट गया, यहाँ पे आ गया, ये क्या है नल है, तो वैल्यू की कंडीशन फॉल्स होगी, तो वैल्यू से बाहर आ गया, इन शॉर्ट ये आपका इन ऑर्डर आ गया, ये आपका इन ऑर्डर आ गया, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। ध्यान से देखो, मैंने बोला था आपको इन ऑर्डर क्या प्रिंट होगा, तो पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, वापस आएंगे, 4 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ से वापस 7 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ से गए, यहाँ से गए, फिर 2 प्रिंट होना चाहिए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फिर 5 प्रिंट होना चाहिए, बहुत बढ़िया, फिर 5 वापस गए, यहाँ गए 1 प्रिंट होना चाहिए, 1 आ गया, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, वापस 3 प्रिंट होना चाहिए, राइट गए, लेफ्ट गए, यहाँ से वापस 6 प्रिंट होना चाहिए। तो इन ऑर्डर सही तरीके से एकदम सही इन ऑर्डर प्रिंट कर लिया, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। एक आपको प्रिंट स्टेटमेंट का ऑर्डर चेंज करना है, कहीं और लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपकी
एल्गोरिथम है यार, ये आपकी एल्गोरिथम है और इस प्रकार ट्रैवर्सल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। मैं कुछ नहीं करना, तो मैं चेक करता हूं नोट पे जाके कि भाई तेरा लेफ्ट पार्ट किस करता है। अगर नहीं करता तो मैं तुझे प्रिंट कर देता हूं, राइट पार्ट पे ले जाऊंगा। या फिर तेरा भाई लेफ्ट पार्ट किस करता है, तो ऐसा कर फिर से फाइंड आउट कर। और क्या करना है बेसिकली, आप इनका लॉजिक कैसे पीछे जो ये वाला पार्ट ना यार, अगर ये नल है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिंक बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो टेम्पररी लिंक है ना वो So, noise traversal, noise. क्रिएशन कर रहे हैं। ध्यान से देखा जाए टेम्पररी लिंक क्रिएशन यहाँ पे हो रही है और ये वाले पार्ट में ध्यान से उसको नल कर रहे हैं, यानी इसको हटा रहे हैं। जो टेम्पररी लिंक आपने बनाया था ना उसको आप हटा रहे हो, इस वाले पार्ट से हटा रहे हो, ध्यान से देखा जाए तो ठीक है। तो ये इसका पूरा पूरा लॉजिक है यार, ये इसका पूरा पूरा लॉजिक है और इस प्रकार आप काम कर रहे हैं ठीक है। कोड वाइज ये आप कोड देखना आपके लिए होमवर्क मैंने रखा है ठीक है। कोड देखना आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान कोड, कुछ खास होगा नहीं जो लिखा है वही होने वाला है। हम सिंपल चेक करेंगे वाई रूट नॉट इक्वल टू नल इफ लेफ्ट कि वो अपने आप को पॉइंट करने लग जाए। होता है ना कि वो पहले से ही होता है ना, पहले से मान लो उसको पॉइंट करवा राइट में ऐसे घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ। अब कंडीशन लगानी पड़ेगी आपकी कि जब तक आपकी रेडियस का राइट जो है करंट की इक्वल ना हो जाए ठीक है। इस केस में उसको राइट ले जाओगे बस ठीक है। उसके बाद दो कंडीशन वाली यार, इफ एल्स वाली, इफ सब सेम है, एल्स सब सेम है, कोड हो जाएगा आपका ठीक है। ये आपके होमवर्क है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन की जो है वो है O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है O ऑफ 1 बढ़िया। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस प्रकार मॉरिस ट्रावर्सल काम करता है बेस्ड ऑन 30 बाइनरी ट्री। और ये टेम्पररी लिंक्स हम क्यों बना रहे हैं, क्यों आंसर ये है क्योंकि हम वापस पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इन ऑर्डर के अंदर पहले मेरा लेफ्ट पार्ट प्रिंट होता है, फिर मेरा रूट नोट प्रिंट होती है और फिर मेरा राइट पार्ट प्रिंट होता है। तो लेफ्ट पार्ट से वापस आना पड़ेगा, तो वापस आने वाली स्टैक करके तो आसान है ठीक है। बट यहाँ एक बार ट्री इनटू लिंक लिस्ट बहुत बढ़िया अगर काम करना है। तो क्वेश्चन कहता है Okay, so let's do Morris traversal. Let's do dry run for Morris traversal on this. Okay. Morris. So, so it right now my curve would be at 1. Okay. Now I go then if left exists, I go to the left
And while I don't find right, I come to this point. Okay. Now this not right is equals to curve. Okay. Now temp will be curve and curve will become this and this will be become. So this tree will be converted to that. Now cool. Uh now I am here, curve is here. Left exists. So I go to left and um go like right does not like I find right is equals to curve uh, and I break this basically and curve will come here. So now after this we uh, the left does not exist, so we uh, print this and right it comes to this. Okay, so after this uh, this does not take care of the arrow. Like this one, this Morris traversal does not take care of the array, and that is a problem. Um, After this, we are at here, left does not exist. So we'll print this, okay? And we move to the right. Left exists, we point this to this, and we cut this, curve it comes here. We print this because left does not exist. We print this and we come to here. Now left does not exist, so after 6 5 is printed and uh, we come to the right. This for this also left does not exist, so we print this and come to the right. This we print this left does not exist, so we print this and we do we come to the right. We come to the right. Left does not exist, so we print this. We come to the right. Left exists, so we come here. Point this to this. Break this tie, current comes here. Left does not exist, so we print this, come to the right. Now here, left does not exist, so we print this and we come to the right, which is null, and there it ends. But this version of Morris Traversal destroys my array. I think his version does not. हमारे सामने क्वेश्चन है फ्लैटन अ बाइनरी ट्री हार्ड बनने वाला हम सिंपल हटा के ना ऐसे फिर क्या करना होता है करंट को राइट ले जाओ यानी करंट को यहाँ से हटाओ और ये राइट है इसके यहाँ पे ले जाओ करंट यहाँ पे आ गया ठीक है आपने बोला लेफ्ट इसलिए करता नहीं करता कोई बात नहीं करने के बाद क्या है प्रेशर भाई मेरा 5 है समझ में आ गया फिर मैंने क्या बोला चेक कर लो एक बार प्रेशर राइट नल है या एल्स वाले पार्ट में जाओ तो मतलब प्रेशर राइट क्या है भाई नल है यार दोस्त नल है ठीक है तो यहाँ पर टेम्परेरी लिंक बनाओ इसको कनेक्ट करो टेम्परेरी जहाँ से रूट नोड से आया था इससे आया था यहाँ करंट भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आपने क्या किया कि प्रेशर राइट को करंट पे पॉइंट करवा दिया समझ में तो हमने टेम्परेरी लिंक बना दिया ठीक है इसके बाद हमने क्या किया हमने करंट को करंट लेफ्ट पहुंचा दिया ठीक है करंट भाई आप यहाँ से हट जाए और आप यहाँ पे आ जाए तो करंट यहाँ पे आ गया ठीक है यहाँ पे सेम चीज होगी आपने चेक किया कैसे करता है हाँ ये करता तो है पार्ट में आगे प्रेशर निकाल के लेफ्ट में गए फिर राइट जाते तो राइट ना लाओ Okay, so let me try to write Morris Traversal on my own. Vector, vector, int, res. Okay. And for Morris, then this one, let me see.
Okay. T node corresponds to root B, T node P. Okay. While if left does not exist, then we just print it. Okay. And move to the right. If left doesn't exist, then G is equals to curve dot left, and we find the rightmost element. We find the predecessor, find the predecessor. If it's null, then P the right is equals to curve. Curve is equals to curve dot left. Okay. Else P dot right is equals to null pointer. Rest dot push back curve dot value, and curve is equals to curve dot right. So let's try run this one left, right, 7 to 1, and curve will be here. Now left, mm, right, 4 to 2, curve will be here. Left does not exist, so 4, we print 4. And then and move to 2. Okay. This right, so curve is equals to curve dot right. Is curve at 4? Where will curve go after this? So curve starts from this left axis, okay, and so it comes down to this, makes a connection, okay, from here to here. Now curve goes here and makes a connection from 4, okay. Now left does not exist, so we print 4, and curve comes to true 2, okay. Now we find 4 again as the predecessor of 2, and right does exist, so we cut this and we push right. Let's push 4 again. Do we push 4 again? Am I doing the dry run wrong? So let's do this.
Cool. So first thing left exists. So right now cut is here. Left exists. This will be created. Okay. Now cut is here. Okay. Okay. So left exists. This will be created. Now cut will go to 4. Left does not exist, so print 4. Okay. So in the answer we will have 4. Cut is at 4. Cut comes at 2 after printing 4. Okay. Now left does exist. So initial set comes to be 4. It's not null. So this becomes, and we push 4 again. I think let's debug and see. At this moment, cut is at 2. Cut comes at 4.
again comes at 2. P is 4. Oh, depending. Adding curry dot value. Curry is at 2. Now curry comes at 5. Okay. I don't understand Morris traversal, bro. No, I'll look at it after a bit.
Yeah. Okay. So modest traversal. So this is how I can explain modest traversal. If we find if the left element does not exist, we print the current value, and if the left element exists, then we find the predecessor. If predecessor dot right is equals to null, then we make a linkage. If it is not null, then we break the linkage and we print the current value and current dot right. And yes, we the right is equals to current. Uh, I would like to write this. So vector in plus. Um, we know curl is equals to root, comma, red. Okay. While root not is equals to null, curl, curl not is equals to null. If curl dot left, if curl dot left, then if not curl dot left, then at that point, uh, rest dot push back curl dot value and curl is equals to right. Cool. I hope this is correct. Cool. Else we find the predecessor. Pred is equals to curl dot left. We find the while curl dot right and then curl dot right not is equals to uh, pred 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 dot right and pred dot right not is equals to curl. Till then pred is equals to pred dot right. So found the predecessor. Now if pred dot right is equals to if not pred dot right, not pred dot right, if the right, then we create a connection pred dot right is equals to curl and what we do, and I think curl is equals to curl dot left.
And I think that's it. Yep. Else, three things we do. Um, One is spread dot right is equals to null. Okay, one thing is null. Then second thing is this dot push back curl dot value and curl is equals to curl dot right. Curl is equals to curl dot right. Um, hmm, this is in order traversal. If I wanted to do, let's say, pre-order, pre-order traversal repro. Let's say I wanted to do pre-order. How will I do pre-order? Pre-order. Yeah. Uh, yeah. Pre-order. This was in order. So pre-order, we print left first and then in order left node and then pre-order node left right node left right left right node left right no node left right yeah. One then two four 1 2 4. So in this I think this should do it.
This is why I thought this will work because I thought I should have explained this and then I should have done because this is what I need to do in the interview. I need to explain stuff in the interview. So I missed the chance. Okay, so what I thought is that um explaining is difficult for me. Uh so every time color changes, before that we should um print it. So because we want this to print as soon as we land on any position, we want it to print. So before changing color, we printed. Before changing color, we printed, and that's the logic of um, pre-order. Now let's try post-order. Post-order, taking the same logic in account, I think every time color changes, we should print it. But so let's try that once after the change. But it should be once here, I guess, and once there. So how will post-order look like? Let's just see that and then do it. So I come to one and left, right, and I. Okay, so for one, it will first go to the left position. It will go to two. For two, it will go to the left position. For four, it will go to left, then it will go to right, and then it will print. Okay. So then it will let's save this and go to the question of uh post order. The models. Can we do it first thing? Suppose. So we can do it. Okay. I think yeah. Post order. I think
should just be this because pre-order happens via uh, after printing just before moving to write. Here I want after moving to write. So it should be this. Okay. This is in order. This is pre-order. Should this be so post-order traversal will be left, nothing, right, here, left, so here, three, nothing, nothing, and then three, come back, right, nothing, post, one, left, right, both are done. So now this should work. Okay. So how in my Morris traversal I'm traversing? Coming to this. So when I'm at this, I need to does my curve ever come to 7? So first value should be 4. I make a connection to this and my curve comes to 2. Now if that is the case, if first value is 4, this rest should come here. Okay. Second, and this rest should come here. Does not make sense. This is in order. Uh, so kind 4, 6. Okay. So when does it come to 6? Okay, let's check that out. 4 and 6. Uh, there is curve dot left, so it will Fed will be this, and this will make this, and curve will come here. Okay. Now there is left, so Fed will be 4. This will make this, and curve will be here. Okay. No pred dot left, so I push the answer, and this works, and th- this comes to here. Now I don't want to do this. Okay, this is not done. Uh okay, I'm at 2. There is left. It will be this, and at this point,
I make I delete this connection and curve comes to here. Okay. Now I come to this point. Red will be this only, 6 only. And I make that connection here. And curve comes to 6. Now curve brings this 6, which works. Okay. Let's look at the editorial. I don't know. Okay. His his smallest traversal looks very different. In my post order, it's not working. So let me see. Post order.
Oh, post order is basically pre-order from the other side. Yes. Is post order pre-order from the other side? Actually, post order is left, right, and pre-order from the other side would be right, left, and simple pre-order, symmetrical pre-order. Okay. Symmetrically opposite to traversal L and R. Okay. To print the L and R. Second and the third R. Hmm.
Okay, when the node is waiting and found with the help of the run, we create a value. During the thread phase, we are done traversing the left subtree. Hence, we need to print all the left subtree nodes. So we print the left subtree nodes on kernel and now. Yeah, it does make things. You know, I need more intuition on monster. So before, if you think top companies and the top budget, you already know a stack trap, and the iterative also takes the similar amount of time. But the Morris traversal nearly like takes up nearly big of n. But the specialty is it does not consumes any extra space. Yes, it does not consumes any extra space. I'm going to tell you the intuition, yes, and I'll be coding it live so that the code remains in your head forever along with the intuition and you can code it by yourself. So let's get started. So, what is the in order traversal of? So, when I say in order, what does that mean? It basically means left first, then the root, and then something as the right, right? Now, what is the left? The left is 4, right? At first, like you go left, 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 so left is 4. Then right, root, that's 2. Then again you go to this, so there's no left. Then you take 5, correct? Then you take 6. Then you come back to 1, and then you end up taking 3. So that's the in order traversal for the binary tree on the left, correct? Now, if you observe something from 4, you are actually like you traverse from 1 to 2, 2 to 4, and the binary tree, you know, the pointers are like this, like into the childs. So from 4, if you had a backward, if you had a backward pointer which said key after 4, why don't you go back to 2? And after that, why don't you go to right? And then you do for 5, and then you do for 6. And after 6, if you carefully see, it's 1 where you go, correct? Why is it 1? Very simple, because in an in-order traversal, what do? You do the entire left, and then you go to the right, correct? So the entire left's last guy is 6. So left, root, right. So right, after right, you have to go it. In recursion, why don't you have to? How does it work? Because 6 backtracks to 5, 5 backtracks to 2, 2 backtracks to 1, and then goes to right. So in recursion, it's very simple because you don't have to do a lot of stuffs. Because backtracking takes care of 6 coming back to 5, 5 coming back to 2, 2 coming back to 1. It comes back to the call where it was made. But if you're doing it iteratively, if you've gone from 1 to 2, 2 to 4, there is no way that you can come back to 2 because there's no parent pointer. And we cannot have a parent pointer definitely because a binary tree, as we know, always has a left pointer and a right pointer. Like we will not be introducing any parent pointer as of now. So how will you do this? Because introducing a parent pointer will mean I'm introducing a single kind of a pointer at every place, which is something which I don't want. So how will you do this? Let's think. So the first thing to notice is now on the left subtree, this is the left subtree which is only having 4. In this 4, whichever is the right guy, 4 is the right guy, 4 is the left, 4 is the root. Like everything on the subtree, left, root, right, everything is 4. Since this is the last guy of this in order, after that you have to go back, right? That's the first thing to observe. Now, now over here, if I again draw this on this left subtree,
I can say this guy is the left, this is the root, and the entire thing is the right. And in this right, this is a single subtree. So over here, this is the last guy. So after this, since the left subtrees in order is completed, you go back to the root. So do you see a pattern? The pattern states from the last node of any subtree, you go back to the root, like on the left, which is whichever is the last node of that subtree, you go back to the root, right? And after that, you again go back to the, like you do a in order traversal of 3. That's an observation that I can give you. Okay, so let's keep this observation and try to think of cases, like what cases can we have during traversal. So the first case that I can think of, like on a very higher level that I can think of, is if you're doing a traversal, it's left is where you go at first, then you go to the root, then you go to the right. So just in case if I give you a tree which starts with 1 and there is a 2 on the right, and then everything is on the right, just imagine everything is on the right. So and the left is null, so it doesn't have a left. So do you need to connect any pointers? Like if you're starting off your traversal from this one, do you need to connect any pointers to 1? Like over here, when you started from here, and you will go left, but you have to connect the pointer so that you can come back to 1. But over here, you just start with 1 and then you go to 2 because you don't have to come back to 1, correct? So can I say the first case will be if like the left is somewhere around null, then without doing anything, I can say, okay, this is a part of my in-order traversal because left does not exist. I'll always have a root. So I can say print the current guy, and then you can just move to the right. So can I say that's my first case? Like if I just categorize it, if it does not have a left, I'll print the root and then I'll move to the right. Okay, makes sense. Let's think of other cases. What can be the second case that I can think of? Now, the second case that I can think of is if I'm standing over here, before moving to here, I should actually make this connection, make this yellow threaded path. Why? Because if you have once moved here, you cannot come back. So before moving, you have to make this path. So can I say before moving left, yes, before going to left, can I say whichever is the rightmost guy on left subtree, rightmost guy on the left subtree will be connected to the current, like if you're standing here. And after that, yes, and after that I can say current, please go to the left. Okay, makes sense. Once I have connected this yellow, then I can say current, you can now go over here. Okay, that's one of the cases that I can think of. Now you will argue, but Striver, you've done traversal, you've went. Now again, when you're doing a traversal, you will point force threaded to 2, but again when you're coming back, you again reach 1. So whenever you reach back 1, how will you determine whether to move left or whether to move right? Makes sense? Because see, at the first instance, when you're at 1, you moved left. But when you're coming back via this threaded, whenever you did a in order 4, 2, 5, 6, and then you came back to 1, how will you determine that you have to move to right? Valid question. So can I say the other case will be if the same thing, the rightmost guy, can I say the same thing, the rightmost guy is already pointing to curve, like the threaded binary tree already exists. Can I say if it already exists, then I will remove this thread tree because I cannot keep this thread forever. So I'll remove thread because basically if previously there was no thread, I just create this thread, right? And if there exists thread, I remove the thread. Okay, makes sense. What about the other? Once you have removed the thread, now you can move right. So how did you determine? So the determination was very simple. What I said was if the rightmost guy, right, of the left subtree does not have a thread, so connect the thread. Once you've connected the thread, move left so that afterwards you can actually come back directly to this guy, correct? If on the rightmost there already exists a thread, then remove it, and now you can say you will move to right. Because why is there a thread? Because you've already made a thread and went left. Very simple. So I can say these are the cases in which I can actually make it. Okay, make sense? So makes sense, right? I'll code it. But let's understand how this actually works. So I've almost told you the edge cases, like what cases you have to think. Now let's see how will this work. So if I'm standing here, okay, if I'm standing here, I know for in order to happen, I have to go to the left. So if I'm going left, I know I cannot come back. So before going left, if there is a left on this left subtree, take the rightmost guy, take the last guy. The last guy is 6. Create the thread. Perfect. I've created the thread. Once you have created the thread, then move. Nice. After that, again you have to move to the left. So again you see on the left who's the last right guy. So you'll say this is the only guy who will ultimately be the last guy. So let's create the thread. So I've created the thread. Once you've created, move. Perfect. Now, can I say this 4, if you're treating it as a subtree, can I say this 4 will never have a left? Yes, it will never have a left. So this guy will be the root itself. So I can say, let's print 4. Yes, let's print 4. So my in order is getting printed. Okay. Now I need to go back. To the root. So what I'll do is, I'll go via this thread and I'll again reach back here. See, I went via this thread and I reached back over here. See how I went back. So the moment I went back to the root, I know it has to be printed. So let's print it. Perfect. I printed it. Now, the curse says, will I go left or will I go right? Because I'm standing. I don't know where to go, whether to left or whether to right. Let's judge that. So when I go to the left, the last guy on the left subtree is already pointing to himself. Very important. It's pointing to himself and not null. Ideally, the last guy should have been pointing to null, but it's pointing to someone, which is himself. Can I say then that
That means this left right guy. So you'll say this is the only guy who subtree. If you're treating it as a subtree, can I say this 4 will never have a left? Yes, it will never have a left. So this guy will be the root itself. So I can say let's print 4. Yes, let's print 4. So my in order is getting printed. Okay. Now I need to go back. I need to go back to the root. So what I'll do is I'll go via this thread and I'll again reach back here. See, I went via this thread and I reached back over here. See how I went back. So the moment I went back to the root, I know it has to be printed. So let's print it. Perfect. I printed it. Now, the curse says, will I go left or will I go right? Because I'm standing. I don't know where to go, whether to left or whether to right. Let's judge that. So when I go to the left, the last guy on the left subtree is already pointing to himself. Very important. It's pointing to himself and not null. Ideally, the last guy should have been pointing to null, but it's pointing. So basically, this is what I understand from Morris traversal, Morris traversal, is that what you do is create pointer from the last node to the current node of the left subtree, and then you move on to the left subtree, uh, and you traverse the left subtree using the same repetitive step. And once you have done that, you are on you come back to the right, the current node, the root node, and then you move to the right. So that is Morris traversal in very basic sense. And I think that's great. Uh, I hope I remember this. Travis, Morris Traversal. Morris Traversal. I don't remember even the name. क्वेश्चन कहता है फ्लैटन अ ट्री इनटू लिंक लिस्ट. बहुत बढ़िया. Flatten a tree into linkers. 4 से 1 को बना हुआ है, ये ब्रेक कर दूंगा. ना 3 से 2 को बना हुआ है, ये ब्रेक करूंगा. 3 से 2 to right 4, 4 का right 1. Good, huh? So I'll do Morris traversal. From 1, I'll go to the previous, and I'll point this and I'll break this. Okay, like I'll go here and I'll break this. So now this will be connected to this. Okay. Now, so basically, if there is a right, if there is a left, I do this and come to the left. Now, if there is a left, I make this the right of this, and I break this. So 3, 2, 4, and now I move to 3. Now I have always now 3 has a pointer to. Okay, so I'm at 1. I break this and I make a and I break this. Okay, and cut is now here. Okay, now this is pre. I do this and make this, and curve becomes on 3.
Okay. Uh, Now, as this does not have a left, I move to the um, right of this. So 2. As I find this to have a connection to this node, this will be the pre and it has a connection to this. So what I do is move this to the right. Now this does not have a left, so I move it to the right. Now it does not have a left, so I move it to the right. Now it does not have a left, so I move it to the right. So that's how we'll do. तो मेरे पास एक ट्री है, तो मैं एक ट्री बना दूं फटाफट, एक नोड ये, तो ये आपका नोड होता है, उस पर राइट को यूज करना है और लेफ्ट ध्यान से देखें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्री ऑर्डर प्रिंट कर रहे हैं, प्री ऑर्डर में क्या होता है, चलो इसको प्रिंट करता हूँ आपको, तो यहाँ पे प्री ऑर्डर यहाँ प्रिंट कर दिया, ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। Flatten or tree into length. Yes. Let's do this. Let's write this. Ah, Morris traversal. Three node cur cur is equals to root comma pre. Okay. While cur. Okay. No. If not cur dot if not cur dot left, then in that case cur is equals to cur dot right. Okay. Else find predecessor. V is equals to curve dot left. Okay. While V dot right and then V dot right not is equals to curve. P is equals to P dot right. Cool. So found the predecessor. If P dot is not P dot right, then in that case P dot right is equals to curve. Okay. And do I also break it right now? Yes. M is equals to curve node temp is equals to curve is equals to curve dot left temp dot left is equals to null. So we broke this off. Now this is its own tree. Now this is done. Else, if there was already a connection, then
In that case, that is equals to chi dot, right? So this will happen again. This will ha so this just should work. Oh. So how will this work? Let's do a dry run. It's on one. It finds that there is a left. It finds predecessor as 4. There's no right, so it makes the right and breaks this, and now cut is on 2. Okay, now it's on 2. So it finds predecessor as 3. 3 uh, is on 3, and now it makes 3.22 and comes to 3 and breaks this. Okay, now it's on 3, there's no left, so it comes to 2 again. Okay, as there is no left, it comes to 4 again. As there is no left, it comes to 1 again. As there is no left, it should be correct. But yes, the first time we find the leftmost element, that should be root. Why root dot left root is equals to root. So this root will come here, root will come here. Now no root no left, so this should work. Uh, The answer expects us to 1, 2, 3, and so my problem will be wrong actually. Yes, 1, 2. So it wants after 1 it wants 2. After 2 it wants 3. After 3 it wants 4. So which traversal is this?
Um, because when do I break it? Oh, I'm not sure. Let's see. How does he explain? फिर हमने क्या सोचा कि चलो सॉल्व करते हैं। पहले क्या समझ में आया कि जैसे इसको ट्रांसफर करता हूँ वैसे नोड बनाता जाऊंगा। जैसे 1 पे था तो नोड बना ली 1, फिर 1 के बाद 2 पे गया एक नोड बना ली 2, 2 के बाद 3 पे गया एक नोड बना ली 3, इस प्रकार करते जाऊंगा। बट मैंने क्या बोला कि आपको फ्लैटन तो करना है बट इन प्लेस करना है। इन प्लेस मतलब और एक्स्ट्रा में यूज नहीं करनी, जो मैं आपके पास है इसी का यूज करके आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं तो फंस गया, मैं सोल्यूशन चला ही नहीं है। इसके तो आगे ट्रांसफर करता हूँ ना भाई, और मैं तो इसमें स्पेस वेलोसिटी ऑफ 1 वाला हूँ और टाइम वेलोसिटी ऑफ n है। ठीक है, वहां तक भी जाएंगे, उसको भी मतलब मॉडिफाई यूज करके सॉल्व करेंगे। नोड क्रिएट करता जाऊंगा। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आपने यहाँ पे इन प्लेस नहीं करा इसको, क्वेश्चन हो गया इन प्लेस करके दिखाओ, इसलिए रॉन्ग हो जाएगी। कर लेता हूँ मैं। कैसे करोगे आप लोग? सिंपल था भैया, राइट वाला पार्ट लिंक बना लो। मैं कैसे अब रिकर्जन बना लिया ना, मैं सोच रहा था रिकर्जन बना लेगा। फिर क्या करो, लेफ्ट वाला पार्ट बना लो, लिंक लिस्ट बना लिया, और फिर क्या करो, ये वाला 2 पॉइंट काटो। ठीक है, लेफ्ट तो चलो आपको पता है करेगा, राइट वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ लगा देना लेफ्ट में, और लेफ्ट का ये वाला पॉइंट है उसको यहाँ लगा देना। ओहो तो लिंक लिस्ट बन गई, रूट नोड। फिर हम लेफ्ट वाला लगा दिया और राइट वाला लगा दिया, लिंक लिस्ट। मैंने कहा बात बिल्कुल सही कर रहे हो। तो रिकर्जन का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, रिकर्जन यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे रिकर्जन का यूज करता हूँ, बट यहाँ पे टाइम लग जाएगी ऑफ एन और स्पेस लग जाएगा ऑफ एन, पर ये थोड़ी चाहिए, ये चाहिए ऑफ एन तो रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो अप्रोच नंबर 3 में सामने आती है कि मैं मॉरिस ट्रावर्सल यूज करूँ यार। मुझे कैसे पता लगा मॉरिस ट्रावर्सल यूज करना, क्योंकि मेरे को सोल्यूशन बोला कि मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बन जाएगी। मुझे पता है सिंगल ट्रावर्सल करता है, इसके द्वारा मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बन ला सकता हूँ। ठीक है, ट्री ट्रावर्सल करते हैं मॉरिस ट्रावर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो लगाना, यही लगाना, अब कैसे लगाना ये सोचना। ठीक है, तो फटाफट ट्री बना लेते हैं और उसके बाद समझ लेते हैं कि किस प्रकार काम करेंगे। ऊपर में क्या ट्री बनाना है, बच्चे ऊपर में क्या ट्री बनाने पर बोल लेते हैं। हमने लिखा था यार ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 5, ये है 3, ये है 4 और ये है 6। इनके बारे में ढंग से फटाफट से लिख लिया जाए। ये सेकंड है, ये से है, ये से है, ये से है, ये इससे है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार हमारा रूट नोड करंटली यहाँ पे। अगर मुझे इसको लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, पहले से मुझे क्या पता लगे ऊपर देखिए। ठीक है, ये प्री ऑर्डर ट्रावर्सल तो है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल वाला प्रिंट किया हुआ है। तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल मुझे क्या पता होता है, प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है, एन एल आर पहले रूट प्रिंट कर देते हैं हम, उसके बाद हम लेफ्ट पार्ट प्रिंट करते हैं, उसके बाद हम राइट पार्ट प्रिंट करते हैं। समझ में आई ये चीज होता है प्री ऑर्डर के अंदर। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है पहले तो रूट प्रिंट कर देते हैं हम, उसके बाद हम लेफ्ट। तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल मुझे क्या पता होता है, प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है, एन एल आर पहले रूट प्रिंट कर देते हैं हम, उसके बाद हम लेफ्ट पार्ट प्रिंट करते हैं, उसके बाद Okay, 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 okay. I think I got it. I think let's remove this. And when we are doing this, so it will come from here to here. So hmm, so this will come from here to here. Okay. Before this, let's do red dot white is equals to red dot right is equals to curl dot right, and Trino star pen is equals to curl, and this should work.
No, really. So let's see how this is done. How this is being done. It's on one right now. We find predecessor, and which is four. Now, uh, now pre dot right is equals to cur. Okay, and cur is what comes here. Okay, cool. Now it's on here. We find predecessor, which is three. Three dot right is equals to two, and cur comes to here. Cool. Now there is no left at this point, so cur comes to two. Okay. Now it finds its predecessor, so it comes out to be three. This is present, so three dot right is equals to cur dot right. Three dot right is equals to cur dot right. Cool. Hmm. Temp three node. Temp is equals to cur. Temp will be two. Cur is equals to cur dot right. And temp dot right is equals to null. So we break this and we make three to four. Cool. And there's four to one already present. Now we are at four. So 4 does not have a left, so it moves to the right. Cool. Ah, moves to the right. So this thing, same thing, I think we should do here also. One. Okay, it moves to the right. One. Okay. Now 4 is the predecessor of 1, and it has a linkage. So pre dot right is equals to cur dot right, 4 to 5. And we remove this cur is equals to cur dot right. Cur will become 1 5. This should work. Why isn't it working? We create the link from now cur is on 2 is equals to 3. Now we create a link from 3 to this. Now cur is on 3. There's no left. So cur is equals to cur. Now cur is back on 2. Cool. Now cur is back on 2. There exists cur of dot left. Now P is equals to 3, and we find out that is the also the node. So now in this case, what we do, 3 dot right is equals to cur dot right. And store cur is on 2, cur dot right
Color happens goes on 4 and we remove. So at this point, 3 points to 4, 4 points to 1. Cool. And color is on 4. There is no left, so color comes on 1. Color comes on 1. Okay. Ah, now 4 is unreachable. Now 4 is unreachable. No, 4 is reachable. Okay, so 4 is reachable. So color is on 1. There is curve dot left, uh, which is 2. And there is no P dot right. So I make a loop from 2 to 1 also. Okay, cool. Color comes back to color comes back to 2. Now, okay, so yeah, I get why that loop. Why is there a loop? Sad. राइट पार्ट प्रिंट करते हैं, समझ में आई ये चीज होता है प्रिंटर के अंदर। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है पहले तो रूट प्रिंट करना, चलो वाला काम तो आसान है, बट लेफ्ट के बाद राइट वाला पार्ट आना चाहिए लिंकेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ समझ में आता है कि जो मेरा इन ऑर्डर प्रेडिसेसर होगा ना यार, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर होगा, जैसे हमने लास्ट मॉडल के अंदर भी देखा, इस केस में 4 है हमारा, जैसे करंट नंबर ये है, तो करंट प्रेडिसेसर क्या होगा, एक लेफ्ट जाओ और फिर राइट जाते रहो जब तक आपका राइट वाला पॉइंट नहीं होता, जहाँ पे इसका राइट वाला पॉइंट हो गया आप लोग। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको आपने लिंक कर दिया, इसको आपने लिंक कर दिया 5 के साथ, आपके राइट वाले पार्ट के साथ, समझ में आई, इसको आपने लिंक कर दिया राइट वाले पार्ट के साथ, एक स्टेप तो ये हो गया, तो इससे आपका लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट से लिंक हो गया, ये बात समझ में आ गई। उसका क्या करना होता है, इस एन को भी लिंक करना है, इस रूट को भी लेफ्ट वाले पार्ट से लिंक करना है, कैसे होगा, इस रूट का लेफ्ट वाला पॉइंट हटाओ, क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाला क्वेश्चन वाला करना है, बराबर यहाँ पे हटा दिया, ये राइट वाला पॉइंटर भी हटा हो गया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम ट्रैक कर रहे हैं इस पॉइंट पे द्वारा, और हमने इस राइट वाला पॉइंटर को यहाँ लगा दिया, तो हमने इस सेकंड स्टेप से बेसिकली एन को एल के साथ कनेक्ट कर दिया। समझ में आया, समझ में आई ये चीज। भैया आपने पहले एन को एल के साथ और फिर एल को आर के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर पहले एन को एल के साथ कर देता तो मुझे ये वाला पॉइंटर हटाना पड़ता, तो फिर ये तो पूरा पार्ट ही लॉस्ट हो जाता। दिमाग समझ, इस प्रकार चलना है। तो इसने पहले लेफ्ट को राइट के कनेक्ट किया, इस प्रकार के इन ऑर्डर प्रेसेस को निकालो और उसके राइट को क्या करो, करंट के राइट के इक्वल कर देना। हमने बोला इन ऑर्डर प्रेसेस निकालो, तो हमने इस नोड के लिए नोड प्रेसेस निकाल के एक लेफ्ट बाकी राइट मारते तो राइट पार्ट डलना हो जाए, तो यहाँ पर रुके, तो इसको क्या इस वाली नोड का राइट तुम करंट नोड के राइट की इक्वल करो, काम हो गया। पहले से सेकंड स्टेप क्या बोला, ये जो तुम्हारी करंट नोड है उसका जो राइट है उसको हटाओ यहाँ से, उसको ले आओ अपने लेफ्ट वाले पार्ट के ऊपर, खत्म। तो इस पर आपने एक लिस्ट बना ली, ये बटन करके ताकि आपको क्लैरिटी मिले, एकदम यहाँ पे ऊपर मैं लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको फटाफट लिखता हूँ और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक Okay. नोड है 1, यहाँ पर एक नोड है, अच्छे से बनाते हैं। तो बाहर कूड़े वाली गाड़ी आई है, ध्यान आते हैं उसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6, हमने बोला ये कनेक्टेड है इस प्रकार, और ये आपकी रूट नोड है। तो हमने क्या फटाफट सपोर्ट करते हैं, हमने बोला कि लेट्स से 1 2 3 4 5 6 को रन करते हैं फटाफट। हम लोग करंट आपका स्टार्टिंग में यहाँ बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। फिर आपने जब तक करंट नहीं होता, ऊपर भी करेक्शन है, ऊपर रिसर्च किया तो रूट ले लिया, यहाँ पे रूट को हटा के करंट लिया, करंट नहीं होता। जब तक करंट नहीं होता आप क्या करेंगे, चेक करेंगे करंट के लेफ्ट पार्ट करता है, तो इस करंट के लेफ्ट पार्ट करता है, हाँ करता तो है, तो हमने ठीक है अगर करता है तो करो प्रीवियस टू करंट लेफ्ट, तो आपने इसको क्या नाम दे दिया, प्रीवियस दे दिया। बेसिकली मैं प्रीवियस द्वारा आपका इन ऑर्डर प्रेशर ढूंढना चाह रहा हूँ। फिर आपने एक बार लेफ्ट लिया, एक बार लेफ्ट लिया, फिर आपने क्या किया, राइट Okay. It's,
नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। नहीं बोल रहा हूँ। जाते जाओ जब तक राइट वाला लिंक ना हो जाए। तो आप यहाँ पे रुक गए क्योंकि राइट वाला लिंक नल है। ठीक है, तो आपका प्रीवियस जो है यहाँ पॉइंट कर रहा है इस वाले वैल्यू के बाद। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हमने बोला प्रीवियस का राइट आपका करंट के राइट की होना चाहिए। हमने बोला ये वाला लिंक है ना ब्रो, ये वाला लिंक है वो इस नोड के राइट। ठीक है, तो आपने इस लिंक को यहाँ से हटाया और इसको यहाँ पॉइंट करवा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या किया, करंट का राइट करंट के लेफ्ट की होना चाहिए। तो करंट का राइट हटाया और इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, अच्छे से बनाऊंगा आपके लिए मैं। तो आपने इसको ऐसे डाल दिया। बहुत बढ़िया, चाहते थे हम, यही तो चाहते थे हम, है ना, ये 2 पॉइंट चाहते थे हम, कर लिया हमने अच्छे से। ठीक है, आप कर रहा हूँ आपके लिए ताकि समझ में आ जाए। कितना बढ़ गया। फिर हमने ठीक है ये वाली नोट पास कर लिया हमने करंट के लिए। अब इस नोट पे आ जाओ। तो हमने करंट पे यहाँ से हटा लिया और करंट पे यहाँ पे लिया। इसका पूछा भाई 2 वाली नोट, 2 वाली नोट लेफ्ट है क्या, उसमें हाँ है भाई है, तो ये वाला काम कर दो भाई। एक लेफ्ट में जाओ और राइट में तो जाते हो तुम्हारा राइट वाला लिंक ना लाओ, बट राइट वाला लिंक ना लाओ, तो वहीं पे रुक गए। तो आपका प्रीवियस या प्रीवियस वाली नोट वहीं पे आ गया। मतलब प्रीवियस राइट इक्वल टू करंट राइट। इन शॉर्ट आपने बोला कि यार इसके राइट पे यहाँ से हटा के मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला राइट हट गया। फिर मैंने क्या बोला कि इसके राइट को यहाँ से हटा के यहाँ लगाना है, ये वाला स्टेटमेंट। तो आपने क्या किया, इसका राइट हटाया और उसको इस प्रकार लगा दिया। ठीक है, समझ आई। तो इस प्रकार आपका केस चल रहा है तक। उसके बाद क्या हुआ, उसका करंट राइट, करंट राइट। तो आपने बोला ठीक है, अब करंट अभी तो यहाँ पे था, अब इसका राइट से कहाँ पॉइंट कर रहा है, अब इसका राइट यहाँ पॉइंट कर रहा है। चलो, आपने से पूछा भाई लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या, उसने नहीं लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नहीं करता तो आगे बढ़ जाओ। तो करंट यहाँ से हट गया और यहाँ पहुँच गया। इसने पूछा भाई लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, उसने नहीं एग्जिस्ट करता, तो यहाँ से हट गया और यहाँ पहुँच गया। इसने पूछा भाई तेरा एग्जिस्ट करता है लेफ्ट, उसने नहीं करता, तो ये हटना हटेगा। तो समझ लो ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर यहाँ पहुँच गया, तेरा एग्जिस्ट करता है लेफ्ट, नहीं करता, चलो कर रहा है। और ये पार्ट में यहाँ बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। फिर आपने जब तक करंट नहीं होता, ऊपर भी करेक्शन है, ऊपर डिस्कस किया, तो रूट लिख दिया। यहाँ पे रूट अगर करता है तो करो प्रीवियस टू करंट लेफ्ट। तो आपने इसको करंट दे दिया, प्रीवियस दे दिया। बेसिकली यहाँ पे प्रीवियस द्वारा आपका इन ऑर्डर प्रोसीजर होना चाह रहा हूँ। फिर आपने एक बार लेफ्ट लिया, एक बार लेफ्ट लिया, फिर आपने क्या किया, राइट जाते दो जब तक राइट वाला लिंक ना हो जाए। तो आप यहाँ पे रुक गए क्योंकि राइट वाला लिंक नल है। ठीक है, तो आपका प्रीवियस जो है यहाँ पॉइंट कर रहा है इस वाले वैल्यू के बाद। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हमने बोला प्रीवियस का राइट आपका करंट के राइट की होना चाहिए। हमने बोला ये वाला लिंक है ना ब्रो, ये वाला लिंक है वो इस नोड के राइट। ठीक है, तो आपने इस लिंक को यहाँ से हटाया और इसको यहाँ पॉइंट करवा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या किया, करंट का राइट करंट के लेफ्ट की होना चाहिए। तो करंट का राइट हटाया और इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, अच्छे से बनाऊंगा आपके लिए मैं। तो आपने इसको ऐसे डाल दिया। बहुत बढ़िया, चाहते थे हम, यही तो चाहते थे हम, है ना, ये 2 पॉइंट चाहते थे हम, कर लिया हमने अच्छे से। ठीक है, आप कर रहा हूँ आपके लिए ताकि समझ में आ जाए। कितना बढ़ गया। फिर हमने ठीक है ये वाली नोट पास कर लिया हमने करंट के लिए। अब इस नोट पे आ जाओ। तो हमने करंट पे यहाँ से हटा लिया और करंट पे यहाँ पे लिया। इसका पूछा भाई 2 वाली नोट, 2 वाली नोट लेफ्ट है क्या, उसमें हाँ है भाई है, तो ये वाला काम कर दो भाई। एक लेफ्ट में जाओ और राइट में तो जाते हो तुम्हारा राइट वाला लिंक ना लाओ, बट राइट वाला लिंक ना लाओ, तो वहीं पे रुक गए। तो आपका प्रीवियस या प्रीवियस वाली नोट वहीं पे आ गया। मतलब प्रीवियस राइट इक्वल टू करंट राइट। इन शॉर्ट आपने बोला कि यार इसके राइट पे यहाँ से हटा के मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला राइट हट गया। फिर मैंने क्या बोला कि इसके राइट को यहाँ से हटा के यहाँ लगाना है, ये वाला स्टेटमेंट। तो आपने क्या किया, इसका राइट हटाया और उसको इस प्रकार लगा दिया। ठीक है, समझ आई। तो इस प्रकार आपका केस चल रहा है तक। उसके बाद क्या हुआ, उसका करंट राइट, करंट राइट। तो आपने बोला ठीक है, अब बनाऊंगा आपके लिए मैं। तो आप बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या किया, ये वाला लिंक है वो इस नोड के राइट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हमने बोला प्रीवियस का राइट आपका करंट के राइट की होना चाहिए। हमने बोला ये वाला लिंक है ना ब्रो, ये वाला लिंक है वो इस नोड के राइट। ठीक है, तो आपने इस लिंक को यहाँ से हटाया और इसको यहाँ पॉइंट करवा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या किया, करंट का राइट करंट के लेफ्ट की होना चाहिए। तो करंट का राइट हटाया और इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, अच्छे से बनाऊंगा आपके लिए मैं। तो आपने इसको ऐसे डाल दिया। बहुत बढ़िया, चाहते थे हम, यही तो चाहते थे हम, है ना, ये 2 पॉइंट चाहते थे हम, कर लिया हमने अच्छे से। ठीक है, आप कर रहा हूँ आपके लिए ताकि समझ में आ जाए। कितना बढ़ गया। फिर हमने ठीक है ये वाली नोट पास कर लिया हमने करंट के लिए। अब इस नोट पे आ जाओ। हमने करंट पे यहाँ से हटा लिया और करंट पे यहाँ पे लिया। इसका पूछा भाई 2 वाली नोट, 2 वाली नोट लेफ्ट क्या, उसमें हाँ है भाई है, तो ये वाला काम कर दो भाई। एक लेफ्ट में जाओ और राइट में तो जाते हो तुम्हारा राइट वाला लिंक ना लाओ, बट राइट वाला लिंक ना लाओ, तो वहीं पे रुक गए। तो आपका प्रीवियस या प्रीवियस वाली नोट वहीं पे आ गया। मतलब प्रीवियस राइट इक्वल टू करंट राइट। इन शॉर्ट आपने बोला कि यार इसके राइट पे यहाँ से हटा के मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला राइट हट गया। फिर मैंने क्या बोला कि इसके राइट को यहाँ से हटा के यहाँ लगाना है, ये वाला स्टेटमेंट। तो आपने क्या किया, इसका राइट हटाया और उसको इस प्रकार लगा दिया। ठीक है, समझ आई। तो इस प्रकार आपका केस चल रहा है तक। उसके बाद क्या हुआ, उसका करंट राइट, करंट राइट। तो आपने बोला ठीक है, अब करंट अभी तो यहाँ पे था,
अब इसका राइट से कहाँ पॉइंट कर रहा है, अब इसका राइट यहाँ पॉइंट कर रहा है। चलो आपने इससे पूछा भाई तेरा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या, उसने नहीं, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर नहीं करता तो आगे बढ़ जाओ, तो करंट यहाँ से हट गया और यहाँ पहुँच गया। इससे पूछा भाई तेरा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, उसने नहीं एग्जिस्ट करता, तो यहाँ से हट गया और यहाँ पहुँच गया। इसने पूछा भाई तेरा एग्जिस्ट करता है लेफ्ट, उसने नहीं करता, तो गिरना हटेगा, तो ये समझ लो ठीक है, आगे बढ़ जाओ, फिर यहाँ पहुँच गया, तेरा एग्जिस्ट करता है लेफ्ट, नहीं करता, चलो ठीक है आगे बढ़ जाओ। नल था यहाँ करंट आ गया, वाइल लूप से बाहर निकला। तो ध्यान से लिस्ट किस बार बन गई, 1 करेक्ट 2 पे है, 2 करेक्ट 3 पे है, 3 करेक्ट 4 पे है, 4 करेक्ट 5 पे है, 5 करेक्ट 6 पे। इन शॉर्ट आपने अपने ट्री को फ्लैटन कर दिया, एक लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। बहुत प्यारी चीज थी, एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूं और क्लैरिटी मिल जाए। एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। एक बार इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। मेरे पास एक ट्री है इस प्रकार का, 1 1 3 4 2 5। करंटली जो मेरा करंट नोड है वो यहाँ पे है, रूट भी यहीं पर है। अलग लेते हैं, रूट यहाँ पर है और मेरा करंट भी यहाँ पर है। मैं क्या तो लेफ्ट पर करता हूं, उसमें हाँ मैं ठीक करता हूं, तो प्रिंसिपल पे पॉइंट कर दो, तो प्रिंसिपल क्या जाओगे एक लेफ्ट और तो Okay, cool. So we can do this. If current while current if curve dot left, not curve dot left, then curve is also curve dot right. Cool. Else else voilà. Mm. Else mm, I find I try to find the predecessor. So while p dot right, p is equals to p dot right. Cool. Mm, mm. While p dot right, p is equals to p dot right. Okay. Mm,
Cool. So P dot right. Now P dot right. uh, something like that. P dot right. Is equals to curl dot right. Okay. Now curl dot right is equals to curl dot left. Okay. And curl is equals to curl dot left. I think this should work. So if not left now I find the processor as 4. Now 3 dot right is equals to this 5. Okay, curl dot right. Well, curl dot right is equals to curl dot left. So this uh curl curl dot left is equals to null. Curl is equals to curl dot right. Cool. Now यहाँ पर आया. Now there is left, so this submit done. Good. Modest traversal, search tree, its implementation, binary search tree. Binary BST, 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 heap, hash map. I know, try, I know. Hash map prefix. I think I know. Anyway, N queens, I know. Sudoku solver, I know. BFS traversal, BFS cycle version. Yeah. Intro to graph. Let's do graphs properly. I want to do graphs from this video, 85. I want to do properly. Mm. So nodes are vertices, I guess. And is ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये मैं क्या बोलता हूँ इनको, मैं एजेस बोलता हूँ यार, ये कुछ कुछ एजेस हैं। ये बात समझ में आई। अब एक ग्राफ दिखने में कैसा होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया। एक
और उसके अंदर नोट Vertices, mm, vertices, machine, small material, mm, no, nodes are vertices. नोट्स और एजेस होती हैं, ये बात समझ में आई है। ठीक है, ठीक है। एजेस हैं, जैसे लेट्स से कि मैंने इस नोड को बोल दिया कि यू में भी एक एज है, ये दोनों है, बट मैं की डायरेक्शन है वो आइडेंटिफाई करती है, लेकिन वहाँ पे आपको बता सकता हूँ, मैंने यू से वी बोल दिया, ये बात समझ में आ गई। कर लो, बेटर कर लो, फिर जाके यहाँ पर वन ऑन वन डाउट सपोर्ट अवेलेबल है आपको। लेट्स से मुझे बोलना अगर वी की
हाँ, हो गई आउट डिग्री मतलब कितनी एजेस मेरे से बाहर की तरफ निकल रही है। तो अगर मैं आउट डिग्री ऑफ बी निकालूं तो ये अंदर ग्राफ बना पड़ा है, एक ग्राफ बना पड़ा है और जो इसको मैंने बोल दिया इसका वेट जो है 1 है। ये मेरी बात है। ए से बी चला गया, फिर बी से सी जा सकता हूँ, ठीक है, बी से सी चला गया, फिर सी से डी जा सकता हूँ, फिर नहीं जा सकता, आप यहीं पे रुक जाओगे। एक तो एन है, एन इक्वल टू 3 दे दिया। नंबर का जिन्होंने बोला कि यार एडजेंसी मैट्रिक्स से कनेक्टेड तो है, ठीक, मैंने बोला तो ये आप कर 0 2 3 है, 2 का 1 3 है, 3 का 1 2 4 है, 4 है। इसमें ये कहना चाहूँ कि मैं इस मैप का ऐड कर देता हूँ, चलो ऐड बिलोंग्स टू आप, ठीक है, मैंने सी इन रन किया, नहीं पड़ा कि यार ये ऑलरेडी अब ये क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, तो ठीक है, इसी प्रकार में निकाल जितने भी नेबर उड़ा चेक कर लेते हैं। BFS traversal, BFS traversal, cycle detection. हम बी ऑनलाइन स्टूडेंट वही पर लिख लेते हैं, हम पढ़ने वाले हैं साइक, ये चीज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, दोनों से कोड करेंगे, सारे टेस्ट के पास करवाएंगे, बहुत मजा है, ठीक है। मेरे पास एक ग्राफ पड़ा हुआ है, मैंने कहा कि यार एक ग्राफ है जी, एक ग्राफ है जी, जो कि इस प्रकार का है, ठीक है। ये तो मतलब इसके अंदर होंगे सारे कंपोनेंट, एक ग्राफ में बहुत सारे कंपोनेंट मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं। इस ग्राफ के अंदर C2 मैंने बोला इस प्रकार का, ये आपको बोला ये हो गया आपका 4 है, ठीक है। इसके अंदर दो कंपोनेंट C1 और C2, इसके अंदर आपकी साइकिल प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहले काम जो है पता क्या करते हैं, सबसे पहले एडजेंसी बना लेते हैं इसकी। हमने बोला इससे पहले एडजेंसी ग्राफ है ना, तो दोनों की दिशाओं में जाता है, जैसे U और V के बीच में एज है, तो U के एडजेंसी लिस्ट के अंदर U के नेबर में V भी आएगा और V के नेबर में U भी आएगा, दैट्स व्हाई। यहाँ ऑलरेडी C2 के पुराने मैट्रिक्स के अंदर उसके बाद हमने 4 के लिए बोला, 4 की मैपिंग किसके साथ है, 5 के साथ है, 5 की मैपिंग आपकी हो जाएगी 4, 6, 7 के Okay, I'll start from one graph. Uh, any one number. Let's say I start from one, and if I reach, I make a visitor. So one to two, two to one. Uh, 1 3. Two is connected with 1 and 3, but there is no cycle. No. साथ 6 की मैपिंग आपकी या फिर एडजेंसी से लिस्ट होगी, किसी को करना है तो BFS एल्गोरिथम यूज करेंगे, उसमें हमारे पास एक विजिटेड एरे भी होना चाहिए। हमारे पास एक विजिटेड डेटा रीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड बाय बिल्डिंग। अब सोचना क्या है, डिस्क्रिप्शन लिंक को यूज, ठीक है। तो मैंने बोला जी ये मेरी क्यू है, मैंने बोल दिया BFS क्यू है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ठीक है, मैंने पहले 1 फिर हमने 8 को विजिट, फिर मैंने 2 विजिट कर लिया, बहुत बढ़िया, कोई साइकिल नहीं है, फिर मैंने 3 विजिट कर लिया, ठीक है, कोई साइकिल नहीं है, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने बोला फिर हम 4 पे आए, हमने स्प्लिट किया, ठीक है, साइकिल 1 इस प्रकार, क्योंकि 4 जो था वो 5 का पेरेंट था, तो उसने बोला 7 एक बार ड्राइव करके देखते हैं, एक बार ड्राइव करके देखते हैं, एक बार ड्राइव करके देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको ये। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सोर्स नोड शुरू करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में भी सोर्स नोड है, बट जब 7 को प्रिंट करने गया, 7 तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका था, मतलब 6 यार 5 और 8 प्रिंट करो, 5 नेगलेक्ट, क्योंकि लिस्ट को प्रिंट करो, 4 के अंदर 5 है, ठीक है, तो आपने 4 के बाद 5 को प्रिंट कर दिया। अब 5 ने बोला मेरी एडजेंसी लिस्ट को प्रिंट करो, वहां पे 4 6 7 है, 4 नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि 4 जो था वो 5 का पेरेंट था, तो बचा क्या 6, पेरेंट को नेगलेक्ट करना होगा। ठीक है, 1 या 2 तो 2 तो वेस्टेड नहीं है, तो 2 को वेस्टेड कर दो, वेस्टेड कर दिया। अब 2 जो था वो कहां से आया, 1 से आया, तो आपने बोला 2 का जो पेरेंट है वो क्या है, 1 है, ठीक है, तो 2 को यहां पे डाल दिया, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। फिर हमने बोला 2 की लिस्ट पे जाओ, 2 की लिस्ट पे गए, यहां पर ये आ गया 1 और 3 है, वो ऑलरेडी यहां पर ट्रू है कि यार वेस्टेड भी है, और 2 जो है वो 3 का पेरेंट है, तो नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, नेगलेक्ट करने की कंडीशन क्या है कि यार आप वेस्टेड हो, करने का 5 वेस्टेड है, उसका नहीं वेस्टेड नहीं, तो हमने 5 को ट्रू मार्क कर दिया, और 5 का पेरेंट कौन है, 5 का पेरेंट 4 है, और हमने 5 को यहां पर डाल दिया, ये बात समझ में आ गई। अब हम 5 पे गए, वहां पर ये तीन चीजें 4 6 7, हमने पूछा क्या 4 को डालूं, पहली चीज तो 4 जो है वो ट्रू है, और दूसरी चीज 5 का पेरेंट जो है वो 4 है, ठीक है, 5 और 8 है, हमने बोला 5 को डालूंगा, 5 जो है ऑलरेडी वेस्टेड, ट्रू कर दो, 8 को मेरे जो है वो ऑलरेडी ट्रू है, बट 8 7 का पेरेंट नहीं है, ओहो हो। तो इस केस में हमने बोला कि जब किसी का विजिटेड जो है वो ट्रू आ जाए और वो नोड जो है साइकिल प्रेजेंट है, हम इन शॉर्ट डेटा i लेस देन m i प्लस प्लस एडजेंसी जैसे पहले सीखा था, एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया हमने इस टाइप का, इंट कॉमा लिस्ट ऑफ इंट टाइप का, इसका नाम दिया एडीजे। हमने बोला Topological sort. This is the question. हेलो जी कैसे हो सारे, विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है, आप 7 पे गए, विजिटेड मार्क कर दिया। फिर आपने 7 के एडजेसेंट नोड निकाली जो कि क्या है, कुछ भी नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है, तो आपने क्या बोला कुछ भी नहीं यार, तो सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे, नहीं है, तो इसका डीएफ सॉल्यूशन में फॉल्स कर दूंगा। क्यों कर रहे हैं भैया, वाई वाला पार्ट कहां गया, मैंने कहा अभी करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने शुरुआत की मेरे दोस्त, हमने शुरुआत की, लॉजिक में पता है हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, सेम वही यार, एक फॉर लूप होगा जो मैं फाइल नोट में लास्ट नोट लेके जा रहा होगा, हमने सिंपल लॉजिक लिखा होगा, इफ नॉट विजिटेड मेरे दोस्त, तो ऐसा करो आपका जो भी फंक्शन है वो कॉल कर दो। आपने फंक्शन कॉल कर दिया कि बोल आंसर जो आपने 8 को ट्रू मार्क कर दिया, और उसका डीएफ विजिटेड वाला ट्रू, इसका नाम, ठीक है, इतना काम हो गया। अगर नहीं मिली साइकिल रिटर्न फॉल्स, खत्म, इतना हमने कर लिया। अब हमें फटाफट ये वाला फंक्शन क्रिएट करना है और आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट टाइम क्या सेम ऐसे डिटेक्टेड इज इक्वल टू आगे कॉल कर दिया, मैंने बोला Topological sort. This is the concept that I want to learn. Now are the crop concepts that are starting graph and DP.
these are the two things that I want to watch again. DP, a lot of things I haven't watched also, so I'm watching for the first time. हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बू एंड वेलकम टू चैनल कूडल। हम पहुंच हमारे लेक्चर नंबर 90 पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इंटरव्यूज के अंदर और ऑनलाइन। तो फटाफट समझते हैं ये होता क्या है, व्हाट इज टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो मैंने कहा टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या है, इसका मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ अ डीएजी। डीजी होता है, पहले डी समझना पड़ेगा। जो डीजी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। It's हमने लिखा डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। कौन से ग्राफ होते हैं? देखो डायरेक्टेड समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन जो है, ठीक है। इस टाइप का कुछ असाइक्लिक मतलब साइकिल किसने करती, नो साइकिल, ठीक है। पहुंच हमारे लेक्चर नंबर 90 पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इंटरव्यूज के अंदर और ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है ग्राफ। तो मैंने कहा टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या है, इसका मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ अ डीएजी। डीजी होता है, पहले डी समझना पड़ेगा। V, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, फॉर एवरी एज, फॉर एवरी टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस सच दैट एवरी डायरेक्टेड एज फ्रॉम U to V, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या है, मैंने बोला इट इज अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस, इट इज अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस सच दैट फॉर एवरी एज U to V, U always appears before V in that ordering, ठीक है। तो क्या समझ में आता है इस समय समझ में आता है कि एक इस प्रकार की ऑर्डरिंग है जिसमें आपकी हर एक एज जो भी U से भी जा रही है, उसमें U हमेशा V से पहले आएगा। एग्जांपल की बहुत खास जरूरत है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पे बना पड़ा है ग्राफ, इसमें बोला कि ये आपका 0 है, ये पॉइंट कर रहा है 1 को, और ये पॉइंट कर रहा है 3 को, और ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं 2 को, ठीक है। इस प्रकार का ग्राफ है। तो हमने कहा लेट्स से कि मैं इसमें एक पाथ लिख देता हूँ, ठीक है, एक ऑर्डरिंग लिख देता हूँ, मैं चेक करेंगे सही है कि नहीं है। मैंने बोला 0 1 3 2, क्या ये एक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? सिंपल है, फटाफट एडजेंट लिस्ट बनाते हैं। 0 केस में 0 पॉइंट कर रहा है 1 को, 3 को, 1 को पॉइंट कर रहा है 2 को, 2 को पॉइंट कर रहा है किसी को भी, 3 को पॉइंट कर रहा है 2 को, ठीक है। तो हमने पूछा कि यार 0 से 1 एक एज है, तो क्या 0 1 से पहले आ रहा है? हाँ यार 0 1 से पहले आ रहा है, ठीक है। 0 से 3 के बीच में क्या है, 0 3 से पहले आ रहा है, हाँ 0 3 से पहले आ रहा है। 1 से 2 के बीच में क्या है, यानी 1 2 से पहले आ रहा है ऑर्डरिंग में। मैंने कहा 2 के साथ कोई एज नहीं है, और 3 और 2 के बीच में क्या है, 3 2 से पहले आ रहा है, हाँ। तो इन शॉर्ट ये एक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया। लेट्स से इस प्रकार का मैं कुछ लिख देता कि 3 2 1 0। मैंने पूछा कि 0 और 1 के बीच में एक एज है, क्या 0 1 से पहले आ रहा है ऑर्डरिंग में? नहीं, 0 1 से पहले नहीं आ रहा, तो ये आ गया एक इनवैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। समझ में आया? तो मल्टीपल ऑर्डरिंग एग्जिस्ट कर सकती है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उनको मैं बोलूंगा टोपोलॉजिकल एक इनवैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। और 2 के बीच में क्या जगह 3 2 से पहले आ रहा है, हाँ एज है, क्या 0 1 से पहले आ रहा है ऑर्डरिंग में? नहीं, 0 1 से पहले नहीं आ रहा, तो ये आ गया एक इनवैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। समझ में आया? तो मल्टीपल ऑर्डरिंग एग्जिस्ट कर सकती है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उनको मैं बोलूंगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट, एक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, ठीक है। हमने बोला एक ऐसे प्रकार की लीनियर ऑर्डरिंग है ये, जैसे हमारे बहुत सारे एजेस होंगे, 0 से 1 एक एज है, 0 से 3 एक एज है, 1 से 2 एक एज है, 3 से 2 एक एज है। तो जब मैं कहता हूं 0 से 1 एक एज है, तो जो भी मैं वो लीनियर ऑर्डरिंग निकालूंगा, उस लीनियर ऑर्डरिंग में 0 हमेशा 1 से पहले आएगा। U always appears before V in that ordering, और ये अप्लाई करेगा हर एज के ऊपर। इसको मैं बोलता हूं टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है। इसको मैं कहता हूं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। क्वेश्चन में क्या बोला कि मैं तुम्हें ग्राफ दूंगा, मैं तुम्हें नंबर सारी सारी एजेस दे रहा हूं, मैं तुम्हें ग्राफ सारी सारी एजेस दे दी, नंबर वर्टेक्स दे दी, नंबर एजेस दे दी, तुम मुझे इसका वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट प्रिंट करके दो। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि हम इस कांसेप्ट को करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, पर किस लॉजिक का यूज करके करेंगे? हम इस कांसेप्ट को डीएफएस का यूज करके करेंगे, डीएफएस के द्वारा करेंगे। सवाल उठता है हाउ, सवाल उठता है हाउ। इससे पहले कौन सा सवाल करना है, ठीक है। उससे पहले फटाफट मैं स्पॉन्सर को सॉल्व करता हूं, स्पॉन्सर बाय क्रायो, क्रायो द वर्ड है। और सवाल था ये कि ये सिर्फ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ ही क्यों लगता है? समझते हैं, समझते हैं। हमने बोला चलो साइक्लिक ग्राफ हमारे पास 1 2 3 ये, तो क्या क्या होगी, 1 के लिए 2, 2 के लिए 3 और 3 के लिए 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लीनियर ऑर्डरिंग लिखूं, लेट्स से मैं लिखा 1 2 3 वो लीनियर ऑर्डरिंग है, और मैं चेक कर रहा हूं क्या ये वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट है या नहीं, क्या ये वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट है या नहीं। तो मैंने क्या किया, 1 से 2 के बीच में क्या है, यानी उस ऑर्डरिंग में 1 2 से पहले आना चाहिए, ठीक है। 1 2 से पहले आ रहा है, 2 और 3 के बीच में क्या है, तो उस ऑर्डरिंग के अंदर 2 3 से पहले आना चाहिए, 2 3 से पहले, ठीक है। 3 से 1 के बीच में तो 3 1 से पहले आना चाहिए, 3 1 से पहले नहीं आएगा। तो साइकिल के केस में हमेशा देखो, यहाँ पे आप करो 1 2 से पहले आना चाहिए, तो वहां पे करो 2 आ सकते हैं। एक अगर वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं निकाल पाए, तो इसका मतलब ग्राफ के अंदर साइकिल प्रेजेंट है। बात समझ में आई? एक और क्या हमने पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करने वाले स्टूडेंट, हम डीएफएस से बात करने वाले हैं। तो हमने ग्राफ बनाया, फटाफट हमारे ग्राफ आना चाहिए। हमने बोला कि लेट्स से ये एक नोड है जो कि इसको पॉइंट करती है, फिर यहाँ पर ये एक और नोड है, फिर यहाँ पर हमने बोला कि ये एक और नोड है, फिर हमने बोला कि यार ये हो गया 1 2 3 4 5 6। इसका एक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना है यूजिंग डीएफएस। बात समझ में आती है? तो हमने डीएफएस का किस बोल देते हैं, फॉर इंट हमने नोड 1 से लेकर अंत चला दिया, और हमने सिंपल चीज पूछी कि यार अगर तुम विजिटेड नहीं हो, कि भैया अगर तुम विजिटेड नहीं हो तो तुम ऐसा करो डीएफएस को 1 2 3 4 5 6। तो मैंने बोला 0 1 2 3 4 5, सॉरी 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 अच्छे से बनाता हूं। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, सारी की सारी इनिशियली नॉट विजिटेड है, तो 0 मार्क कर दिया। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? आप एक एरे ले लो या वेक्टर ले लो या फिर मैप बना लो, इन कॉम्बुल टाइप का, हर चीज चल जाएगी। आपको स्मार्टिंग करने की पर्टिकुलर नोड विजिटेड है या नहीं है। एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर की यहाँ पर नीड है, सवाल आएगा क्यों, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, उसकी चिंता बना के। तो हमने बोला एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर मुझे चाहिए, तो मुझे एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, और उसका नाम मैंने आपको दे दिया कि मुझे वो डेटा स्ट्रक्चर का नाम, मैंने बोला कि वो एक स्टैक होगा, वो एक स्टैक होगा। यहाँ पे दिमाग में सवाल आएगा कि भाई क्यों चाहिए, इसकी क्यों है, वो भी कोड करते करते या फिर लॉजिक समझते हुए ड्राइव करते हुए देख लेंगे ऐसा क्यों है, ठीक है। बहुत बढ़िया। स्टैक आपको याद होगा, लिफो वाला, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, शादी के एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो हमने कहा चलो शुरुआत करते हैं। तो हमें पता है 4 × 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ से मेरा डीएफएस स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने सबसे पहले डीएफएस की कॉल कर दी डीएफएस ऑफ 1 के लिए, ठीक है। डीएफएस ऑफ 1 के लिए कॉल गई, तो क्या हुआ, सबसे पहले वेजिटेड मार्क कर दिया हमने 1 को काट के वेजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। 1 के बाद आपको एक बार एडजेंट लिस्ट बनानी पड़ेगी, ऑलरेडी मिल जाए। तो हमने बोला 1 जा रहा है 2 3 तक, 2 जा रहा है आपका 4 तक, 3 जा रहा है आपका 4 तक, और 4 जा रहा है आपका 5 और 6 तक, 5 जा रहा है आपका 6 तक, और 6 कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो हमने कहा कि 1 जो नोड है वो कहाँ जा सकती है, या तो 2 या तो 3, उसके एडिशन नोड कौन से 2 या 3, ठीक है 2 के लिए कॉल चलेगी, आप 2 के लिए कॉल चलेगी, डीएफएस ऑफ 2, आपने 2 को वेजिटेड मार्क कर दिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने 2 कहाँ जा सकता है, 2 या 4 तक जा सकता है, ठीक है। तो हमने 2 4 के लिए कॉल कर दिया, 4 के लिए कॉल किया, तो हमने 4 को वेजिटेड मार्क कर दिया, वेजिटेड आ गया। फिर हमने कहा ठीक है 4 के बाद कहाँ जाना है, 4 के बाद 5 जा सकते हैं, तो आपने 5 कॉल कर दिया, 5 को वेजिटेड मार्क कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, हमने बोला 5 को कहाँ जा सकते हैं, 5 को 6 जा सकते हैं, ठीक है, 6 कॉल कर दिया, 6 कॉल कर दिया, 6 को वेजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। उसने पूछा कि 6 के बाद कहाँ जा सकते हैं, आपने 6 के बाद कोई नोड नहीं है, तो इसका मतलब
ये वाले से हम वापस चले जाएंगे, इस वाली रिकर्सिव कॉल से हम वापस चले जाएंगे, ये वाली कॉल कट हो गई। जब भी कोई कॉल से आप वापस जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप उस नोड को स्टैक के अंदर डाल देंगे। तो आपने क्या किया, अपने स्टैक के अंदर 6 को डाल दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हम 5 पे रहे हैं, 5 से पूछा कोई और नोड हमारे पास नहीं है, 6 ही कंप्लीट कर दिया, तो 5 से वापस जाना पड़ेगा, 5 को डाल दो। 4 पे 4 तो वापस हमारे पास है, 5 तो कर दिया ना, अब मेरे पास 6 है, बट यार 6 तो ऑलरेडी विजिट है यहाँ पे, तो 6 की कॉल नहीं जा सकती, तो 4 से भी वापस जाना पड़ेगा, 4 डाल दो। 2 के बाद उसको हमारे पास नहीं है, सिर्फ 4 ही हमारे पास नहीं है, ठीक है, 2 काट के ऊपर जाना पड़ेगा, तो 2 लिख दिया। 1 के बाद उसको हमारे पास हां मेरे पास 3 पड़ा हुआ है, 3 की कॉल करता हूं, और 3 तो विजिट नहीं है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो 1 ने 3 के लिए कॉल कर दिया, डीएफएस ऑफ 3, 3 को हमने विजिट मार्क कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 3 के बाद 3 मैं 4 को कॉल करता हूं, बट 4 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो 3 को भी काट के वापस जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे वापस आ गया। अब 1 के बाद उसमें और कुछ है नहीं, 2 और 3 था, उसकी कॉल ऑलरेडी यहाँ पे कर दी है, अब मैं कुछ नहीं सकता, तो वो भी वापस जाएगा, तो आपने 1 को यहाँ पे डाल दिया। अब इस ऑर्डर को अगर ध्यान से पढ़ना शुरू करें, तो एक बार लिख के दिखाता हूं आपको। तो ये बन रहा है 1, 3, 2, 4, 5, 6। क्या मैं कह सकता हूं ये एक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट है? ये सवाल है। क्या मैं कह सकता हूं ये वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट है? चेक कर लेते हैं। हमने बोला 1 से 2 के बीच में गया तो 1 2 से पहले आना चाहिए, 1 2 से पहले आया। हमने बोला 1 और 3 के बीच में गया तो 1 3 से पहले आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 2 और 4 के बीच में गया तो 2 4 से पहले आना चाहिए, ठीक है, 2 4 से पहले आया, बिल्कुल ठीक है। 3 और 4 के बीच में गया तो 3 4 से पहले आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 4 और 5 के बीच में गया तो 4 5 से पहले आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 4 और 6 के बीच में गया तो 4 6 से पहले आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 5 और 6 के बीच में गया तो 5 6 से पहले आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ तो तो इन शॉर्ट ये एक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया। यस, जवाब है यस। इस प्रकार हमने एक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल लिया है। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे स्टैक इनडिट क्यों पड़ी भाई? हम क्या कर रहे हैं, जब भी किसी भी रिकर्सिव कॉल से किसी फंक्शन कॉल से हम और आगे नहीं जा पा रहे हैं, वापस जाना पड़ रहा है, तब स्टैक में डाल देना, तब स्टैक में डाल रहे हैं। और स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? तो इन शॉर्ट हमने एक ऐसी नोड को इसके अंदर डाल दिया है जिससे आगे प्रोपेगेट करना अब पॉसिबल नहीं है, जिससे आगे प्रोपेगेट करना अब पॉसिबल नहीं है, और उसको हमने स्टैक में डाला है। हमने उसको स्टैक में डाला, लास्ट में निकलने वाली चीज। सो दैट्स व्हाई इन दिस वे हमने एक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल लिया है। हमने एक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल लिया। कैसे कोड करें? बहुत आसान कोड होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, मैंने बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है, ऑफ एन प्लस ई, नंबर ऑफ नोड्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, मैंने बोला वो भी लीनियर है। कैसे लीनियर है भाई? क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? मुझे तो स्पेस का यहाँ पे दिख रहा है, ऑफ लगता हुआ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऑफ लगता हुआ, मुझे रिकर्सिव कॉल स्टैक है, यहाँ मुझे ऑफ लगता हुआ दिख रहा है, खत्म। अब जो स्पेस आपका लीनियर जा रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको लीनियर जा रही है। एक लूप मैंने चलाया फॉर एन टाइम 0 आई लेस देन। Okay, nice. So topological sort. Finally, I understand this. The last time I was studying this, I was so tired studying that I nothing was going in my brain. Like right now, I'm so tired of coding questions that I can't even code. So this time, it's like it's better that I can study and learn things. Actually, I don't even remember topological sorts from that time. That's how it is. Ah, hungry. I'm hungry.
Stop. Incinerator, incinerator, को करता है मजबूर, इतने हैं, incinerator, करता है मजबूर, कैसे मेरा ब्रेन को हेलो जी, कैसे सारे लव बबन वेलकम टू चैनल। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 91 पर। लास्ट लेक्चर में टॉपोलॉजी सॉर्ट किस प्रकार की जाती है यूजिंग डीएफएस। यहां पर हम एक नए प्रकार की एल्गोरिथम जिसको कान्स एल्गोरिथम कहते हैं, मैं खान कहता हूं, पता नहीं क्यों, पर कान ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग है KAHNS एल्गोरिथम। कान्स एल्गोरिथम कह सकते हैं, खान्स एल्गोरिथम मैं बोलता हूं, पता नहीं क्यों, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हम BFS का यूज करके टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग करने वाले हैं। टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग होता क्या है? व्हाट इज टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग? ये ऑलरेडी हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये सिर्फ डायरेक्टेड और साइक्लिक ग्राफ पर क्यों लगाया जा सकता है, वो भी हम रीजन सब लास्ट लेक्चर में डिस्कस, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग एक लीनियर ऑर्डरिंग है। जैसे इस केस के अंदर मैं कहता हूं कि 0 1 3 2 0 3 है, तो मैं 0 से 3 ये 4 है, तो मतलब फॉर एवरी एज u to v u should always appear before v in that ordering। जैसे यहाँ पर ये u मान लिया जाए, ये v मान लिया जाए, तो इस लीनियर ऑर्डरिंग के अंदर 0 हमेशा 1 से पहले आना चाहिए, जो कि आ रहा है, 0 1 से पहले आ रहा है। 1 हमेशा 2 से पहले आना चाहिए, जो कि आ रहा है, 1 2 से पहले आ रहा है। 3 हमेशा 2 से पहले आना चाहिए, जो कि आ रहा है, 3 हमेशा 2 से पहले आ रहा है। 0 हमेशा 3 से पहले आना चाहिए, 0 हमेशा 3 से पहले सॉर्टिंग में आ रहा है। तो ये ऑर्डरिंग एक वैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया। बट यहीं पर मैं इसको लिख दूं 0 1 2 3, 0 और 1 में लिखे तो 0 1 से पहले आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 1 2 में लिखे तो 1 2 से पहले आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 3 2 में लिखे तो 3 2 से पहले आना चाहिए, बट यहाँ पे 2 3 से पहले आ गया, तो ये एक इनवैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट हो जाता है। ये सिर्फ डायरेक्ट नहीं जी, आप एक वैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं बना सकते। टॉपोलॉजिकल सॉर्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं। किस प्रकार का लॉजिक होगा, क्या अप्रोच है, उसको डिस्कस करने से पहले फटाफट स्पॉन्सर्स को शाउट देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स टू देम। तो हमने कहा कि हमारे पास ग्राफ क्या क्या है। हमने बोला कि मेरे पास क्या ग्राफ है, मेरे पास क्या ग्राफ है, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, पांच नोड, ठीक है। कौन इसको पॉइंट कर रहा है? मैंने बोला ये इसको पॉइंट करिए, 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 ठीक है। मैंने बोला 1 2 3 4 5, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। ये पता है बीएफएस सबको याद हम क्यों यूज करते हैं ना, क्यों यूज करते हैं, मैं फटाफट डिस्कस करता हूं, जिसमें यूज करूंगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ आती है। तो मैंने बोला ठीक है, फटाफट चेक करते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर फटाफट मैं इंडिकेटर की विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ। मैंने कहा ये 1 2 3 4 5, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये सारी मेरी नोट्स हैं, ये फर्स्ट नोट सेकंड नोट, और ये पूरा स्ट्रक्चर इंडिकेटर दर्शाता है, ठीक है। तो मैं बोला 1 की डिग्री 0 है, और 2 की 1 है, 3 की 1 है, 5 की जो है वो 2 है, और 4 की जो है 1 है, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप था वो क्या था कि फाइंड इन डिग्री ऑफ ऑल नोट्स, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है? मैंने बोला कि यार क्यू बनाओ एक, और उस क्यू में जितने भी 0 इन डिग्री वाले एलिमेंट हैं, जितने भी 0 इन डिग्री वाले नोट्स हैं, उनको इंसर्ट कर दो। ऐसा कुछ कुछ कहा मैंने। मुझे पता बीएफएस क्यू तो बनी है, बीएफएस क्यू तो बनी है, मुझे पता ही है। तो मैंने क्या कहा, क्यू बना दो फटाफट। तो हमने यहाँ पर अपनी क्यू बना दी। तो मैंने कहा कि क्यू बना दो, ये आपकी क्यू आ गई, ठीक है। और ये मेरा आंसर है, यहाँ पर मैं अपना आंसर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ में। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। क्यू बन गई, क्यू के अंदर 0 इन डिग्री वाले सारे पुट करने वो कर लेता हूं पहले। तो मैंने कहा 0 इन डिग्री वाले कौन से, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मुझे सिर्फ फर्स्ट वाली नोड है वो 0 इन डिग्री वाली, तो मैंने उसको क्यू के अंदर पुश कर दिया। बहुत बढ़िया, ये बात हो चुकी है। अब मैं क्या थर्ड स्टेप पे, थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ में। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। क्यू बन गई, क्यू के अंदर 0 इन डिग्री वाले क्यू तो बनी है। थोड़ा अच्छा ना। बीएफएस क्यू तो बनी मुझे पता ही है। तो मैंने क्या कहा, क्यू बना दो फटाफट। तो हमने यहाँ पर अपनी क्यू बना दी। तो मैंने कहा कि क्यू बना दो, ये आपकी क्यू आ गई, ठीक है। और ये मेरा आंसर है, यहाँ पर मैं अपना आंसर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ में। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। क्यू बन गई, क्यू के अंदर 0 इन डिग्री वाले सारे पुट करने वो कर लेता हूं पहले। तो मैंने कहा 0 इन डिग्री वाले कौन से, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मुझे सिर्फ फर्स्ट वाली नोड है वो 0 इन डिग्री वाली, मैंने उसको क्यू के अंदर पुश कर दिया। बहुत बढ़िया, ये बात हो चुकी है। अब मैं क्या थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है डू बीएफएस। जो सेम लॉजिक आप बीएफएस में लगाया करते थे वही सेम यहाँ पर रेप्लिकेट कर दो। थोड़ी बहुत चेंज होंगे, देख देंगे चेंज क्या है। तो मैं ठीक है, उसमें क्या करता मैं फ्रंट एलिमेंट निकालता था। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रंट निकाला, फ्रंट क्या आ गया, फ्रंट आ गया 1, ठीक है। तो मैंने फ्रंट में 1 को डाल दिया। मैंने 1 को क्यू से हटा दिया, पॉप कर दिया, क्योंकि मैं फ्रंट पे सेव कर चुका हूं, मैंने यहाँ से पॉप कर दिया, आंसर के अंदर 1 आ गया, ठीक है। तो मैंने पहला स्टेप फ्रंट बनाया।
Hmm. सेकंड स्टेप को ऑफ कर दिया, ठीक है। थर्ड मैं निकाल नोट्स, ठीक है। ये मैंने पॉइंट करी, ठीक है। मैंने बोला दोनों वेरिएबल है, 4 नोड 5 नोड, ठीक है। कौन किसको पॉइंट कर रहा है? मैंने बोला ये इसको पॉइंट करिए, ये इसको पॉइंट करिए, ये इसको पॉइंट करिए, ये इसको पॉइंट करिए और ये इसको पॉइंट करिए, ठीक है। मैंने बोला 1 2 3 4 5 ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। ये पता है बीएफएस सबको याद हम क्यों यूज करते हैं ना, क्यों यूज करते हैं। मैं फटाफट डिस्कस करता हूं जो मैं यूज करूंगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ आती है। तो मैंने बोला ठीक है, फटाफट चेक करते हैं क्या करना है। तो यहां पर फटाफट मैं इंडिविजुअल ग्राफ की विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना देता हूं। मैंने कहा ये 1 2 3 4 5 मैंने दिया 1 2 3 4 5 ये सारी मेरी नोट्स हैं, ये फर्स्ट नोट सेकंड नोट और ये पूरा स्ट्रक्चर इंडिविजुअल दर्शाता है, ठीक है। तो मैं बोला 1 की डिग्री 0 है और 2 की 1 है, 3 की 1 है, 5 की जो है वो 2 है और 4 की जो है 1 है, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप था वो क्या था कि फाइंड इन डिग्री ऑफ ऑल नोट्स, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है? मैंने बोला कि यार क्यूब बनाओ एक और उस क्यूब में जितने भी 0 इन डिग्री वाले एलिमेंट हैं, जितने भी 0 इन डिग्री वाले नोट्स हैं उनको इंसर्ट कर दो। ऐसा कुछ कहा मैंने। मुझे पता बीएफएस क्यू तो बनी है, बीएफएस क्यू तो बनी मुझे पता ही है। तो मैंने क्या कहा क्यू बना दो फटाफट। तो हमने यहाँ पर अपनी क्यू बना दी। तो मैंने कहा कि क्यू बना दो, ये आपकी क्यू आ गई, ठीक है। और ये मेरा आंसर है, यहाँ पर मैं अपना आंसर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आई। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। क्यू बन गई, क्यू के अंदर 0 इन डिग्री वाले सारे पुट करेंगे वो कर लेता हूं पहले। तो मैंने कहा 0 इन डिग्री वाले कौन से? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मुझे सिर्फ फर्स्ट वाली नोट है वो 0 इन डिग्री वाली, तो मैंने उसको क्यू के अंदर पुश कर दिया। बहुत बढ़िया, ये बात हो चुकी है। अब मैं क्या थर्ड स्टेप पे, थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप कहता है डू बीएफएस। जो सेम लॉजिक आप बीएफएस में लगाया करते थे वही सेम यहाँ पर रेप्लिकेट कर दो। थोड़ी बहुत चेंज होंगे, देख जाएंगे चेंज क्या है। तो मैंने ठीक है, उसमें क्या करता मैं फ्रंट एलिमेंट निकालता था। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रंट निकाला, फ्रंट आ गया 1, ठीक है। तो मैंने फ्रंट में 1 को डाल दिया, मैंने 1 को क्यू से हटा दिया, पॉप कर दिया। तो मैं फ्रंट में सेव कर चुका हूं, मैंने यहाँ से पॉप कर दिया, आंसर के अंदर 1 आ गया, ठीक है। तो मैंने पहला स्टेप फ्रंट बनाया, सेकंड स्टेप पॉप कर दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप आंसर के अंदर आ गया, ये बात समझ में आ गई। फोर्थ स्टेप कि मैंने उसके नेबर्स निकालो। तो 1 के नेबर में देखूंगा एडजेंसी चला के मैं आगे दिखा दूं। तो 1 के लिए आ गया 2,3, 2 के लिए आ गया 5, 3 के लिए आ गया 5, 5 के लिए आ गया 4 और 4 के लिए आ गया कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैंने 1 के नेबर निकाले। तो मैंने 1 के जब नेबर निकाले तो नेबर क्या है 2 और 3, तो मैंने लिख दिया 2 और 3। अब ध्यान से देखो, जब मैं 1 को यहाँ से हटाता हूँ तो ग्राफ के अंदर क्या हुआ है? ग्राफ के अंदर मैं थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करूँ, कैसे हो गया। मैंने 1 के ना ये 1 को हटा दिया तो 1 का ये वाला एरो हट गया होगा। जब ये एरो हटा तो 3 की इन डिग्री 1 से कम हो गई, तो 3 की डिग्री 1 की जगह 0 हो गई, बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार जब ये वाला एरो हटा तो 2 की इन डिग्री भी 1 से कम हो गई, तो 2 के लिए भी ये 0 हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि यार 2 की डिग्री 0 हो गई और 3 की डिग्री 0 हो गई। जिस जिसकी इन डिग्री 0 होती जा रही है उसको मुझे क्यू में डालते जाना है, उसको मुझे क्यू में डाल देना। मैंने पहले इसमें 2 डाल दिया क्योंकि उसकी डिग्री 0 की थी और फिर मैंने इसमें 3 डाल दिया। चलो एक स्टेप हो गया। फिर दोबारा आते हैं वापस, पहले फ्रंट निकालना होता है तो मैंने फ्रंट निकाल लिया। फ्रंट की वैल्यू क्या है 2 है जी, फ्रंट 2 आ गया। सेकंड स्टेप क्या होता है पॉप करना, मैंने 2 को हटा दिया। थर्ड स्टेप क्या होता है आंसर डालना, मैंने 2 को डाल दिया। फोर्थ स्टेप क्या होता है नेबर निकालना, तो मैंने नेबर निकाल लिया। नेबर क्या है 2 के, 2 का नेबर 5, मैंने 5 लिख दिया। तो जब मैंने 2 को यहाँ इस ग्राफ से हटाया होगा तो 5 का एरो कम हो गया, तो 5 की डिग्री 2 की जगह 1 हो गई, बहुत बढ़िया। 2 की जगह 1 हो गई। क्या 1 0 के इक्वल होता है? नहीं। क्या मैं इसको पुश करूं क्यू में? नहीं, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने क्या किया, फिर दोबारा सेम स्टेप रिपीट किया। मैंने फ्रंट को लिया दोबारा, अब फ्रंट मेरा क्या आ गया, फ्रंट मेरा 3 आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इसको पॉप कर देता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इसको आंसर में इंक्लूड कर लेता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इसके नेबर निकाल के लाता हूं। मैं 3 के नेबर निकाल रहा हूं, 3 के नेबर क्या आया, 3 के नेबर 5 आया, 3 के नेबर 5 आ गया। मैंने 3 को जब हटाया ग्राफ से तो ये हट गया होगा, एरो कम हो गया, तो 5 की डिग्री फिर से कम हो गई और ये 0 बन गई। तो 5 की डिग्री 0 हो गई। जब डिग्री 0 होती है मुझे करना होता है, मुझे इसको क्यू में पुश करना होता है। बहुत बढ़िया बात समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद मैंने फ्रंट से दोबारा निकाला, इसके बाद मैंने फ्रंट से दोबारा निकाला कि यार फ्रंट इज इक्वल्स टू क्या आया 5 आया, 5 आ गया। मैंने 5 को यहाँ से हटा दिया, मैंने 5 को आंसर में इंक्लूड कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने 5 के नेबर निकाले, मैंने इसके नेबर निकाले। नेबर कौन है 5 के, 5 के नेबर 4, मैंने निकाला 4। 0 के क्या किया 4 को यहाँ से हटाया, 4 को आंसर में इंक्लूड किया, 4 के नेबर निकाले। 4 के नेबर निकालने के यहाँ तो कुछ है नहीं, खाली। तो इसका मतलब प्रोसेसिंग डन, रुक गए, यहाँ पे ही था आपका प्रोसेसिंग स्टॉप हो गई। आपका जो आंसर है वो है 1 2 3 5 4। दोबारा एक आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। ग्राफ क्या था आपका, ग्राफ इस प्रकार था कि ये एक नोड है, ये इसको पॉइंट करती 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 है और ये इसको 3 एक है 1 से 2 एक है 4, 1 2 1 2 से पहले जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो 5 4 से पहले आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपका एक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट बन जाता है। बात समझ में आई? इसको कहते हैं कांसेप्ट। यार कुछ भी करना होता है, निकालो क्यों डालो और जिस नोड को हटा जा रहे हो उसके सबसे डिग्री माइनस करते जाओ। फिर दोबारा किसी की नोड की डिग्री 0 आ रही है तो फिर दोबारा उसको क्यों डालो, फिर से प्रोसेसिंग कर दो। एक बार कोड की तरफ चलते हैं, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे फटाफट, ठीक है। तो उसका काम मैंने बोला कि यार मैं एडिशन सीरीज बनाऊंगा, उसके बाद डिस्कस करूंगा। तो मैंने अपना फोर लूप चलाया फॉर int i 0 से लेके i लेस देन e से i प्लस प्लस। मैंने बोला कि int u इज इक्वल टू एजेस ऑफ i 0, उसी प्रकार int v इज इक्वल टू एजेस ऑफ i 1। मैंने क्या किया, edg ऑफ u के अंदर पुश बैक कर दिया v को, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला फाइंड ऑल इन डिग्रीज। इसके अंदर मैंने क्या किया, पहले डिग्री में अपना वेक्टर बना लेता हूं। मैं बोला वेक्टर ऑफ int इन डिग्री किस साइज का, v साइज का, ठीक है। मैंने बोला फॉर ऑटो i बिलोंग्स टू adj, फॉर ऑटो j बिलोंग्स टू i डॉट सेकंड। इस केस में क्या करना है, इस केस में मुझे इन डिग्री को बढ़ाना है। तो इस प्रकार मैंने हर किसी की इन डिग्री फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इतना हो गया। अब अगला स्टेप क्या था, मैंने बोला 0 इन डिग्री वाले 0 इन डिग्री वालों को पुश कर दो।
तो मैंने क्यू बनाई सबसे पहले, क्यू ऑफ इंट क्यू, और मैंने क्या बोला कि ट्रैवर्स करता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन वी आई प्लस प्लस। अगर मुझे किसी की इन डिग्री जो है वो इक्वल टू 0 दिख रही है तो मैं क्या करूंगा, उसको क्यू के अंदर पुश कर दूंगा। ये बात समझ आ गई। इसका मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला 2bfs और तो कुछ नहीं, तो मैंने बोला आंसर बना फटाफट वेक्टर ऑफ इंट आंसर, और मैं क्या करूंगा कि जब तक मेरी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं होती जैसे बीएफएस करते थे, तब तक मैं क्या करूंगा, फ्रंट निकाल लो, फ्रंट आ गया आपका क्यू डॉट फ्रंट, क्यू को पॉप कर दो फ्रंट वाले एलिमेंट को हटाने के लिए, फिर मैंने बोला आंसर को स्टोर करा लो, आंसर कैसे आओगे, एएनएस डॉट पुश बैक फ्रंट वाला एलिमेंट, फिर मैंने बोला एक बार नेबर चेक कर लो, मैंने बोला नेबर इन डिग्री अपडेट कर दिया आपने, किस प्रकार आपने लिखा फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू एडीजे ऑफ आपका फ्रंट, आपके नेबर आ जाएंगे, आई नेबर मिल गया तो आगे समझ में आ रहा है, नेबर मिल गया, मैंने बोला कि यार इन डिग्री ऑफ नेबर को माइनस माइनस कर दिया, और अगर आपकी इन डिग्री अब 0 के इक्वल हो चुकी है तो ऐसा करो, उसको क्यू के अंदर दोबारा पुश कर दो। बात समझ में आई? इसके बाद आंसर रिटर्न कर देना। मैंने करके देख लो, छोटी मोटी स्पेलिंग से इंसान से कुछ इंक्लूड करना पड़ जाता है, तो कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है ईजीएस, मैंने बोला कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड मैप लिस्ट क्यू रन कर दो फटाफट। एडीजे की स्पेलिंग अच्छा बनाना पड़ेगा, बनाएंगे हमने, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा लिस्ट ऑफ इंट एडीजे। अब चलो, उसने बोला क्या बोला उसने, लाइन नंबर 24 पे जाओ, लाइन नंबर 24 पे जाओ, कहाँ पे, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर इंट, कहाँ पर गड़बड़ करी है हमने, कहाँ पर करी है, फूड फूड स्पेलिंग गलत लगा दिया, बहुत सिंपल है, टाइम कॉम्प्लेक्स लेकर ध्यान से देखें, वेट कर ली, उसे हमने इंडिविजुअल कर ली, जितने इंडिविजुअल 0 वाले थे उसको हमने पुश कर दिया, और फिर बीएफएस लॉजिक लगा दिया, बहुत सिंपल है। टाइम सबसे पहले एडजेंसी लिस्ट क्रिएट करी, फिर दोबारा इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन प्लस ई आ गई, ठीक है, ओ ऑफ एन प्लस ई रहेगी, लीनियर रहने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार आपने टॉपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस तो लास्ट लेक्चर में सीख लिया था, अब यूजिंग बीएफएस इस लेक्चर में सीख लिया, अब इसी सेम कोड का यूज करके हम एक और चीज सीखेंगे, इसको हम कहेंगे साइड प्रोडक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग बीएफएस एल्गोरिथम, अगले लेक्चर। हम टॉपिक्स अभी चल रहे हैं जैसे ग्राफ्स और डीपी जैसा टॉपिक अभी पेंडिंग है जो हमें करना है ग्राफ के बाद, क्या होता है लास्ट की 3 वीडियो से करेंगे कि आपको थोड़ा सा मुझे याद दिलाना हो, तो आपने 2
डेटा के कोई भी नोड, एक चीज और आपको याद होगी कि लास्ट लेक्चर में एक एल्गोरिथम पढ़ी थी नाम इस प्रकार, आपको याद होगा जो टॉपोलॉजिकल ही अप्लाई करता हूं, मतलब मुझे ये पता है कि अगर बट अगर वो एक साइक्लिक ग्राफ होता तो वो मुझे एक इनवैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट देता है ना। हां, दोबारा समझते हैं मैंने क्या बोला, दोबारा समझते हैं हमने क्या कहा आपको। साइक्लिक ग्राफ होगा, जैसे इस केस में मुझे डायरेक्ट ग्राफ में साइकिल डायरेक्ट कर दिया हुआ था, उस कैलकुलेशन करो, इसका मतलब है कि साइकिल प्रेजेंट है इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसको फटाफट कोड कर लेते हैं, थैंक्स टू देम, डन कर लो। और बना घुमाने वाले बंदे इतना है, आगे चेक कर दो, एक फटाफट कॉपी कर लेता हूं, मैंने उठाया यहां से यहां तक और कॉपी कर लिया और मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। छोटी मोटी चीजें फटाफट कर लेता हूं, जैसे यहाँ पे ई नाम का वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो मैंने क्या किया, एज का साइज निकाल लिया, मैंने लिखा आगे तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर फिर वी का यूज किया, वो 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर लास्ट टॉपोलॉजिकल सॉर्ट देखें तो वहां पे नोड जो है वो 0 से स्टार्ट होती थी, यहाँ पे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा कि मैंने बोला कि मैं यहाँ पर नोड को 1 से मतलब 0 से बनाता हूं, मैंने अपने क्या किया, माइनस माइनस कर दिया, खत्म। अब मेरा पूरा लॉजिक यूज हो जाएगा, ठीक है, ये बस समझ में आ गई। या तो मतलब आप इन 1 वाली को 0 में कन्वर्ट कर लो माइनस करके, या फिर आप चाहो तो इसको ऊपर 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 1 तक चला लो, इस प्रकार जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। फिर मैं आगे गया, मेरे आंसर की नहीं है, मेरे को काउंट करना है, मैंने काउंट कर लिया 0 और यहाँ मैंने बोला कि मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा काउंट, काउंट प्लस प्लस और सिंपल चेक करना है। अगर ये एक वैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट होती तो काउंट कितनी नोड का होता, टोटल n नोड का, जो कि इनपुट में है ना। एक वैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट के अंदर कितनी नंबर ऑफ नोड प्रिंट होती है, जितनी ग्राफ के अंदर होती है, कितनी होती है ग्राफ के अंदर n होती है। तो मैंने बोला कि अगर इनवैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट है तो मेरा काउंट जो है वो n के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इफ काउंट इज इक्वल टू n, यानी कि एक वैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट है, एक वैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट कहां पे होता है, डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ में, यानी कि साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है तो इसका मतलब रिटर्न फॉल्स, यानी कि रिटर्न ट्रू। तो मैंने ठीक है, इसको यहाँ पे डॉट फर्स्ट करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे डॉट सेक, हमने सबमिट कर दिया और हमारे करेक्ट आंसर आ चुका। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी रनिंग सी यूज करके यहाँ पर चला कर देख लिया और हमने सीख लिया कि बीएफएस के द्वारा अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो हमने किया क्या है, ध्यान से देखो। फिर दोबारा कितने नोट्स ले चल रहा है, आपके एन नोट्स ले चल रहा है, तो मैं इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लास्ट लेक्चर की ऑफ एन प्लस ई होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जैसे बात करूं तो मुझे लगता है मैंने तीन चीज यूज करी, यहाँ पे कमेंट यूज करी ऑफ एन, एक कमेंट यूज करी ऑफ एन और मेरी एडजेंट लिस्ट, तो कैसे करेंगे। हेलो जी, कैसा सारा रिजल्ट आउटपुट में होगा, आपको दो नोट्स बताइए। सोर्स नोड ये है, डेस्टिनेशन नोड ये है, या फिर चाहे तो आप सारी नोड्स का I would like to leave it here because topological sort is enough for today. Uh, I've learned two things: Morris traversal and topological sort. I think that's enough for today. Um, let's go back on solving some questions. Mhm. Because,
Happy to learn topological sort. Now let's do one question on topo sort. This is from the list of topological sort. Uh, let's do co-schedule one. So this is basically I want to find if the in a directed graph if it is cyclic. That's what I want to find out. So let's use Kahan's algorithm, Kahn's algorithm. I was taught all this in college, but I was not paying attention then, and I regret it a lot. So college में पढ़ो भाई. Okay, Kahn's algorithm, Kahn's, Kahn's, Kahn's algorithm. Okay. So what we do, first thing is construct a adjacency matrix. So in unordered map int comma vector int. Okay, adj. Cool. Now we enter all this. So for int I is equal to 0, I smaller than prerequisites of I smaller than prerequisites of dot size I plus plus. Cool. Now we enter all the elements into the adjacency matrix. So ADJ of prerequisites of I comma 0 is dot push back prerequisites of I comma 1. Cool. We have a adjacency adjacency matrix. Adjacency matrix. Adjacency matrix. So now, after having an adjacency matrix, what can we do? Adjacency matrix. Adjacency matrix. Matrix. What can we do? We calculate the in degree. So for vector and in degree of size adj dot size b of size for int I for auto x of adj for auto y uh, no x. Can I get I also? Does this work?
Ah, do I need what second or auto y of x per second in degree of y plus plus. So I've calculated the integrity of all, I guess. Hmm. I've calculated the integrity now. Now I have the integrity. So to, to enter all the elements with integrity 0 for counter x and the pushback. Cool. I've entered all the elements where in degree is 0. Now do a BFS y not q dot p and p ty. Y not q dot
While not q dot empty, q and q dot node is equals to q dot top and q dot pop and q dot top, q dot pop. Node is equals to q dot top. Pop out that node. Now I go through its adjacency matrix for auto node in ADJ of for auto neighbor in ADJ of node for auto neighbor in ADJ of node. Neighbor in ADJ of node. ADJ of node. For auto neighbor in ADJ of node. In degree of neighbor minus minus if my minus minus in degree is equals to 0, q dot push neighbor. Cool. Now I is equals to 0, I plus plus if I is equals to n, okay, return I is equals to n. Found
Topological sort. Where's pushback? Ah, Khan's algorithm. First time Khan's algorithm. Thank you, Khan's. Khan's. I'm happy. I'm very happy. I hope I solved topological sort questions in an interview. Let's do some graphs. Course schedule. I've done. Course schedule 2. Let's do that. Full same thing without count. Topo sort instead of this. Regular question. Hmm? If the first side is pursuing non-cursive, return with. Done. Topo sort, topo sort, topo sort, topo sort. I'm a fan of topo sort. No, topological sort.
Graph can be a valid tree if in degree of all nodes is one thing. And also it should be directed acyclic and in degree should be one. So this topo sort plus in degree should be one for all except one. Except one for every one it should be one. One thing this. Rule zero. Once this is created, cool. One thing is that
Okay. This one test case is what did I miss? Let's see. What was on low battery? Something was on low battery, I thought. I think my AirPods were on low battery. Zero, 20, 01, 02, 03, and 14. Yeah, so 10 and 20. This is false in a graph. You undirected edge between undirected edge. Even then, okay, undirected edge. So I will have to do this topo sort on two versions. And if any one of this is true, I return the answer. PDJ1. Cool. Now let's do
The indi Yeah, it's on off. Anyone, if this is true, it should be true. Ah, you DJ too. It should work. 0101253435. So this logic is not required. Why will this be wrong? Why will this be false? Why will this be false? Mm, Does this be false here? Yes. Why does it? Zero. And X is zero. Why would you go inside this? X not equals to one. X.
0, 1, and 2 and 3. What is the problem? Okay. Okay. 0, 1, 2, and 3. 0, 1, 0, 2, 2, 5. Okay. Okay. Okay, my logic is going wrong. This will not work with Khan's algorithm. And I don't know what will work here. We'll do this later. This is not topological sort. We'll do this later because graph is hard. Graph is hard. But now I know topological sort. And what was Khan's algorithm? Let's rem revise it again. What is topological sort? It basically gives you an order of a DAG, and you can Australia has passed its controversial social media ban for children under gives an order in a DAG where each uh, node in the order comes before the other nodes. So it's a parent or grandparent to the other node. Cool. How we do it by DFS? First thing we do by the return call of a DFS. So when the DFS ends, we put the value into a stack and then return, like reverse it. Or we use Khan's algorithm. What is Khan's algorithm? Um, we make an adjacency list, we make a in order uh, a table for all the in order is equals to 0. We put it in the queue, and now we put it into a queue. Now uh, we pop out from the queue. We uh, subtract its neighbors. For all the neighbors that become 0, we put them into the queue. So that is Khan's algorithm. Morris traversal is basically if there is a left, check the left side. If there is a and make a connection from the rightmost of the left tree to the node. Uh, Now, if the connection was already made, move to the current dot right, and if there is no left, move to the current dot right, or else move to the current. While making the connection, move to the current dot left. So that is basically Morris traversal.
So we learned two things there. I hope I remember them. I'm sorry, I did not watch. I don't know which question are you talking about. Are you talking about this? Uh, mm, Cool, 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 cool. Thanks for watching, bro. Uh, Shortest path. We'll look at shortest path after this, after doing some questions, because right now I don't think I have the brain capacity to learn anything. What should we do? We are done with DP. I wanted to do DP. DP is good. Intervals we can do again. So, no. Mm, Ah, mm, I'll be back.